Namaskar, Sat Shri Akal, a very warm welcome. Hello, everyone. Good morning, evening, afternoon, जहाँ पर भी आप हैं, सबका स्वागत है. And of course, promise this would again be a very fruitful, very useful, as well as a very back to basics session. जहाँ पर हम for the last, I think, 4 or 5 sessions that we've done, we are talking about certain key aspects around the murder mystery, Sushant murder mystery. And of course, we are also talking about, yes, it is night. It is night time. It is about 11 o'clock my time. So, yes, we are live. I hope you all can see and hear me. So, give me 1 second. Hello. Hi, Prisha. Can you confirm if you can hear me? Okay. I'll wait for a sign and then uske baad we can definitely get started. Anyways, what I was saying was this is going to be another back to basics, जहाँ पर हम we are revisiting, different pieces of the puzzle. We are also visiting or revisiting those aspects जो हम लोगों ने सुनी थी, हमने बात करी थी, but somehow we've lost a lot of things in transition. कुछ लोग ऐसे जो इनिशियल तो बहुत ज्यादा बात कर रहे थे and now they've either vanished in thin air or they've stopped talking. So वो सारी चीजें हम बात करेंगे आज, और भी बहुत सारी बातें हैं. But couple of housekeeping tips. मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ. We are definitely going to do support a lot of campaigns and also do something bigger as well, जिसके बारे में हम थोड़े दिनों में बात करेंगे. But at the same time, one of the largest campaigns, जिसके बारे में एक और सेशन हुआ था सुमी के साथ, the entire team spoke about different aspects of that. और ट्विटर पे भी आपको थोड़ी एक्टिविटी देखना शुरू हो गई होगी. So we'll also be talking about that in the next few days. I'll have some team members from that core group join our session and share that as well. So yes, बहुत सारी बातें and background baby crying. So sorry, it's night time, almost time for my kids to go to bed. हो सकता है, maybe that was what was happening. So sorry about that. In Sandeep case, 14 recordings, Arena Wahab is clearly mentioned at SSR, so look-alike scene. Yes, we'll talk about that as well, Nipun. बहुत सारे ऐसे aspects हैं जो पंचोलीस के. So let's jump right into it. I would encourage you guys as well to join in some time. But few minutes, जो शुरुआत के, I'm gonna kind of yes, Anubhav. My elder one would definitely would love to be here. And the younger one is a little too small for this. Anyways, yes, Kangana, Aditya link. Not surprising, Deepaji. Itna surprising nahi hai. So let me just narrate the story. Let me just take you back few years. ये बात है तब की जब Kangana was a struggler. She wanted to make it big. She wanted to be someone in the either in the fashion industry or in the movie industry. But as usual, जैसे कि हमारी Bollywood industry, जो Bollywood industry जिसके बारे में हम कहते हैं, is a monster, is full of monsters, is full of people who are ready to pounce on you, ready to cash on your abilities, your skills, or just on your physical attributes as well. Kangana is not part of the nexus. Kangana का connection क्या है और क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे. So let's not make any kind of presumptions already. Kangana ने बहुत कुछ बहुत closely देखा है, and that's why it becomes very important for Kangana to come out and speak, which she did on multiple occasions. सिर्फ एक बार नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में कंगना ने बात की है, क्योंकि कंगना has been a witness of a lot of such crimes from a very close perspective. Really, she was a struggler. She was someone who really wanted to do certain things in the industry to make a mark for herself. जैसे कि हर कोई करता है, बॉलीवुड जाता है, मुंबई जाता है, they want to make it big. They want to make a career for themselves. They want to make a name for themselves. So Kangana ने भी ऐसे ही कोई aspiration थी. She was about close to 16 years when she ran away, and she
wanted to make it big. And unfortunately for her, unfortunately for her, she got in touch with Aditya Pancholi. uh, Aditya Pancholi, who was a name, who was somebody who had made a career in Bollywood industry, who had a name in the Bollywood industry, and उनको uh, ऐसा नहीं था कि he was a very very super duper successful actor, but yes, he was not even a flop one. So उन्होंने काफी अपना एक बना के रखा हुआ था, एक brand value. आप सबने वो देखा होगा. I think if I'm not wrong, it was Cineblitz, जिसके कवर पे भी उनकी जो पिक्चर आई थी, that created a lot of not only a controversy but also a lot of name for him, in whatever way. So already Aditya Pancholi was somebody who was known, somebody who had a hold in the Bollywood industry, for multiple reasons, not only for his acting and all, but for other things as well. Uh, Now, Kangana Ranaut, she somehow got connected, and became a girlfriend. And she was being used, literally used is the right word, which has been used just by Kangana herself on multiple occasions. So she was being used by Aditya Pancholi, and she, in a way, let him use her, uh, because she thought this could be a way. जैसे कहते हैं ना, जैसे कास्टिंग काउच होता है, वैसे ही ये एक एंगल था जहां पर एक 18-year-old, less than, not even 18 actually, she was a uh, uh, I think, if I'm not wrong, about 16 and a half, 17 years old, when she got in touch with Aditya Pancholi. And Aditya Pancholi used to stay with her, used to make her, do certain things, and they used to have a physical relationship as well. And Aditya Pancholi ne kafi der is cheez ko, and she was not very much inclined towards it, and that's why she wanted to kind of have it stopped. जिसके लिए बहुत कुछ उन्होंने किया. If stories are to be believed, and this is something which Kangna has actually said in one of her interviews, I think with Rajat Sharma, कि वो एक गेस्ट हाउस में रहती थी with another lady who was a senior lady, who was still in the Bollywood industry, but she was a senior lady about 60 plus. उनके साथ वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, जहां पर शेयरिंग पे. And Aditya Pancholi wanted her to be out of that hostel, and to rent out a place. And he helped her, and take her out from that hostel, put her in a house. और जिस घर में रेंट पे उनको रखा गया, वहां की उन्होंने, आदित्य पंचोली ने, डुप्लीकेट की भी अपने पास रखी. तो इतना ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते थे कंगना के ऊपर, दैट एंड I'll kind of connect this, uh, how Kangana's this particular issue is related to Sushant's murder. तो बहुत देर ये चलता रहा, और एक दो ऐसे इंसिडेंट भी हुए जहां पर कंगना लिटरली हैड टू जस्ट जंप ऑफ her balcony. So in one of her interviews, she mentioned she was staying in this apartment, which was on the first floor, and she saw that Aditya Pancholi was coming, so she escaped, she ran away, she jumped from her balcony, got bruises and all that, and ran out of that place barefoot. And she checked into a hotel, and unfortunately, even there, she was being tracked by Aditya Pancholi. और जब उन्होंने वहां देखा, तो she had no option but to give up. And उसके बाद भी कंगना ने, she reached out to Aditya Pancholi's wife, Zarina Wahab, who was already, again, a name. She had done some amazing movies and all that stuff. So Kangana Ranaut ने even wife को approach किया. And just imagine, if this happens to your household, if you do something like that, and if somebody reaches and talks to your wife, what would your wife react? To me, it would be first a shock element. Second would be, she will be figuring out what to do and how to fix this issue, how to save her own marriage, how to save her own household, and how to stop a girl being harassed. Just to clarify, जब कंगना उस टाइम पे मिली थी, Kangana was 1 or 2 years younger than Aditya Pancholi's own daughter. Imagine this shameless man. Uh, this relationship was with somebody
who was almost his daughter's age, and the harassment, the sexual favors, and everything that happened was really really sad. Yes, Prisha, that's also true. कई जगह पर ऐसा होता था. एक बार ऐसा उन्होंने बताया था, एक पार्टी में हुआ था. पार्टी में ड्रिंक्स देने के बाद he offered her, uh, and that's a good point. Another point I wanted to talk about, which I will in a bit. So let me first go back to Zarina Wahab. So Zarina Wahab का uh, uh, जब वो सामने गई कंगना बात करने कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी फ्रॉम योर हस्बैंड, the kind of response she got was shocking, was literally shocking. Zarina Wahab ने कहा कि देखो भाई, मेरे लिए तो एक तरह से अच्छा है कि वो घर पे आए ही ना. तो तुम्हारे साथ रहता है तो वहीं रहे, बिकॉज घर आता है तो या मुझे या बच्चों को या किसी हेल्पर को वो मार पिटाई ही करता है घर पे. सो इट्स एक्चुअली गुड इन अ वे फॉर अस. सो आई एम सॉरी, आई कैनॉट हेल्प यू. Imagine this kind of statement being made by a wife for her own husband of whatever 20 plus years. uh, and she was left helpless, she was left hopeless कि क्या करूं. And then she made a police complaint and got restraining order and whatnot. यहाँ पर प्रिशा ने एक बात करी है. I'm going to highlight that thing as well. She's also mentioning about mixing your drinks. So this one is a very particular instance. What happened? This was one party where Kangana was there, Aditya Pancholi was there, a few more people, and Aditya Pancholi being him, he mixed something in the drinks, and then he offered Kangana, okay, maybe I'll drop you back home, and you seem to be a little lost and all that stuff, so I'll help you. On the way itself, he pounced on Kangana, and Kangana got a little shocked. She struggled and she started screaming, uh, and she jumped out of the car, and then she took a rickshaw to go to her home. And Aditya Pancholi followed behind that rickshaw, stopped the rickshaw abruptly on the street, and was trying to pull her with her hair. बालों से खींचकर कार में लेके जा रहे थे. वहां पर देयर वाज एन इंडिविजुअल, एक और ये कोई रात के 12:30-1 बजे की बात. और वहां पर एक इंडिविजुअल ऑन अ बाइक, सरदार जी, he saw that and he parked his bike and he came running to help her. The moment he approached Aditya Pancholi asked him to stay out of this, ये कह के कि ये घर का मामला है, तुम बाहर रहो इससे. But at that point of time, looking at the situation, he said, घर का मामला होगा या जो भी होगा, you cannot do this. And he was trying to defend Kangana. So उन्होंने कंगना को उसके हाथों से जब छुड़वाया, जैसे ही छुड़वाया और आदित्य पंचोली उससे बहस करने लगे, literally Kangana ran to the other side of the road and she escaped from there. And ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको मीडिया ने भी उठाया था, मीडिया में भी आया था. एंड दिस जेंटलमैन, he said this was such a scene, and he volunteered कि अगर कंगना एफआईआर करेगी, कंगना केस करेगी, then I will be the eyewitness for her. But as usual, बहुत सारी चीजें under the table, जिसे कहते हैं resolve हो गया या टॉपिक खत्म हो गया, and it never saw any further light. So बहुत बहुत सारी ऐसे चीजें. Now how this all relates to सुशांत सिंह राजपूत केस. सुशांत सिंह राजपूत केस में हमने ये सुना था, I don't know if it's a rumor or it's a fact, but in one of the parties there was a fight between Sushant and Aditya Pancholi's son Suraj Pancholi. और वो फाइट इतनी अगली हो गई थी कि they had to be separated, and उसके बाद Sushant left that party. I will yes, I see people asking, so here we go. All right, Aditya Thakre is also here. Welcome again. Here's the link, guys. I'll have you guys in the stream anytime now, but let me just finish this the thought process. तो इनकी हुई थी आपस में एक फाइट, दोनों की.
उससे पहले ये एक दो ओकेजन्स पे मिले थे, फॉर मूवी स्क्रीनिंग्स, एंड वेरी ओपनली, पीपल कुड सी, देयर इज अ वीडियो एक्चुअली, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, कि वहां पर दे वर नॉट इवन लाइक आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं बना रहे थे. तो डेफिनेटली देयर वाज समथिंग फिशी बिटवीन द टू. नाउ उस पार्टी के बाद जो भी हुआ वो भी पब्लिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया, that Aditya as well as Suraj reached out to Salman to say, to keep Sushant in check as per the reports. So Salman presumably called Sushant and told him to stay out, and also respects his seniors like Aditya Pancholi and his family, and should not be doing all this. वहां से ये सब कुछ शुरू हुआ. Absolutely, absolutely not. Don't tell Varun we go watch her movies. I am not saying. Actually, I'm gonna say the other thing. सूरज पंचोली की अगर आपको मूवी आती है कोई, प्लीज देखना तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल उसको ट्रांसपेरेंट कर दो. सो डू नॉट plan so that Kangana gets negative publicity. Why Kangana? Whatever happened to Kangana's past, but remember, she's not part of this. Don't trust her, guys. Okay, all right. Let's not get into all that. Let's not get. So I'll tell you why we are talking about Kangana and Suraj Pancholi. Uh, if rumors are to be believed, and these are certain things which have been said and done on public media. Even Jia Khan's mom also mentioned the night that thing happened with Jia Khan. उस टाइम पे आदित्य पंचोली एंड कंगना, दे वर टुगेदर अ डे बिफोर या उसी रात को, एंड वहां से कंगना was maybe aware of what has happened or what happened to जिया खान. जिया खान के साथ जब वो हुआ, there were CCTV camera views or footage where everybody saw Aditya Pancholi entering the house uh, on that fateful night. Now, these both were definitely involved, both Aditya as well as Suraj Pancholi involved in the death of Jia Khan, as per राबिया जी. राबिया जी हमारे शो पे भी आई थी. राबिया जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे, बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स पे जाके बात की है, और उन्होंने शुरुआत में बहुत क्लियर बताया है कि देयर इज डेफिनेटली very strong evidences and proofs as per the investigation that her team as well as the UK forensic team, everybody did, and somehow all that was covered up by the agencies in India under somebody's influence, and we all know who that person is. The same person has now become the savior of the same individual, Mr. Pancholi, as everybody feels, even they he is involved. So Suraj Pancholi is now also involved in this murder which has happened. There was also I would still call it a rumor that he was somehow associated with Disha Salian, which I somehow, based on the findings, I don't see that they were associated or related in any way. But at the same time, that party, the dreadful party that happened after which Disha Salian lost life, there is a very strong belief that even Suraj was there. Uh, we will definitely no, that was totally connected. Okay, so yeah, I'll definitely let people also join and talk. I will invite Dhruv. I already see Dhruv in the backstage, so he will also connect the dots for you, or connect the pieces of the puzzle. I would not use connect the dots. So ये कनेक्शन बहुत बड़ा. वो जो फाइट हुई थी जो एक पार्टी में, जहां पर सपोजिटली सुशांत हिट सूरज विद अ बॉटल, उसके बाद सलमान खान took everything under his control. He being the bhai of Bollywood, he being the universal don of this Bollywood industry, he actually stepped in to safeguard his whatever you want to call him, a team member, a gang member, whatever, Aditya Pancholi's son. And he was the one, Salman Khan,
The reason why he wanted to safeguard him was because he was about to launch him. The movie that happened, Hero, जिसमें supposedly सलमान खान ने एक गाना भी गाया था सूरज पंचोली के लिए. uh, he was the producer and he did not want his production, the first production for Suraj Pancholi and Aditya Pancholi, for launching his son. He didn't want it to just finish off. So he was definitely actively involved in saving Suraj. By doing what? By covering up, by making sure there are blank articles written against Sushant. There were other things that happened around Sushant. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लॉट की गई, जिनके कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सलमान खान के साथ जोड़े गए हैं. राबिया जी से जब हमारी बात हुई थी, इफ यू रिमेम्बर, एंड देयर आर वीडियोस अदरवाइज एज वेल अवेलेबल, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला था, आप जिया खान के मर्डर्स को पकड़ लो, यू विल फाइंड सुशांत मर्डर्स एज वेल. उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट बोली थी, एंड आई कोट हर, कि काश उस टाइम पे जिया खान के मर्डर्स को पकड़ लिया होता तो शायद सुशांत के साथ ये ना होता. सो these are the things that really they change the whole dynamics. And at this point of time, आज की डेट में आपने देखा होगा सूरज पंचोली का कुछ महीनों पहले भी एक इंटरव्यू आया, उससे पहले भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था जब उनके ऊपर ये फिंगर पॉइंटिंग हुई थी दिशा से रिलेटेड. सूरज पंचोली ने बिल्कुल क्लियर किया था कि यू नो व्हाट, आई डोंट इवन नो हर, आई वुड नेवर एवर मेट हर, Disha se related. But Sushant ke liye, he's been a little shady as well. His we all have to understand, Suraj Pancholi is friends with a lot of politicians as well, and he is very close to Aditya Thackeray. So that is not even a secret. So they are in the close group. They are in the close, buddies group. आपको मैंने शायद पहले भी एक बार बताया था कि हमने जब आज से कोई 8 महीने पहले, जब when we were doing a lot of big breakings, I indirectly was contacted by someone who was telling me about Suraj Pancholi. तो वो जब वीडियोस आ रहे थे उस टाइम पे, they were getting a little bothered with our videos as well, and somehow somebody connected to Suraj Pancholi reached out and spoke to me as well. I would not call it threat, but it was basically a chit chat where I was given some kind of a signal कि भाई मत करो, this is not gonna lead you. So that's where we have to look at. और जहां तक रही the connection, I'll have Dhruv join as well. Let me just let me take Dhruv in the stream as well. Welcome, Dhruv. How are you? I'm good. I'm so good, Varun bhai. Thank you so much. How about you? Doing very well. Okay. See, the first and foremost thing, certain things what you told today, unknowingly or knowingly, you have given some bits and pieces wrong. See, Salman, when he tried contacting SSR, Sushant Singh Rajput didn't even bother to, like, to entertain him. Mm-hmm. It was Salman Khan, if reports are to be believed, contacted Ankita Lokhande. And from Ankita Lokhande, Sushant spoke on Ankita's phone, not on his phone. Okay. Yeah. Because back then, this Happy New Year was doing rounds. And because Sushant declined on that, is Ankita didn't get the role in Happy New Year. There is one narrative such as well, that Sushant declined to stop speaking against Suraj Pancholi. Sushant declined to stop speaking against Aditya Pancholi is the reason Ankita did not get a chance with Happy New Year. Now she's putting the blame on Sushant, but actually everyone should bow down and salute that gentleman Sushant Singh Rajput. He had beautifully told it in the party that if this is the thing, अगर ये गटर है तो इस गटर में मैं तो रहना नहीं चाहता हूँ, मैं साफ करूंगा पर इनके साथ मिलूंगा नहीं. Okay. Now, getting back to the connection of Zarina Wahab and thing, if reports are to be believed, some people are telling she's connected to political parties, she's connected to this, that, etc. Zarina Wahab was actually very close to Ram Jethmalani, sir. Right. I heard that as well. Yeah. So Ram Jethmalani, sir, was one advocate who was considered to be the Bhishma Pitama of Indian law. Mm-hmm. And it was Ram Jethmalani who counseled Aditya Pancholi
on the consequences what will happen if he stays away from Zarina Wahab. Okay. Wow. So there are things, there are a lot of things that needs to be spoken, and some people on the chat are also telling that don't take Kangana's name. What has Kangana to do here, etc., etc. See, my simple question to all you audience, my friends, is: Kangana raised her voice against her getting raped. Kangana raised her voice explaining every other thing what has happened. Kangana even raised her voice against Sushant Singh Rajput. Now, like for Sushant Singh Rajput. Now, why is Kangana not raising the connection on Jia Khan's case? Yeah. So on that, Dhruv, I think one of the things maybe you could also add, or put some light. From what I heard, Kangna and on the fateful night when Jia Khan was being murdered, there was something around Kangna and Aditya being together. Do you want to say something around that? See, according to what I have believed is the WhatsApp chat which was decoded of Jia Khan's WhatsApp, or not WhatsApp, I'm sorry, it was Blackmail. Safari. This iChair, not BlackBerry, bro. It was iChair. iPhone ka chat aata hai na? Like what you say on iCloud. Uh huh. What is that called? I forgot. FaceTime chat. Video calling. Okay. Not video calling, bro. FaceTime, iMessage. FaceTime, Okay. iMessage. Okay. The iMessage chat which was decoded. Jia Khan had clearly written on that I am not interested in having any dinner with you. Suraj Pancholi calls Jia Khan for a dinner date, and Uh-huh. when she lands up in her house, means when Jia Khan lands up in Suraj Pancholi's house, Suraj Pancholi says he's in an emergency meeting with his dad. Okay. And if reports are to be believed, exactly 3 months later after Jia Khan's death, Kangana started openly speaking up about Bollywood, where she mentioned about Suraj Aditya Pancholi raped me, etc., etc., etc. That happened in 6 7 months down the lane. But yeah, this connection based on this incident, if we try and go back to the picture and revisit the puzzle again, is it not a possibility that Kangana Ranaut was present in the house that day? That Suraj Pancholi allegedly having a big issue to settle with Jia Khan, wherein he has called her on a dinner date to settle out the differences between her. Suddenly puts it aside, saying that he's having an important meeting with his dad. Yeah, that definitely doesn't sound right. Right. This And is yeah, go ahead. this is one angle to it, and the second angle, the Sushant and Suraj fight, what you are talking about. Yep. After this fight, within 3 months, the theoretical release, that what you say, the teaser of Suraj Pancholi's film Hero Hero. Hmm. was out, Right. and yeah, and the time when Suraj Pancholi actually got bail, Salman Khan's Black Buck case was also happening. Yeah. And as per Rabiaji's words and as per the investigations, what we have done as well, in the sense, not we in the sense, it is not me, we in the sense, every common man, because I always say I am the voice of the common man, which common people have done as well. It was Salman Khan's interference that forced the CBI, that he called the CBI and told them not to give more, what you say, not to give more attention to Jia Khan's case. Correct. Yeah. Now there were a couple of things I like to add on this point that you made. Two very glaring points, and this has come from Rabia ji in the interview as well. First point she made, when she was talking to the CBI officials, again, I don't want to kind of demean or say anything against the CBI team, but this is as per her quote, and on the video that the interview that I had with her, uh, the officials said कि मैडम ऊपर से ऑर्डर है आप क्या आपको आपको there was one officer initially who said कि हमें तो बिल्कुल क्लियर है ये क्या है, ये केस बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको closed and shut immediately हो सकता है because we see all the evidences. And she got a little excited and happy that at least she thought कि अब ये will be closed in the right manner and the culprits will be. But then things changed overnight.
They were kind of told by of course the everybody knows by whom, to not pay that much attention to this case and change the direction and lose some kind of evidences and all that stuff. So all that happened, और उसके बाद केस ही बदल गया. दूसरी चीज उन्होंने जो एक बताई थी और बड़ी क्लियरली बताई थी, Suraj Pancholi has an anger issue. He has been known, just like his dad, he has been very aggressive and very abusive around other people. Before Jia, also there was another girlfriend, जिनको literally एक बार तो, and that particular girlfriend actually is in Canada. If the that fact is right, but she also turned hostile. But that particular girl was bashed on a Range Rover that Suraj Pancholi had. इतना गुस्सा उसको किसी चीज पे चढ़ा कि उसने उसको पकड़ के बालों से उसको dashboard पे of his own Range Rover mara, and it was like blood all over. But that was a fit of rage that he did. So he is known to have that anger issue, and the same thing could have triggered. Now there were many things, many elements around Jia and Suraj, but यहाँ पर हम we are definitely not talking just about Jia's death. We are also talking about the issue that Suraj has, which is lack of confidence. First thing, जिसकी वजह से he was asked actually or literally forced to build up his body and all that stuff. तो उसमें एक lack of confidence का बहुत बड़ा factor है. Uh, he always said, and in couple of interviews, that he considered Sushant Singh Rajput as a senior, but he knew that couple of कुछ सालों बड़ा ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, but he knew Sushant became a superstar overnight, and he was full of talent versus he himself, Suraj. He was not even talented. So he definitely saw, all the movies, everything going to Sushant, and he becoming the bigger brand. Same thing happened around Jia Khan. Jia Khan ko back to back movies mil rahi thi, and she was doing a lot of other good work. So that also pissed Suraj a lot. So ऐसा इंसान जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता था, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो हर किसी चीज पे एग्रेशन दिखाता था और एग्रेसिव होके लोगों को मार पिटाई करता था. There was also another story going around in a party. He was high on drugs, and then he started beating, like, got a fight with his own friends as well. So that particular element or that particular aspect of Suraj was known to a lot of people, and that is what I think was one of the factors that triggered in doing what he did to Sushant. If rumors or some of the facts that are around in the public domain are to be believed, he was definitely one of the people who was there on the 13th night at Sushant's house. But again, these are all assumptions or statements made by certain people who could have observed these. So again, I'm not gonna say, I'm gonna put a disclaimer right away that I'm not saying I have evidences or I have proofs that he was there, but these are based on the facts which are available in the public domain, and that is the reason. The other reason that I want to add to this, he is a very close buddy of Aditya Thackeray. They're part of the same gang group, and they have all their parties. And एक वो जो बर्थडे पार्टी की भी बात हो रही थी on the 13th, that was also a party for Aditya Thackeray, जिनका बर्थडे 13 जून को होता है. So a lot of these things kind of tie up together, but at the same time he was definitely one of, वो कहते हैं ना, बिगड़े बड़े बाप की बिगड़ी औलाद. हालांकि इतना बड़ा तो नहीं था, because Aditya Pancholi as a movie star, no, he was not that great, not big, but he was also doing a lot of things on the drug side as well. So there are a couple of things around Aditya Pancholi, which are also going around. So I don't know why there are people here stop slandering Kangana with your paid propaganda activity. So I don't know what is this statement all about. Liberty, justice with Neil, आप जो भी हैं, would love to know. This is the link. I would love to hear what are you talking about and who's slandering. If there is anybody in the chat who's doing it, let us know. But would love to, let's not. I've observed yesterday also there were people who came into the chat
and they were doing something wrong, narratives around the chat as well. Guys, let's be very, very mindful of what we are typing, what we are talking about, and let's not create any kind of false, narratives or statements here. Dhruv, you want to add something here while I look at the See, chat? no, Vinita ji, your moderator, has put out the exact relationship what is between Zarina Wahab and Ram Jethmalani. Just Okay. go down to that and highlight that comment, bro. Okay. Ram's son Mahesh married to Hasina Jetmalani. Okay. So who's Asina? That is this is Ram Jetmalani's Daughter-in-law, Zarina daughter. Wahab's cousin, Yeah, Hasina Jetmalani. Asina Wahab. Got it. Okay. Hasina Wahab. Right. So I think Bollywood. Okay, let me just read out because I think Liberty and Justice with Neil. I think Bollywood Mafia paid you very nice to malign a strong nationalist like Kangana. I don't see you doing lives on Mal Madam who went to anti-national protests to support them. Mal Madam? Mal Who Madam went- is mentioning Deepika Padukone. Mr. Neil, Mr. Liberty and Justice with Neil, let me make one point very clear with you. No one doubts Kangana's nationalism. The only reason the question over here is being raised is Kangana ji is such a beautiful nationalist. Everyone agrees to it. But Exactly. when she is raising her voices against like Sushant Singh Rajput, it is see initial. Let me put it this way. Fine. For a moment, let us take that Bollywood mafia has paid us. Do you have any answer for why Kangana Ranaut ji at the last minute told Sushant's death is murder, is not murder, it's a suicide, and the cases which were on her got quashed away immediately. Javed Akhtar came out and gave a public statement. I'm not going to spare you. देखो भाई नीचे लिखने में बहुत आसान होता है चैट में ना Exactly. कोई भी आके लिख सकता है सीना Yeah. ठोक के सामने आके बात करो तब मानेंगे Right. Or dusri baat, again, maybe Neil, you did not look at the topic. We are talking about revisiting Sushant Singh Rajput's case. Now, what does Tapsi Pannu or Swara Bhaskar have to do with Sushant's murder? I don't see any kind of relation right now. So, yes, we could do a session on Tapsi and Swara in a separate, context. Right now, you need to understand. Again, please look at the title, look at the subject of this life, and be relevant to that. This has nothing to do with Tapsi and Swara. Am I saying Tapsi is involved in the murder of Sushant Singh Rajput? Did I ever say that? Or is anybody here in the chat or anybody on the whosoever will join on the panel, have they ever said taken Swara's name or Tapsi's name for being attached to the murder of Sushant? So what are you even talking about? Yes, exactly, Pyle. I mean, I completely understand he has to be out because that's what happens. This is another thing which I really need to highlight. It's just not the live channel. It's just not about the Twitter and social media. There are people who join and they just kind of take everything out of context, and then they will go to another YouTube channel or another platform or another social media that what this is what these guys are spreading out, that they are doing the wrong thing. So I fail to understand, and that's why I want to address these questions right away. This should not be done. And if you still have questions, and I Varun have bhai posted I'm the sorry link. to cut you in between Yeah, I'm sorry to cut you in between kindly yeah. don't remove these people out okay I because don't. on some other channels they get the masala and the thing on the top let the audience at least enjoy this masala and the thing on the chat to balance with the shock we give. Yeah, I know. I know you mentioned something today, which was surprising, but which is okay as well. So they have to get some kind of stuff on the other streams as well. So, anyways, let's get back to let's not waste time on this. And Neil, if you have any kind of further questions, please join. I've pasted the link. I'd love to hear you, and others also. We'll And love to hear that yeah, story. Varun, let me clear one more doubt of Mr. Neil over here. See, I have immense respect for Kangana's sister, Ragini Chandel. She is an acid attack survivor, and yet she is going strong. See, we are not taking pot shots on anyone.
Someone who has done it right, no matter whatever the situation, it is right. But when you are raising your voice, don't be selective in raising your voice. Raise your voice for everything. Whatever you know, if you have come out once, you should not be thinking twice for coming out again. If you have already started taking the onus on you, nationalism means taking the onus of being a nationalist on you, taking the issues of the nation and speaking on it. That is the real nationalist. No other definition of nationalist suits my sort of dictionary. For me, nationalist is someone for whom nation is above everything. If for you Kangana is above the nation, then what you're doing is right. Yeah. If someone is wrong, he is wrong. Even if he is Narendra Modi ji, even if he is Ramnath Kovind ji, even if it is Varun ji, even if it is anyone. If anyone is wrong, he is wrong. No matter whoever it is. Correct. Correct. That is why Swami Vivekananda once said, don't make anyone your role model. If you make someone your role model will also have flaws in it. Yeah, Kamini ji has put a very nice message, and I'm flashing it. Tapsi and Swara cheerleaders for movie Mafia and Anti-National. So yes, that is, we've seen, lot through both of these, and they're taking the heat. They're definitely taking a lot of heat as well, and which is expected. So all right, let's not waste time on that. Let's get back. I see a few more people, so I'm going to take one by one. Hello, Prisha. And Varun bhai, before you move to anyone else, I would like to put on another interesting point over here. When Tapsi Sure. Pannu joined the Bollywood industry, no, she was a literally nobody. But when she started mixing and mingling with people like Anurag Kashyap, etc., etc., now every other ad you see her there. Yeah. Women's Horlicks, Sprite, etc., etc., and all the Sprite, Women's Horlicks, etc., you see whom they are making their payments to. Where are these companies from? These are not Indian companies. Sprite, yeah, I'm not I'm a little confused on Sprite, but Hindustan Unilever is not an Indian company. This is how the game has been played. Give it an Indian name. See, Peter England is an Indian brand. Yeah. Hindustan Unilever is not an Indian brand. Correct. Let me just take her. Hello, Prisha. Can you hear us now? Yes, Varun, I can hear you. Okay. Yes, please. What do you want to say? Yes, I wanted to say about the matter of Kangana only. Like Mhm. you were discussing that what Kangana said about Sushant. Actually, that day was the day when Kangana received the national award. National Award. You know, Yeah. for Mani Karnika and her other movie Panga. So, reporters, all of them were chasing her, and instead of just only speaking about herself, she also said about Sushant that see this day, Sushant's movie also have has received the award. So it would have been better if he was alive and he had not taken that step. So it doesn't mean that she was specifically pointing out about suicide, you know. Although it is the habit of Kangana to speak very clearly, but it was kind of message which was not that much clear. On that part, I agree with you. Mhm. But she didn't say that he committed suicide. Ma'am, that is exactly my point. That is exactly my point. Kangana has been very vocal and very voiceful and very particular about what she wants to speak. But why did she beat around the bush? No, no, no. So let me just rephrase. Okay. Because if I remember it correctly, and I would love to play that clip. We can say anything we want to. I really got offended when I heard that statement, and I remember she very clearly saying, instead of murder, that was I think the first time I heard from her using the word suicide for Sushant. She has always been bashing that statement, so we all were very surprised that how could even Kangana say that. So I will love to play that. We will definitely see what she said. But after that, I think she retracted and she definitely clarified in a subsequent one. But at that point of time at the airport,
it was definitely something which really hurt a lot of people. She used the word suicide, and I'm trying to figure. I'll play that video. Give me 1 second. I'll do that while you talk, Dhruv. And ma'am, one very important question what I want to ask you, Prishaji, is what is the meaning of Yeah. taking a step? If he was murdered, he did not. If he was murdered, he would not take any step. The people who did that to So, him would have taken. yeah, further to taking that step, she also added that, the other people who ganged up on him got succeeded, So Nah, he nah, added up ma'am. to her first statement. So Varunji will That was play much later. that. Varunji will play So the it audio. was in Yes. continuation of the first statement only. Varun, please play So the audio. Varunji No. will play and Yeah, I am trying you to can decide. find that particular clip. I hope this is the one. Let me just play this. Varunji, please reduce the volume a bit. No, it's very, very. Thank you very much. And I would wish all the winners above everything. I think जिस पर एक award मिला है सुशांत जी I think हम सबको ही is being missed और शायद वो यही चाहते थे कि उनके काम को acknowledgement मिले उन्हें इंडस्ट्री में सराहा जाए चाहे इससे आज प्रूव हुआ है कि बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और सुशांत सिंह को चाहे इन्होंने कितना भी दबाने की कोशिश की लेकिन आज उन्हें अपने काम का क्रेडिट भी मिला है बट आई जस्ट होप कि वो इस चीज तक रुक पाते और काश उन्होंने वो निर्णय इतने जल्दी ना लिया होता अपनी लाइफ में या जो भी जिन लोगों ने भी उनके प्रति साजिश की लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपनी साजिश में सफल हो गए हैं तो आज हमें युवाओं Yeah. So if you listen to this, she did not use the word suicide, but listen to this one more time, guys. I'm gonna play it again. Unfortunately, I cannot play the video, otherwise, it's possible the stream might get disconnected. But I'm gonna play this one more time. Listen to it very carefully. पाने की कोशिश की लेकिन आज उन्हें अपने काम का क्रेडिट भी मिला है बट आई जस्ट होप कि वो इस चीज तक रुक पाते वो इस चीज के लिए रुक पाते. This is what she said, and I'll repeat what she says next. और काश उन्होंने वो निर्णय इतने जल्दी ना लिया होता और काश उन्होंने वो ये निर्णय इतनी जल्दी ना लिया होता. So, to me, this is very straightforward, a statement that implies, again, I'm just going to use the word imply, that उन्होंने कोई step लिया, which is, commit whatever, suicide or whatever. And it is not something that you say, कि उनको मारा गया and all that. So, and then she added on to that. But that particular statement really offended a lot of, Sushant fans. But at the same time, as I said, she was the only one. She was the first one actually who started off. Uske baad Arnab Goswami, uske baad many more picked up the stream. But she was the first one to initially believe that this was not. She was the one. I still remember that interview of hers where she carried a notebook or a couple of sheet of paper where she mentioned very categorically all the statements कि कैसे blind articles सुशांत के अगेंस्ट लिखे गए, कैसे उनको उनका करेक्टर असैसिन किया गया, कैसे सुशांत ने भी लोगों को कहा. So she was so aggressive around that and she was so supportive. So when this statement came, people thought of, उनको कुछ अलग लगने लगा, अजीब लगने लगा कि ये कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया. But, at this point of time, doesn't look like anything has changed, but we don't know. But she definitely was the front runner, no doubt about it. अगर वो ना उस तरह से aggressive आती, वो session ना होता अर्नब के साथ, I don't believe we would have been where we are right now. So that I definitely would love to say. Any comments on this? And I see Swati as well. Swati, you wanted to say something. Yes, So please. I have comment to that the Yes, earlier the clip you have played.
Yeah, तो अगर ये देखा जाए कि कंगना ने बोला कि उन्होंने वो स्टेप ना लिया होता, अगर आप कंगना और सुशांत के स्टेप्स को कंपेयर करो, क्योंकि दोनों के अगेंस्ट ही बुलीज हुई by the same gang of people, correct. whether Yeah. करण जौहर और वो सब, तो आप कंगना और सुशांत के स्टेप्स को कंपेयर करो कि इस कंगना ने क्या स्टेप्स लिए जब ये उसके साथ हुआ, और सुशांत के ने क्या लिए स्टेप्स जब ये सब उसके साथ हुआ, और उसका कंक्लूजन अल्टीमेटली क्या निकल गया। आज कंगना कहाँ पे है और सुशांत को तो हमने सबने खो ही दिया है। Mhm. तो आप यहाँ स्टेप्स में कंपेयर करो, तो आप समझेंगे कि कंगना का क्या मतलब था, क्या मतलब हो सकता है। मे बी दैट वाज रॉन्ग। कई बार होता है कि हम अपना हाँ, कुछ बोलना चाह incorrect. रहे होते हैं, Exactly. लेकिन वो कुछ और निकल जाता है, लेकिन उसने उसको कवर अप कर दिया सेकंड स्टेटमेंट में भी, जो आप अगर कंटिन्यूटी में सुनेंगे तो बिल्कुल अब नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल। सुशांत ने क्या किया कि जब उसके अगेंस्ट गैंगअप होना शुरू हुआ, चाहे वो अंकिता ने भी उसको सपोर्ट उतना नहीं किया, या जब सब एलिगेशंस लग रहे थे सुशांत के अगेंस्ट अबाउट द ब्रेकअप एंड जो भी मतलब उसने अपना करियर परस्यू करने के लिए उसका ब्रेकअप हो गया, ये सब हो गया, तो अंकिता भी सामने नहीं आई सपोर्ट करने के लिए। बट उसने मतलब या तो नेचर ही ऐसा था सुशांत का कि चलो गिव अप करता गया स्लोली स्लोली, तो वो गिव अप करने की एटीट्यूड में मतलब सबने ही उसको बस क्या कर दिया, अब क्या हम कहें। नहीं, आई तो थिंक वो आप स्टेप्स में डिफरेंस हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रिफ्लेक्ट। मैंने वही कहा, जैसे हर एक का एक समझने का एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने किसी और तरह से उसको परसीव किया और कुछ ने कुछ और। सॉरी स्वाति, आप कुछ कहना चाहते थे? Yeah, hi Prisha, hi Dhruv, hi Varun, hi हाँ, everyone, and hello to all who are in the watching right now this live. Prisha rightly said that uh, always Kangana has compared her life with Sushant in some or the other way because they both were outsiders. Both have been traumatized with the same gang of lobby, and plus there were many common people. Yeah, the difference in this was that Kangana took a very bold decision and she took a chance of getting defamed, but still continuing her, her line, what she wanted to. She was very focused in what she wanted to do. And with regard to Sushant, he was focused, but there was only one thing that I always tell in all the lives that वो कठोर दिल का नहीं था. He knew that there is a problem, but he thought कि प्यार से या अपने तरीके से मैं समझाऊंगा इसको. Like to be one perfect hero. He was a hero and he's still a hero in a lot of ways, but poor guy just got trapped and he could not come out of it because the people that he relied upon, okay, the people that he relied upon were actually planning and plotting stuff against him. But with Kangna, she had her sister by her side all the time, like a shadow. So that one plus point was there that मेरी बहन ने मुझे निकाला plus एक self वो भी था. So I don't see. I'm a hardcore fan of Sushant. Okay, but he was little soft-hearted, and in regards to Ankita Lokhande and all, I genuinely feel that there is a moment. There's a spark in every moment that happens, and it's not necessary that every love story or everyone that you love ends up in marriage. We all take wrong decisions in life. Same thing happened with him. That's the reason he got stuck because एक होता है ना that I love someone but वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती. Knowing and unfortunately by the time he must have come to know that I'm already in big soup, and the people that he's confiding, it he could not get out because जिसको वो confide कर रहा था वो भी उसको उसी चीज में डाल रहे थे. We spoke yesterday about Siddharth Pitani and I just got disconnected later. I had a call. But that guy is like very suspicious. He knew from day one that this he's going to go. And in regards to Riya Chakravarti, you see a person coming in an auto and going back in a car and then later coming in a car herself. That shows that they had done full research on him. कितना पैसा है, कितना क्या है, कितना सेविंग है, कौन क्लोज है, पहले उनको काटो फिर अपने यहाँ लाइन बनाओ वहां पर. So he was basically, what, Kangna had that spark in her कि बस मुझे निकलना है, भले ही मैं डिफेम भी हो जाऊं,
I don't care, you know. But with SSR, it was like, usko, he was, if you see his interviews, he was very image conscious, very Yeah. image conscious. In Yes. fact, he was not that kind of a guy who could ever take up his life, because he had a plan of action ready for 30th or 31st of July or 30th July. He had a to-do list to do. So I myself have a to-do list to do when I start my day. So people who always want to do something about their life, positive things about their life, they always maintain a to-do list. At least they have a plan of action कि भाई मुझे ये करना है. So Sushant had a plan of action in life कि अगर मैं फेल भी होता हूँ तो मुझे करना क्या है. प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी वाज ऑलरेडी रेडी फॉर हिम. ओके, उसको ये नहीं था कि मुझे, उसने हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा था मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है. तो आप सोचो, जो इंसान हमेशा कह रहा है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, बिकॉज यू नो दे फाइंड माई टॉक्स वेरी बोरिंग. ऑफ कोर्स जो 10th पास लोग होते हैं और जिनको हमेशा बॉलीवुड बॉलीवुड और फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जब मेकअप एंड ऑल है, तो उनको तो उसकी बातें बोरिंग लगेगी नहीं. You know, and the Kirti Sanan ke sath also he had a good connectivity. Unfortunately, see, everyone wants to save their skin in Bollywood. Okay, एक जन churn होता है. So unfortunately, it was a Sushant who got churned up. In regards to Jia, she must have also realized that's why she took a step and she was with her family. But they knew very well when her family was out. तो ये जितने भी आप देखोगे ना मर्डर्स, काफी हद तक कहीं ना कहीं आपके एक प्यार और दिल के रिलेटेड ही होते हैं. दैट मीन्स जो इनको मारने के लिए प्लान करते हैं ना, उनको पता होता है कि इनका दिल कमजोर है. आप बताइए कंगना के साथ ऐसा क्यों नहीं किया. शी हैज ऑलवेज डिवोटेड बैक. आप ऋतिक रोशन का केस ले लो, यू नो, यू लुक एट हर इंटरव्यूज, शी हैज बीन वेरी वोकल. एंड वो जो एयरपोर्ट वाली आप इंटरव्यू बता रहे थे ना, उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला. देखो, उसने यही कहना चाहा होगा कि मैं सिवियर दबंग थी, विदाउट इवन केयरिंग अ डैम अबाउट माय सोशल इमेज, आई मूव्ड ऑफ. ओके, अगर सुशांत वो इतना दबंग और बोलते हैं ना कठोर दिल का होता ना, ट्रस्ट मी वरुण, ही वुड हैव बीन आउट ऑफ इट. बट वो इमेज Ma'am, कॉन्शियस था बहुत ज्यादा. तो बस Swati ma'am, याद ध्रुव, हाय. I have one small humble request to make. Hi, hi, how are you? Good, टेल मी. I would Ma'am, like I to have come one. in, Varun, also. Rekha ji, one small second. I just have one statement to make, then I'll mute and listen to all of you. Swati ji, Yeah. don't call him image conscious. Sushant was not image conscious. Sushant saaf dil ka tha. Sushant was sensible. He was not image conscious. No, no, He no. was. No, he He was. was. He was. Let me add there. He Let me was add आप two points उनकी, there. मैंने उनका हर इंटरव्यू देखा है हाँ, ध्रुव, हर right. इंटरव्यू. मैं चैलेंज कर सकती हूँ Yeah. ओपनली फोरम पे कि वो इमेज कॉन्शियस थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको बहुत, आपको पता है जब मी टू का मूवमेंट हुआ था, एंड दैट हु इज दैट गर्ल, डक फेस गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, यू नो, ही वाज शॉक्ड टू हिज सोल. ही वाज शॉक्ड कि ऐसा किया ही नहीं. एंड यू सी ऑल हिज वीडियो, जो बैक, वो क्या बोलते हैं, जो ऑफलाइन वीडियोस दिखाते हैं ना मेकिंग वाली, ही इज बीन सो हम्बल. तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि मेरे साथ, उसको बहुत ये था, इसलिए वो बार बार अपने बारे में बहुत सर्च करता था, व्हाट ये पीपल आर news आई थिंकिंग थी. अबाउट हिम. Exactly. I'm gonna Ma'am, add this. ma'am, Dhruv, Varun ji, let me please. just make this point. ये जो अभी स्वाति ने भी पॉइंट बोला, राइट. आई नो एज व्हेन यू बिकम अ सेलिब्रिटी, राइट, यू एंड अप लुकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, प्लस आप अपने आप को देख के थोड़ा खुश भी होते हो. बट लेट्स बी वेरी क्लियर, सुशांत उस वजह से नहीं देखता था कि वो कितना फेमस हो गया. वो इस वजह से देखता था कि मेरे को कोई नेगेटिवली मुझे पोर्ट्रे तो नहीं कर रहा. इसी वजह से वो आर्टिकल, वो जो ब्लाइंड आर्टिकल्स होते थे उनके बारे में वो ढूंढता था और हमेशा क्वेश्चन करता था आपस में इंटरनली कि ये मेरे बारे में लिखा जा रहा है, मैं इसको कैसे रोकूं. और एक दो उसने रिपोर्टर्स को ऐसे बात भी करी, बिकॉज ये लोग, जैसे कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये लोग बोलेंगे कि लड़की जो शिमला से है, जिसके घुंघराले बाल है और ये वो सब कुछ उसने अपने इंटरव्यू में बोला, वैसे ही वो सुशांत के लिए बोलते थे, बिहार का लड़का और अपने आप को धोनी समझता है, ऐसे करके डायलॉग ये मारते थे उन आर्टिकल्स में. सो ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि मेरे लिए अगर कोई अच्छा नहीं लिख रहा तो कम से कम मेरे लिए कोई बुरा ना लिखे, और अगर लिखे तो मैं उसको जस्टिफाई करूं और या देखूं कि उसको रोकूं कैसे. सो दैट इज द पॉइंट आई थिंक दैट स्वाति वाज ट्राइंग टू मेक. इट इज नॉट अबाउट इमेज कॉन्शियस कि यार मेरे आज ये बाल अच्छे लग रहे हैं या मैं पिक्चर मेरी अच्छी आई कि नहीं. वो वैसा डेफिनेटली था. ही वाज अ वेरी हम्बल सोल.
Okay, now And let me Dhruv, connect it this way. Rekha हाँ. ji, last please. I'm Dhruv, sorry. you know what, Dhruv? I think there are a lot of people in the queue right now, so I will not blabber much. But I really feel that, see, you have a different set of mind and you can put across your thoughts differently, and so does everyone else. What my thinking, because my age and Sushant's age is almost the same, so एक mindset की भी बात होती है. And I've been following him from the time when he was into his modeling days and theater wale days mein. So I know a lot of my friends who have worked with him. Okay, so I am following. So I know the kind of guy he was in a way. वो कभी किस्मत से मिलना नहीं हो पाया, but था, वो अच्छे दिल के थे, बस यही प्रॉब्लम थी. Yeah. अगर वो कठोर दिल के होते और बोलते ना कि बस मुझे मेरे एम पे फोकस करना है और मुझे कुछ नहीं देखना है, तो probably आज वो हमारे बीच होते. Definitely. But regards, Yes, ma'am, I respect, agree it's to you. eternal love for him. Okay. Yes, ma'am, I agree Yeah. to you. Varunji, let me make a very important point here. Yes. I was searching for this opportunity. Oh, हाँ. SBS Foundation का last time जब हमने live किया था, हाँ. this is heading exactly there. See what investigation I did, what research I did on the forefront of it. I never insulted SBS Foundation. Now the immediate when that live was happening, Vibhor Anand and Rajat ji, they went on another live and they started raising allegations on me that I took pot shots on SBS Foundation. The very next day, because the number did not connect that day, I spoke to Manish ji. Manish Pal Singh, his name is. He was into Bollywood and media consulting. That's why his number is showing a censor board Manish on Truecaller. And one thing what he told me was, sir, we are not behind any donations, but certain people approached us asking they wanted to help. That's how we shared the link. And your doubts on the link is absolutely true. Okay. Thanks for clarifying. Let me just take Rekha ji before we go Yes. back to your topic, Yeah, because we'll yeah. talk about this at the very Actually, end. I have very Yes. less time, so I Yes, wanted Rekha to ji. come in Abhi. quickly. Abhi, I'll Yeah, take it. which this thing which came, out from the Kanganash, it's really, very bothering. और ये इसको हम लोग मतलब ये नहीं डिनाई नहीं कर सकते, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते. जो उन्होंने बोला है उसको हमको बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ क्या है. तो उसने जब ये ऐसे बोला कि हाँ उसको उसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी और उसको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था. क्लियरली इट गोज ऑन टू से कि वो कुछ बोलना चाह रही है विथ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी to leave it, because she doesn't want to say it, but she is having to say it for whatever reason. ऐसी कोई उसके अंदर डाउट नहीं है और कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर ही हुआ था, क्योंकि शी नोज अबाउट इट वेरी वेल कि वहां पर क्या हो रहा था. यहाँ पर कुछ हुआ है दूसरी चीज. अभी रिसेंटली जैसे उसने अपने बर्थडे पर एकता कपूर के साथ वो आई है. देखो, कंगना को कोई इज्जत नहीं मिली थी बॉलीवुड में, मेन स्ट्रीम्स में उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, उसको बहुत ज्यादा उसको एंटरटेन नहीं किया जाता था. तो इसने उनको आड़े हाथों लिया, सीधे आड़े हाथों लिया कि मैं भी बताती हूँ तुम लोगों को कि मैं भी तुम लोगों की कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों को पूरा का पूरा पर्दाफाश तुम लोगों का करूंगी. तो उसके तहत उसने ये खुलासा किया और कि भाई क्या क्या रीजन है कि सुशांत को ने सुसाइड नहीं कर सकता, वो क्लियर कट मर्डर है, ठीक है. लेकिन उसके बाद अब जब उसकी वजह से हम लोगों को सबको हैविंग सेड दिस, उसने हम सब लोगों को एक हिंट तो दे ही दी. तो उसका जो किया हुआ वो तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये चीज आकर के सामने बोल देना. पर अब जब उसने ये वाली चीज बोली है तो देखो अल्टीमेटली उसने एक बार कहा था नाविका कुमार के इंटरव्यू में भी, भाई मुझे जेल नहीं जाना, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है. जब नाविका उसके पीछे पड़ गई थी कि नाम बताओ करके, तो वो भी देखभाल करके ही, रिस्क अपना कैलकुलेट करके ही लेती है. पहले उसने जब अर्नब गोस्वामी के सामने आई तभी भी उसने उसको पता है कि अर्नब गोस्वामी उसके साथ है, और कई बार वो नहीं भी लेती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, वो बिल्कुल आगे आकर के एक टुक बोलती है. अब यहाँ तो उसको दो चीजें हैं. एक तो उसको कुछ बोला क्या है, किसने बोला क्या है, इट कुड बी एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो. उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उसको बोला क्या है कि भाई आप इस वक्त चुप रहे, जैसे अर्नब गोस्वामी बार बार चाहता है
कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में आकर के बोले, कब बोल पाएगा, ही इज वेटिंग फॉर द टाइम। अभी पिछले वीक भी वो एकदम से बर्स्ट आउट हो गया, बट व्हाई इज ही हैविंग टू कीप क्वाइट? अभी क्या है, अभी वो क्यों नहीं आकर के फिर से बोल सकता? क्योंकि कुछ ना कुछ ये पीछे जो गेम चल रहा है उसी के तहत यहाँ तो कंगना को भी बोला गया है कि भाई आपको नहीं मालूम कि हकीकत यहाँ पीछे क्या चल रही है, हम भी कितना जद्दोजहद कर रहे हैं कि वी डोंट नो, यू नो। Rekha ji? Rekha ma'am. Definitely Rekha ma'am. I will say with very emphasis कि पीछे से उसको कुछ बोला गया है कि तुम एक बार ऐसे बोल दो, चाहे वो एकता कपूर के साथ हो, चाहे वो अब अपने बारे में सोच रही हो कि भाई देखो मुझे रहना यही है, खाना पीना यही है, यहाँ फिर वो उसको इज्जत देने लगे हैं। यहाँ तो फिर उसको किसी के तहत पीछे कुछ बोला जा रहा है कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे, ठीक है तुम हम इस तरीके से अब ड्रग्स वगैरह का हो चुका है, सब लोग सामने आ चुके हैं, लेकिन अब इतना भी नुकसान मत पहुंचाओ अपनी इंडस्ट्री को कि अगर हम सही रास्ते पे भी आने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम मौका ही ना दो उसको वापस। तो क्यों उसकी एकता कपूर के साथ मुलाकात हुई है, किसके मतलब उसके बीच में क्या हुआ है वो हमारी डिटेल्स नहीं पता। Secondly, having said all this, we want a clear statement from Kangana now because this statement was very ambiguous and इसमें उसने कोई क्लैरिटी के साथ नहीं बोला है, बोल के भी नहीं बोला, नहीं बोल के भी बोल दिया। Rekha ji, Rekha that ma'am, was can I exactly comment? my point. Yes. Swati ji, 1 second. Rekha ma'am, Yeah. that was exactly my point. कंकना जी हमेशा डंके की चोट पे बोलती हैं। लेट मी यूज दिस वर्ड, डंके की चोट पे। उन्होंने ये नहीं बोला कि नीली आंखें वाला जरीना क्या वहाब फैमिली वाला, शी डायरेक्टली टुक द ब्लडी नेम आदित्य पंचोली। She directly took the bloody name of the person who did wrong to her. She directly addressed the issue. But here what happened? She took a diplomatic stand. And that is the answer we are seeking from her. Why this diplomatic stand? Because she is outrightly totally absolute एकदम blunt है। और अभी उसको क्या है कि उसको लग रहा है कि आ गए बेटा लाइन पे आप लोग। अब उसके बाद अगर वो उसको भी मतलब अब उन्होंने कंसिडर करना शुरू कर दिया है या कुछ हुआ है उनके बीच में कि क्योंकि फिर तुम सिर्फ ये आकर के स्टेटमेंट बोल दो, we don't know, but of course forces are playing behind our back. I mean, I want to make it more clearer in the sense now 70 साल हो गए बीजेपी को और स्ट्रगल करते और अभी बीजेपी क्यों आया, मैं क्यों बताना चाहती हूँ, आई विल कम टू इट। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के सिर्फ एक स्ट्रगल ही देखा बीजेपी ने और अब जाकर के पावर पाई है। हमें क्या पता कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो मोदी जी हमारे देश के लिए करने चाहते हैं उसके आड़े क्या आ रहा है। किसी ने देखा है घूम करके आप रह सकते हो, आप आ सकते हो कि जो ये इतने सारे जो कश्मीर के इशू सॉल्व हो रहे हैं, जो किसानों के हो रहे हैं मूवमेंट, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ जा रहा है, ये क्या आम या क्या फालतू काम है? ये क्या हम लोग देख नहीं रहे कि हमारी कंट्री में साफ किस तरीके से दो पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने के तरीके में कितना फर्क है? हम नहीं देख रहे। अब आखिर रवि शंकर प्रसाद ने क्यों आकर के श्रीदेवी की भी इन्वेस्टिगेशन को मतलब रोक लगाई है? अब कुछ कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, इनके अंदर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है आड़े, जिसकी वजह से ये लोग सुशांत के रेखा मैम, I'm sorry, मैं बिल्कुल नहीं, एक सेकंड रेखा मैम, इस चीज को बोलूंगी जो मैं स्टैंड है सामने रखती हूँ, नहीं रेखा मैम, वन हम्बल रिक्वेस्ट टू जो भी हो, लेकिन मैं बोलूंगी जो चीजें हैं क्या मजाक का खेल नहीं है। आज जो हमारे यहाँ इतनी सारी ट्रिपल तलाक हटाना और इस तरीके से 35A को हटाना और ये सारे काम हुए हैं, कोई माँ का लाल आकर के करके देखे यहाँ पे किस पार्टी ने किया है, किसकी हिम्मत हुई है और किसी का दम हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट वी स्टिल वांट टू, ऑफ कोर्स वी विल नॉट लीव दिस मुहिम। जो लड़ाई हमें लड़नी है, चाहे हमें इन लोगों को जिस भी पार्टी के तरफ हो आप नहीं हो, जो गलत है वो गलत है और उन गलत चीजों के खिलाफ हम लोगों को लड़ते रहना, आवाज करनी है, इतनी आवाज करनी है कि हमको उनको मजबूर करना है कि नहीं हमें ये इस उस पे नहीं चाहिए कि आप श्रीदेवी की जस्टिस को रोकें, आप सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को रोकें। तो ये इनके पीछे जब तक जनता नहीं पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगी, ऐसी कंडीशन और इतना पावर और इतना फोर्स और सारे मिलकर के आके नहीं उनको मजबूर कर दे कि हमें सुशांत के लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि गेम इन्हीं लोगों के हाथ में है, गेम किसी के हाथ में नहीं है। और कुछ इस तरीके का खुलासा होना चाहिए जिसमें वो लोग किसी चीज को बचा ही ना पाए।
जो ये पीछे Okay, Rekha से ma'am. Rekha ma'am, Swati can I wants to talk? make a point. Yes, Yeah, yeah. 1 second. Let Swati make a point and then I'll take you. Okay. See, first of all, I respect what you said and what are your views. But as regards, you all said that Kangna has to give a statement. See, let's be very, in a very state thinking manner that she is not liable to answer us anything. She will answer when she wants to. Our telling 10,000 times will also not force her to answer. In regards her mingling with other people, that also we can't control because we don't know what is a backstage story. We don't know that. Okay. Now, if you see she's mingling up with everyone, but at least we should be thankful that because of her, this spark took place into a big fire. Okay. So let's focus on the good thing that she has done. Now, you all kept on saying that she has to answer, she has to answer. No, she doesn't have to answer. She knows if she opens even hello from her mouth, or sorry, when she speaks hello from her mouth, she knows why she's speaking not hello. Yeah. We Swati don't have to. ma'am. You think that when she must be going home or when she must be in her car, she and her sister or family members must be not discussing. Everything is discussed, and that's how they open their mouth. Dhruv, it's a harsh reality, but I feel that there are very selected Bollywood people. Some are front warriors, some are back ones. She's a front one. एंड शी हैज नथिंग टू I लूज नाउ बिकॉज खुद की प्रोडक्शन है, खुद मूवी बनाती है, खुद एक्ट करती है, सब खुद करती है, अपने बलबूते पे करती है. शी डजंट नीड सपोर्ट. अदर पीपल नीड सपोर्ट. तो वो तो I बोलती है, ag- उसको पता है वैसे पिक्चर मिलने वाली है नहीं कहीं से. आप एक I ही पॉन्ड में रह के मगरमच्छ से बेर नहीं कर सकते. यू nahi हैव ma'am. टू मिंगल See, सम. या I agree to your point, but the point I wanted to make to Rekha ji was, Rekha ji, what point you have taken is very valid, but this is not the topic of the discussion. See, the topic of the discussion is very important. Let's not politicize any discussion. And Varun ji, I sincerely request you, keep one show for this. Because yeah, what Rekha ji told is right. 70 साल से जिस देश की दुर्गति को सुधारना चाह रही है गवर्नमेंट, उसको हमें मौका देना चाहिए. whatever it is, सुशांत के केस में सुसाइड बोला हो, श्रीदेवी के केस में hindrances लाया हो, I know the exact practical pain what we have gone through. Anyone can tell anything, but at the end of the day, ऐसे discussion को भी मौका देना चाहिए because everyone has their right to voice their opinion. Right. But not relevant to tonight's because ये एकदम से कंगना का सिर्फ बन के रह गया है. The point we were trying to do was, how Suraj Pancholi and the Pancholis were involved and in this murder mystery. So I think that was the Exactly. whole point. That was the whole point. Let's stick to the topic, Yeah. please. See, because Yeah. what is happening is everybody, it is very easy to speak anything, but if we speak to the topic, no, because this your show has a reputation of sticking to the topic. Let's put a sincere effort to stick to it. Yeah. All right. I just wanted to make a point, Yes. and that point took such a big diversion. Anyways, I'm going mute now. Let the others Okay. speak. Sorry. Yeah, I would love Sachin as well as Vishnu. So Vishnu, you've been here for a very long time. Please go ahead. Aapka point. Let's listen to what do you have to say about Pancholi and Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. everyone. मेरा इतना ही पॉइंट है कि see, I have been correct me if I'm wrong, anyone on this show or even on the chat. Kangana has never ever said or even inclined towards a murder. The way she has put up, the Twitter video that she made after the news, and then she had an interview on Republic. वहां पे she has always said that इन्होंने इनको मार दिया in the context of उसको आउटकास्ट कर दिया, ये कर दिया, ये सारे प्रोड्यूसर्स थे, ये वो था, पर उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ किसी ने उसको आके मार दिया है. अगर कोई वीडियो है then I will take my words back, but जितने भी मैंने उसके इंटरव्यूज देखे हैं, I have never heard I will share. कि उसने बोला कि मर्डर हुआ है, उसका खून कर दिया गया है. Yeah, no. Directly or indirectly, she has given signs that there are people involved, not in the movie industry. Movie industry से बाहर से. तो जो movie industry से बाहर है, वो तो उनको outcast नहीं कर सकते, right? Because हाँ, अगर है तो please send me. वो मैंने अगर नहीं दिखा है तो I will take that. Sure.
और दूसरी बात है कि she may have taken, this is my personal opinion again, Yeah. कि she may have taken advantage, because if you see the timeline, कि वो तो कोविड का टाइम था, राइट? Right. किसी के पास कोई काम नहीं था, including myself. So she came on all this show and she was the one to pick it up, right? वो पायल Right. रोहत की पहले उसने भी बोला कि मर्डर है, फिर उसने भी स्टैंड चेंज कर दिया कि वो खुलेआम कहती थी कि नहीं, इट इज नाउ सुसाइड, आपको पता हो तो उसने बोला था, और एवरीवन बेस्ट हर बिकॉज शी हैज गॉट नो वैल्यू. पायल रोहत की, to be honest, she came on your show as well, but she has got no credibility whatsoever in my personal view. And then she came on the show. She came on Times Now, Republic, फिर उसका own video, then the break of her house, and then BMC का case, मानहानि का case, फिर Z security, see that, and then straight after that, Thailavi, she started shooting like last December. अभी 3-4 movie और भी है that she's working on currently, right? She's like broadcasting it on Twitter, which is a fair thing. तो मेरे हिसाब से वो भी हो सकता है कि because she was on in the limelight compared to those other बी ग्रेड, जो बी ग्रेड तो ही बोल सकते हैं, पर जो क्या कहते हैं उनके बी कैटेगरी के हीरोइन से, जैसे स्वरा भास्कर है, फिर ये अपना कौन है, तापसी पन्नू है. तो शी हैज बीन एट द टॉप and she is getting more movies than anyone else. तो मेरा वो मानना है कि perhaps that could have added, whatever she said, and she was vocal on the national media, mainstream media rather. That was something that she could have obviously forced in. ऐसा तो नहीं था कि उसको पता नहीं था थैलावी के बारे में. She would have heard the script and she would have signed it, and then she started, right? So she knew that मेरा ये आ रहा है, so this could be a stage for me too. But anyway, I mean, Vishwa, the point is, again, we are sticking back again to Kangana. Kangana is not the topic right now. The topic is basically how the murder may Aditya Pancholi se leke, Suraj Pancholi se leke, these guys, and then the Khan family, how they have been instrumental, that's how. So Kangana ka isliye bhi angle beech mein aaya tha, because Kangana was also someone very similar to Sushant in a way. She was also not given the due credit initially. जिस तरह सुशांत को आउटकास्ट करने की कोशिश की गई, उसी तरह से कंगना को मेंटल उसको दिखाया गया एज इफ शी इज मेंटली अनस्टेबल, और बहुत सारी चीजें, वो चप्पल वाला एक इंसिडेंट कंगना का था, शी वाज आल्सो पुट इनटू द सेम ब्रैकेट एज सुशांत. जैसे सुशांत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल्स आते थे, but how the commonality between the two was this family, the Pancholi family. Yes, so common factors के बारे में वो तो आप देखो, सी मीडिया में आया था कि भाई ये सूरज पंचोली का उसके साथ झगड़ा हो गया था, ये SSR के साथ, और उसका मारा मारी हुई थी सलमान बीच में. तो दिस इज अगेन अ मीडिया, वो भी इंडिया टुडे वाले को या टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने किसी ने ऐसा लिखा था. व्हेन इट कम्स टू कंगना, व्हेन शी टॉक्स अबाउट पंचोली, उसका अध्ययन उसका बॉयफ्रेंड था, शेखर सुमन का सन, राइट? उसका भी आया था कि ही वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड. ठीक है, वो शेखर सुमन भी he also got, so we don't have to forget that particular factor as well, other than Pancholis. So Shekhar Suman came in, he went to SSR's dad's place, वो just to do a consolation, और वो सब किया, वो वीडियोग्राफी की, ऑप्टिक्स लिए, सब कुछ था. फिर अजयन का भी वीडियो आया था कि प्लीज जो कंगना अगर कुछ कह रही है तो वो मैं नहीं हूँ. उसका कोई वेब सीरीज आने वाली थी, ये अपना क्या नाम है, वो बाबा के नाम से कुछ आने वाली थी. ठीक है, तो कंगना पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कंगना का जो था, लाइक शी, इट्स ऑल हर वर्जन कि मेरे को चप्पल मारा, फिर मेरे को एक रूम में बंद कर दिया जब मैं 17 साल की थी, फिर मेरा रेप करता रहा पता नहीं कितने दिनों तक. उसके घर में गई, उसकी कोई फ्लैटमेट थी तो फिर उससे खींच के, तो दैट इज अ वन साइडेड स्टोरी. फिर वो ऋतिक रोशन का है, ऋतिक रोशन ने आपकी अदालत में भी बोला कि उसने भी मेरे को किया. So that is all one-sided. Whereas Sushant, never ever, all he has done is, he was so humble. All he said, like, please watch my movies. So he knew. So he wasn't as vocal as Kangana to say, okay, ये मेरे को अगर boycott कर रहे हैं, ये सूरज ये क्या नाम है उसका, बंसाली मेरी मूवीज ले रहा है, किसी ये अपना रणवीर, वो जो कौवे जैसा दिखता है, रणवीर क्या नाम है उसका, रणवीर, हाँ भाई.
आधा औरत ही लगता है मेरे को तो, पर एनीवे तो उसकी मूवीज वो जाते, ही नेवर सिट देयर, हाँ मेरी मूवी, ओ मेरी मूवी क्यों उसको दे दी, क्यों वो दी. ही वाज ऑलवेज वेरी फोकस्ड एंड ही वाज कमिंग, ही सेड इट ऑन वन ऑफ द इंटरव्यूज कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है और उसकी इम्पैक्ट क्या होती है कि कोई एक चीज गलत हो जाती है, जैसे उस पे एलिगेशंस लगे थे मीटू का. So he was conscious on that part, particular part. तो सिर्फ wrong allegation तुम लगाते हो, people tend to believe it. जो we all could see right now, we are sitting here, right? कोई भी साला wrong narrative फैलाता है, how many people tend to believe it, right? वो एक chain होती है, chain reaction होता है. So that is what he was concerned about. And he said that please go and watch my movie once, so that you know if I'm a bad actor, then tell me I'm a bad actor. But at least you go out there rather than watching all these stupid media and blinds to say that oh एक लड़की को मैंने harass किया और पता चला कि लास्ट मूवी उसी हीरोइन के साथ थी. You know, makes no sense, right? जो भी सांगी सांगी जो भी है लड़की, she was the one, right? And then everything got squashed. कि उसने एलिगेशन लगाया था कि हाँ he harassed me and he attempted whatever some indecencies or whatever. So Kangana is again, you know, she is a smart lady, and I do like her acting way much better than any other, you know, nepo kids. वो तो कंपैरिजन में भी नहीं आते, पर जो भी है अपने सेल्फ रीचा चड्डा है वगैरह जो भी है, so she is one of the best. But at the time when it comes to Sushant Singh and her story of Pancholi, और पंचोली का तो किसी ने बोला है, ठीक है मैं अपना कोट्स कर रहा हूँ, किसी ने बोला है सूरज पंचोली इज क्या बोले उसको हिंदी में, नाजायज सन ऑफ सलीम खान. तो वो स्टेप ब्रदर है सलमान खान का, पता है आपको? we don't know again. तो ये ऐसा है, तो यानी बिकॉज ऑफ दैट रीजन, हो सकता है नहीं हो सकता, आई डोंट नो. बिकॉज ऑफ दैट सलमान खान इज वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर फैमिली. सूरज पंचोली की अभी दूसरी मूवी जो रिडिकुलस है, थर्ड मूवी अपेरेंटली, पता नहीं किसी वो कैटरीना कैफ की बहन के साथ आई हुई है, लाइक यू नो आई लाइक टू डांस, डांस लव टू डांस, पता नहीं ऐसे ही कुछ है कुछ. सो इफ यू सी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अभी. और उसका केस का क्या हुआ, सूरज पंचोली ने डिफेमेशन केस भी डाला था कंगना पे. ध्रुव जी को शायद ज्यादा पता होगा, वो अभी सब पॉस्ट हो गया. ऋतिक रोशन का भी केस था, एवरीथिंग इज गॉन. नहीं उसका तो चल रहा है अभी, ऋतिक रोशन का तो रिसेंटली हुआ. बट एनीवेज अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कंगना एनी मोर, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल कंगना का बनता जा रहा है, व्हिच इज नॉट वी आर हियर फॉर. टाइटल नहीं था कंगना एंड उसका रिलेशनशिप. करेक्ट. नो कंगना पंचोली का रिलेशन टू द मर्डर मिस्ट्री ऑफ सुशांत. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंगना एंड पंचोली का सिर्फ रिलेशनशिप. You know, the topic is definitely how Kangana started off talking about Sushant, why, you know, we stopped listening, you know, we didn't hear a lot from her, and now back again she's talking in like, you know, bits and pieces जैसे अर्नब के साथ. तो उस चीज के लिए क्योंकि मैंने देखा ये टाइटल में ऐसे लिखा है कंगना पंचोली's connection, इसलिए. करेक्ट. तो you might want to update it to say okay connection to SSR murder or something. उसमें सिर्फ hashtag SSR लिखा हुआ है. And back to basics. Got it. Apologies, man. Sorry. Okay, no worries. So anyway, yeah. So I will take बहुत देर से wait कर रहे Sachin भी. Sachin, please go ahead. Love to hear your points as well. Yeah. Hi, Varun. Hello. Yeah. Jai Shri Ram. Jai Hind. Jai Shri Ram. Jai Hind. पहले मैं अपना पॉइंट स्टार्ट यहाँ से करना चाहता हूँ. आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली, हाँ जी. उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मुंबई. मेरे हिसाब से मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल के साथ क्राइम कैपिटल भी है इस इंडिया का. और ये जो सिंडिकेट है, ये जो क्राइम सिंडिकेट है मुंबई में, ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं है, इसमें हर फील्ड के लोग इसमें इन्वॉल्व है. बीट पॉलिटिक्स, बीट बॉलीवुड, बीट क्रिकेटर्स, बीट रियल एस्टेट, यू नेम द फील्ड and everyone is involved in this crime syndicate. इसीलिए आप देखिए सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली जैसे छोटे मोटे एक्टर्स, लेट मी टेल यू, आदित्य पंचोली आई डोंट थिंक उसका एक भी मूवी उसके लाइफ में चला होगा, और सूरज पंचोली का तो अब बोलने की जरूरत भी नहीं है. Exactly. एक ही मूवी किया और वो भी फ्लॉप. Yep. ये लोग they are getting away with murder.
rape and what not. Yeah. और इसका एक ही रीजन है कि इन लोगों के जो कनेक्शंस है ना, ये जो दे आर पार्ट ऑफ दिस क्राइम सिंडिकेट Yeah. एंड देयर Sachin कनेक्शंस ji, विद पॉलिटिशियंस. जी जी. Sachin ji, you have raised a very important point. I'm sorry to step in between over here. The collection no. between Bollywood and cricket is cornerstone events. Cornerstone events. Bunty Sajde and Ritika Sajde. Now, Cornerstone Events is sponsoring players like Rohit Sharma, players like Jasprit Bumrah. Rohit Sharma is married to Bunty Sajde's sister. Cousin sister. Yeah. That's all I wanted to make, sir. Continue, please. Yeah. So अगर इन लोगों, देखिए ये बिना सिंडिकेट या बिना हेल्प विद पॉलिटिशियंस और इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता. बिकॉज अगर आप देखिए, अगर अंबानी के बेटे का वेडिंग हुआ, लेट अस सपोज, तो इसमें इनविटेशन सबको जाएगा. तुम्हारे बॉलीवुड के सभी लोग जाएंगे, तुम्हारे पॉलिटिशियन सभी लोग जाएंगे, बिजनेसमैन सभी लोग जाएंगे. मतलब कहीं ना कहीं सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है मुंबई के सभी क्राइम्स में. अभी सुशांत के केस क्यों डिले हो रहा है और ये एंटीला केस क्यों इतना तूल पकड़ रहा है, इसका एक ही इसका आंसर है मुकेश अंबानी. Yep. बिकॉज मुकेश अंबानी के लाइफ को थ्रेट हुआ, इसीलिए सेंटर हैज टेकन इट वेरी वेरी सीरियसली एंड दे आर परस्यूइंग दिस केस. सुशांत सिंह के केस में द सेंटर नोज एवरीथिंग, सीबीआई नोज एवरीथिंग, बट दे हैव पुट इट इन अ बैक बर्नर. The only reason is Sushant Singh Rajput was just a common man like you and me. मुकेश अंबानी के गले तक हाथ पहुंचा, इसीलिए ये अब एनआईए आ गया. मुझे बोलिए, पालघर संतों की हत्या में एनआईए क्यों नहीं आया? सुशांत सिंह राजपूत केस में एनआईए क्यों नहीं आया? वहां पे तो दुबई का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो एनआईए को जरूर आना चाहिए. क्यों नहीं आ रहा एनआईए? सिंपल रीजन है, it is all about common man cannot get justice in this country. आप देखिए निर्भया का केस, it was so clear. Charge sheet also was filed, but कितने years के बाद justice मिला हमको? And the juvenile also got away. और हमारे विभोर आनंद जैसे ग्रेट लॉयर एडवोकेट ने भी इसमें अपना हाथ डाल के पूरे इसको खराब कर दिया, उस केस को. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ विभोर आनंद जैसे लॉयर्स के वजह से ही निर्भया का जस्टिस डिले हो गया. अगर वो इन्वॉल्व नहीं होता तो मेरे हिसाब से विद इन 1 or 2 years those people would have been hanged. And Vibhor Anand himself accepted that उसने प्रूफ्स को, मतलब थोड़े एविडेंसेस थे, उसको उसने लीक होने से बचा लिया. मतलब द सस्पिशन कुड हैव बीन, हाँ, बाहर आने से उसने बचा लिया. आई मीन जस्ट इमेजिन. अगर मैं तो बोलता हूँ ये विभोर आनंद, मैं एक्चुअली इस विभोर आनंद के बारे में बात करना चाहता था जब आपने लास्ट एक लाइव सेशन किया था अबाउट फेक पेडलर्स एंड एवरीथिंग. मेरे हिसाब से ये सुशांत सिंह राजपूत के मूवमेंट में आया है इसको डिसरप्ट करने के लिए. पहले इसने सबका कॉन्फिडेंस गेन किया बाय हिज फेक नैरेटिव्स. उसके बाद जब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसको ही केम आउट विद द ओनली कंडीशन दैट ही इज गोइंग टू डिसरप्ट दिस मूवमेंट. जो लोग अभी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में, उन लोगों के बीच में ये फूट डालेगा. और उसने पूरा ब्लेम अर्नब गोस्वामी पे डाल दिया. 1 second, आई विल म्यूट माई सेल्फ फॉर 1 second. Sure. So I want to say something. I want to add something. But please go ahead. Yeah. Guys, if you have known this guy, I was literally shocked to find out, like, a few weeks ago. Vijay Raz. Does anyone know who? Spot on, sir. Spot on, sir. Vijay Raz. Yes, I know him. I know very well. Let you finish, then I'll take the topic. Spot on, you're spot on. Continue, sir. Your good name, sir? Vishrut. Oh, Vishrut, sir. Okay. Vishrut, take the point of Vijay Raz. I know a lot of him. Take it. तो उसका भी नेटवर्थ देखोगे तो $40 million और रिपब्लिक के द्वारा है 299 करोड़.
This guy has started his career in 1989. चलो वो टाइम पे भी देखो कि वो मेन लीड रोल में तो था ही नहीं. We have only got to know him in past maybe 15 years or so. ठीक है, कोई छोटे मोटे में आता था as a comic character, right? तो comic character को like you don't pay them like 5 crores. चलो 10 crores भी दे दो, जितने भी मूवीज की है और उसने कोई स्पेंट नहीं किया है, सब कुछ बचा के रखा है, सब कुछ उसको फ्री है 15 साल से भी. Even then, like 299 crores or 40 million, which is more than 299 crores as of last year. That is a way lot than the other mainstream. Kunal Khemu se bhi zyada. ठीक है, almost in line to line with more than SSR, more than these other newbies, Ranveer. So that guy sounds like seems very fishy to me because उसको कहाँ से आता है. या अगर वो हिंदू भी है, because people tend to राज सरनेम रखी है, राज था पहले, उसका उसने राज कर दिया, RAAZ. And he always keep it low profile, and they are good mates with Manoj Bajpayee, Ashutosh Rana. They are very like वो स्कूल जो ND क्या बोलते, न्यू दिल्ली का जो भी है ना वो फिल्म का, वहां से है ये सारे लोग. और उनके एक इंटरव्यू में वो सोन चिड़िया में भी था मनोज बाजपेयी और ये अपना SSR, राइट. तो उसके अंदर से लाइक समथिंग दैट आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट मैंने वो 3-4 वीक पहले मैंने बोला कि चलो ऐसे कोई वो आ रहा था, कोई टीवी पे पुरानी कोई मूवी आ रही थी, उसके कॉमेडी सीन्स आ रहे थे, तो मैंने बोला विजय राज. तो गूगल पे मैं विजय राज किया तो उस पर आ गया नेटवर्थ. मैं बोला चलो देखो तो सही, पता चले 1 या 2 3 4 करोड़ होंगे. 40 मिलियन. फिर मैंने दोबारा चेक किया, मैं बोला 40 मिलियन सीरियसली मैन. और फिर रिपब्लिक मेन स्ट्रीम न्यूज, उसमें लिखा है उसका कि लूट केस के जो मूवी में था वो जो भी उन्होंने ऐसा वो सताया डाला कि जितना भी पैसा था उससे कहीं ज्यादा है उनके पास द नेटवर्थ. So I don't know how that money came, and he apparently claimed that he came from very poor family. So rest I will leave that with Drew to perhaps if you have more info to share. I know it is not in connection with the topic line, but at least we need to find out as to how. It is very highly, Vishrutji, it is very highly connected to the topic line because Vijay Raj started his career with someone who was very close to Imtiaz Khatri. Yeah. Anil Musrat and Imtiaz Khatri. And Vijay Raj is also very close to the Kapoors and the Butts. Vijay Raj actually, if my information is not wrong, is the go-to person for Butts. But ka koi bhi movie, Bombay to Goa, you have seen this movie, Bombay to Goa, the abbreviated version of the old Bombay to Goa. The comedy movie where there were 9-10 actors and it's a funny movie where Sunil Pal Singh, everybody were there. Yes, old movie, Bombay to Goa. Amitabh Bachchan and Aruna Iran. No, the new one recently which was launched. I remember. Yeah. Asif Sheikh bhi tha usme. Yes, he was the bus driver in that movie. So yes. That movie was totally sponsored by Anil Musrat. And that is one of the only movies where he had shared a screen space for over an hour. Rest of all the movies, he was maximum there for 15 or 20 minutes. And watch any movie, be it like, I forgot what was that movie? I forgot the name of that movie. Anil Kapur, Sunil Shetty, everybody. He comes as the suicide guy. हाँ. Yes. Welcome tha ya something like that. No, not welcome. It was not. It was something like no. Musafir bhi nahi sir. नहीं not Musafir sir. Recent movie. And he commits suicide and tells stories about मैं इंडिया था पाकिस्तान से हूँ, फिर कभी बर्मा से आ जाता है. अफगान से हूँ. That is the exact life story of. That is the exact real life story of Vijay Raj. Vijay Raj था, उसको Vijay Raj इसीलिए बनाया because Anil Musrat suggested that name. You can ask NK Sood about this. He'll give you more information. Okay. Yeah. So can I continue? Yes, please. Yeah. देखिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस क्राइम सिंडिकेट इज. बॉलीवुड में मेरे हिसाब से प्री क्वालिफिकेशन आपका ये नहीं है कि आपको एक्टिंग आता है या नहीं. वहां पे प्री क्वालिफिकेशन ये है कि आप ड्रग्स सप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ड्रग्स पेडलिंग कर पाएंगे या नहीं, तभी आपको रोल मिलेगा. Correct. नहीं तो नहीं मिलेगा.
इट्स वेरी क्लियर। और एनसीबी में आप देखिए मैक्सिमम लोगों के तक हाथ पहुंच गया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि सेंटर इसको बहुत स्लोली स्लोली लेके जा रहा है आगे। दे आर रियली ऑफ Sachin कोर्स sir, दे I'm वांट टू sorry क्लीन to अप। cut you in between या here. I want to cut you. Don't take any pot shots on NCB because NCB का सबके गले तक हाथ पहुंचा था. I know the inner story there. Managers ने blame लिया है अपने ऊपर. रिया चक्रवर्ती को proudly बोला था. We had almost cornered her and it was done. It was Riya Chakravarti's manager who took the blame on his head. Or Riya Chakravarti going every Monday, every first week of Monday to NCB is not a joke, sir. समीर वांकड़े सर is working 24/7 और गोवा में लोग ना समीर वांकड़े का नाम सुन के थर थर कांप रहे हैं. We have gone यस to 3-4 resorts to verify about it and यस they are telling cocaine, heroin, brown sugar. नहीं नहीं मेरा बाप समीर वांकड़े आ जाएगा. That is the fear he has यस created in people's mind. सर So आई kindly कम no फ्रॉम shots पार्ट on ऑफ NCB, sir, because या नो आई एम नॉट टेकिंग शॉट्स। मैं इनफैक्ट आई एम प्रेजिंग बिकॉज ऑफ एनसीबी ये केस यहाँ तक आया है। इनफैक्ट द केस इज अलाइव बिकॉज ऑफ एनसीबी ओनली। Otherwise, if you see, CBI is completely quiet. It is NCB नहीं that sir. is currently doing its. Yeah. Let me tell you one very important point. For a state like Goa and Maharashtra, how many NCB officials do you think should be on board? 100. 48 people are on board. 48 people in Goa, 22 and 48 people in Mumbai, and 22 in Maharashtra. How can you expect NCB to do the work fast? 60 people altogether for 2 states. Mhm. Okay, that's good information. Sir, but there are many people, especially Rakul Preet Singh बोल के एक actress को ये किया था. She could have been the gateway for NCB to catch the culprits in South because she works वो South industry में बहुत मतलब काम कर रही है and उसके activities बहुत ही मतलब संदिग्ध है. For example, she danced in a criminal एक गाली जनार्दन रेड्डी बोल के criminal है, if you know. Yes, Gali Janardhan Reddy. Yes, school scam. उसके वेडिंग में इसने डांस किया था। Okay, और sir, let me इसके give you one more very important connection here. आप रकुल प्रीत सिंह तक क्यों जा रहे हो? सिद्धार्थ पटनी started his career with South movies. यस ही Rakul इज साउथ Preet Singh इंडियन। Rakul Preet Singh got mileage because of Siddharth Patani. Rakul Preet Singh का मैनेजर है अमजद अली करके, celebrity manager who does DJs in Bangalore, Goa, Mumbai, everywhere. He is one of the top kingpins of drug mafia. यस सर, इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूँ, आपको नागार्जुना मालूम है ना, एक्टर? नागार्जुना के बारे में भी कुछ मत बोलिए सर. नागार्जुना is नहीं like नहीं, मैं bit सिर्फ आपको एक फोटो के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। उनका बेटा है अखिल अक्किनेनी, उनका सरनेम है अक्किनेनी, तो उनका बेटा है अखिल अक्किनेनी। तो यू कैन गूगल सर्च अखिल अक्किनेनी एंड इम्तियाज खत्री। No sir, you're आपको wrong. You're totally wrong. See, नहीं Akhil सर, आपको Akkineni, फोटोग्राफ मिल जाएगा। सेंटर में अखिल Sachin, अक्किनेनी है, लेफ्ट साइड में करण जौहर है और राइट साइड में इम्तियाज खत्री है। तीनों ऐसे एक दूसरे के कंधे पे हाथ मिला के फोटो खींच रहे हैं सर। सर मैं आपको सिंपल इसका जवाब देता हूं. जो नंबर प्लेट का इंसिडेंट हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको MS-20 DP करके रिपोर्ट किया था. हमने रिकॉर्डिंग्स प्ले किए लाइव सेशन पर. सो अखिल अक्किनेनी, इम्तियाज खत्री एंड करण जौहर का सिस्टम ये था. दिस व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ वाज प्लान्ड बैक इन 2013. अखिल अक्किनेनी का एक मूवी आया था. इट वाज बेस्ड अराउंड म्यूजिक. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी. आई रिमेंबर हिज कैरेक्टर's नेम, अविनाश. They wanted that movie to be Bollywood sponsored, and it was Akhil Akkineni who had the guts to stand and say no. Okay. There is one family in Tollywood, which is respected like God. That is the Nagarjuna family. I can proudly say this. Yeah. I will not tell what it is, but know Nagarjuna family very closely. सर but बट is it एक true- चीज is है, it true? नागार्जुना का जो बिजनेसेस है, उनके बहुत सारे पब्स और बहुत सारे उनके रेस्टोरेंट्स हैं उनके, एंड देयर आर सर्टेन एलिगेशंस अगेंस्ट हिम दैट अर्लियर द तेलंगाना गवर्नमेंट वांटेड टू बिकॉज उन्होंने इलीगल एरिया में उन्होंने अपना एन कन्वेंशन बोल के एक बिल्डिंग लगाया था। तो नागार्जुना जी ने ऐसे कुछ जुगाड़ किया कि 2 महीने के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ये सब चीज भूल गई, और इनफैक्ट he and his family became the brand ambassador for Telangana government.
अब इसके Sir, बारे it में is क्या not बोलेंगे? because of. It is not about Nagarjuna. You have heard the Ma TV. Yeah, I know Sharma. Yeah, Star, it has become Star Ma now. It were the yeah, producers, it is the partners of the Ma TV who were behind N Convention. Nagarjuna was not the only person. See, as I'm telling again, this topic is about Suraj Pancholi and Kangana's connection. yeah, When yeah, we yeah, do a yeah, show on South actors, no, let's talk yeah. about South actors. Yeah, नहीं Let's नहीं, not just I was deviate trying from. I was trying to bring how the deep the nexus is. So मैं ये बोल रहा था कि साउथ में भी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज साउथ में भी हुआ था ये। अकुन सबरवाल बोल के एक पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया था इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द टॉप एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स वर कॉल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं। Let's do this, Sachin, tomorrow, almost the same time. Let's do this kind of conversation. जो बाकी सारे pieces of the puzzle है उनको connect करने के लिए. So let's do that Yeah, tomorrow. yeah. I Right. will speak about सूरज पंचोली and आदित्य पंचोली. हाँ जी, yeah. देखिए, इनफैक्ट जिया खान के मर्डर के केस में आदित्य पंचोली वॉज कॉट ऑन क्या बोलते सीसीटीवी, या उसका सीसीटीवी कैमरा है उसमें। Correct. उसमें देर आर इमेजेस, देर आर वीडियो वेयर एक्चुअली जिया खान एंड हर मदर गोइंग आउट एंड आदित्य पंचोली इज ट्राइंग टू स्नीक इन। जब इतना एविडेंस है सीबीआई के पास और इनके पास, और जब इनके पास मतलब ऑलमोस्ट इट इज अ क्लोज एंड ओपन एंड शट केस, फिर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो अब मैं क्या बोलूं अब। I mean, what is the solution? I want people to give solution to this. मेरा एक ही solution है, they have to be eliminated. Right. Dhruv, you want to answer that? Being closer to the system? Yep. I didn't get the question exactly because I was actually on a call. I got an urgent call telling don't speak about Nagarjuna. I'm sorry. What was the question? Yeah. The question is, Nagarjuna, I want to say something. Dhruv, isn't the fact that Rana Daggubatti, Nagarjuna, Venkatesh, they're all kind of like a family related? I saw one of the videos. Yes, Lakshmi Daggubatti, Nagarjuna's first wife, Nag Chaitanya's mom, is yes, she is of Daggubatti family. Yeah. So they are all kind of, Nagarjuna, and then this other guy, क्या नाम है उसका, Ram Charan, जिसका daddy, Chiranjeevi. Yes. They are all family. Yeah. Connection, like the entire sort of Tollywood, like the named faces. सर मैं बिकॉज मैं टॉलीवुड को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको एक बात गारंटी से बोल सकता हूँ। Me too. Like I like the translated version. I don't see the actual language, but the translated. नहीं, मैं बिकॉज मैं टॉलीवुड से बहुत कनेक्ट, मतलब मैं बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको एक बात जरूर बोलता हूँ, टॉलीवुड में आपको उतना ज्यादा ड्रग्स नहीं मिलेगा, उतना एंटी इंडिया एंटी हिंदू मूवीज नहीं मिलेगी, लेकिन टॉलीवुड में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम मूवीज आर स्पॉन्सर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, मतलब पॉलिटिशियंस का ब्लैक मनी लगता है मूवीज में। उसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई क्राइम्स में ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। Exactly my point, sir. Exactly my point. Which is good, man. Which is fair, man. Come on. At least it's going into people who are working hard with real talent. Yeah. सर मेरा बोलने का एक ही है कि आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली जैसे छोटे छोटे लोगों को भी अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट बेबी पेंगुइन जैसे लोगों का हाथ कहाँ कैसे होगा सर। मतलब मेरे हिसाब से सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली जैसे लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए, एंड इसके लिए हमारा इंटेलिजेंस आना चाहिए सामने। Sachin, I would be careful. Do not use such words because people could report it as threatening to kill someone when you use the word eliminate. No, sir, they are not okay. I take back that words. But मेरा बोलने का ये है कि अगर आप इन छोटे मोटे क्रिमिनल्स को भी अगर आप नहीं पकड़ेंगे, तो बड़े लोगों का तो हाथ पहुंचने का तो इम्पॉसिबल है फिर। Yeah, exactly. So we have to put them behind bars and to create an example. So that is what I think. That is what exactly. So Sachin, I mean, one of the points is जैसे कि बहुत information जो बाहर publicly again available है, उसके हिसाब से we know Aditya Pancholi has a lot of connections to the drug mafia, and as one of the peddlers, I think that's what he has to be tried. But वो कहते हैं ना, ऊपर जो हाथ है, वो जो हाथ है जो इनको बचा के अभी तक बैठा हुआ है,
that is really अगर murder से निकाल लिया, drug peddling से निकाल लिया, and it's just not one Jia Khan. Let me be very clear. There have been multiple cases against this family, and हर जगह से ये निकल आते हैं. So that is the most unfortunate part. But right now, जिस तरह सुशांत के केस में अब चल रहा है, इतनी agencies, now it looks like it will be a little difficult for them to even use that card. वो जो ट्रम्प कार्ड Yes. अपना यूज हमेशा करते हैं. सर आप देखिए जो एंटिला के केस में मनसुख हिरेन के मर्डर के केस में जब सर आर यू एबल टू हियर मी? या मनसुख हिरेन के मर्डर के केस में जैसे ही अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली Varun का ji, I'm न्यूज sorry, बाहर my आया. phone had switched off. You are talking about Sachin's question, Varun ji. Yeah. What was the question? नहीं, माय क्वेश्चन इज अगर आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली जैसे छोटे छोटे लोगों तक Am I Are you able to audible, hear? Varun ji? Yes, you are. Can you hear What us? was the question? Yeah, Yeah, I can you can hear- question hear is- you. What was the question? The question is if सूरज पंचोली या आदित्य पंचोली जैसे छोटे छोटे There's लोगों something को around ही हम नहीं Aditya पकड़ Pancholi सकते. being found over there, etc., right? Okay, looks like 1 second, Sachin. Looks like Dhruv is not able to hear. Dhruv, can you hear us? I can hear you, Varun bhai. Can you hear me? I am not able to hear Sachin ji. Okay. All right. So basically, the basic question that he's asking is, and I'm going to simply generalize the question is, कि अगर इतने evidences होने के बावजूद आदित्य पंचोली का वीडियो था, सीसीटीवी में images captured थी, we saw all those in the BBC documentary में भी, and otherwise also that evidence is available. Still, we are not able to get hold of and catch these guys and put them behind bars. Then what can be done around all this? See, Varun ji, first and foremost thing what we need to understand over here is evidence is hai, video evidence is hai, but evidences के साथ साथ who has known what is happening behind the closed courtroom doors? गवाह ने कुछ और बता दिया, सबूतों ने कुछ और बता दिया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. See, most of the time what happens is people don't come out in the front and talk. If you know some wrong has happened, that is what I've been humbly requesting everyone from the day one. Come out, open up and speak up. If you're not speaking up for someone else, tomorrow when something happens to you, no one will speak up for you. Because what goes around always comes around. I want to Rabia ji चिल्ला के रो के एक इंटरव्यू में कह रही थी, my daughter is gone, but let's save the other children. Can I counter It's Dhruv 8 ji years here? for Jia Khan's justice. Now, do you think, Can I- don't all of us feel that during Jia Khan's time, if at least, now we are 100%, at least 1% of this 100% rose a voice back then. Do you think whatever happened after that, 11 murders happened after that. 11 murders or Can I- suicides or suspicious deaths rather. The best word is I don't suspicious deaths. think he can hear you, सिर्फ एक Sachin. One counterpoint. second. Yeah. Dhruv, can you please disconnect and come back again? You're not able to hear Sachin, and Sachin wants to counter you. So can you please disconnect and come back again so that you can hear him? Okay, I'll come back. Okay, thank you. I totally agree with Dhruv ji here कि जो मतलब एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो गवाह है वो लोग पलट जाते हैं, वो सब ठीक है. लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान के केस को मनसुख हिरेन और एंटिला केस से कनेक्ट करके देखिए. एंटिला के केस में किस तरह तेजी से बढ़ रहा है केस. एंड लेट मी टेल यू, NIA पीपल वेंट इनसाइड दैट रिवर एंड दे रिकवर्ड दैट हार्ड डिस्क. रिवर के अंदर जाके उन्होंने जो हार्ड डिस्क उन्होंने डंप किया था उसको रिकवर किया. 8 हाईटेक कार्स को उन्होंने रिकवर किया और न जाने कितने दिनों में. दिस इज जस्ट इन स्पैन ऑफ 10 days. एंड देन अ मिनिस्टर आल्सो हैज रिजाइंड. टेल मी, जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसे कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन मनसुख हिरेन केस और एंटिला केस में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मुकेश अंबानी इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं उसके सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इन्वॉल्व है. तो ये धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि भैया इस देश में कानून जो है सिर्फ बड़े लोगों के लिए है. आप और हम जैसे कॉमन लोगों के लिए तो मतलब सामने भी है आपके पास एविडेंस, लेकिन भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है. दैट इज माई पॉइंट. दैट इज माई काउंटर पॉइंट टू
Dhruv ji. Varun ji, I'm Sachin ji, let sorry. me put it in this way to you. See, Okay. there are three Dhru- agencies in the country which take any case. One is the Investigation Bureau, the Intelligence Bureau, sorry, IB. One is the CBI, and one is the NIA. CBI is Central Bureau of Investigation. IB is Intelligence Bureau, and NIA is National Investigation Agency. So when the case is already with CBI, on what grounds can the NIA step in? Now, if the case goes into the NIA quarters, then the NIA can give it a thought. Sir, can Are you I understanding my point? give a counter here? Can I give a small counter here? Please, sir. Sir, you know how CBI has come, right? CBI has come only after Supreme Court has given permission. But you know that Directive, not permission. NIA does not require any permission. If central government gives nods to NIA, it will automatically come in, and no state government can question them. पालघर के केस में अभी तक एनआईए क्यों नहीं आया? दिस इज पिटिशन फाइल्ड बाय अ पर्सन इन पालघर केस, एंड सेंटर एनआईए को क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहा है? और सुशांत सिंह Sir, राजपूत के केस में भी एनआईए क्यों इन्वॉल्व है? इट इज सेंटर के हाथ में अगर है तो एनआईए डायरेक्टली आ जाएगा. sir, that is what I'm trying to make you understand, sir. See, CBI is an independent body. IB is an independent body. NIA needs orders. Okay. National सेंटर, Investigation वही तो Agency. मैं बोल रहा हूँ सर, सेंटर क्यों नहीं कर रहा है? Why center is ordering? Do you think पालघर के केस में नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है? सुशांत सिंह केस में नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है? नहीं, national security का issue है, but when Palghar case came up, NIA was already held up somewhere else. See, this is what I Okay. want to make people understand. See, during Palghar's time, just before or after Palghar, I'm not sure, Pulwama happened. Okay. Okay. And now, what was the next case? During Jia Khan's time, Jia Khan, if I'm not wrong, he passed away in June 2013, right? 6th of June 2013, if I'm not wrong. Can anyone Yeah. exactly tell me what was the time Jia Khan passed away? 2013, 6th of June, if I'm not wrong. 2013, I think. 13. Yeah, 2013, 6th of June, if I'm not wrong. So during that time in 2013, Maoist attacks happened. Okay. So when Parveen Babi passed away, Sanjay Dutt's Tada hearing was there. When Gulshan Kumar, as soon as Gulshan Kumar or Divya Bharati passed away, a Mumbai blast happened. When Rajesh Pilot, Sachin Pilot's father passed away, Parliament attack happened under a year. So even before, see, there is a channel to go. From the police, it goes to the CBI. If there is a channel to go. From the police, it can go to the NIA. But before police investigation is done and the ground report is ready, what is the case will not go further. Okay. Now, in Sushant Singh Rajput's case, even before the case would have gone to the NIA, I understand that CBI and NCB is taking their time, but they are doing their job. At the end of the day, even before NIA angle could be thought as well until it happened. Okay. Let's take this And for Sushant Singh tomorrow. Rajput's case, during Sushant Singh Rajput's case as well, as soon the farmer protests happened. Forget about the Antilla thing. The farmer protests happened. Let's Maybe take it was done tomorrow's to conversation. deviate Sushant Singh Rajput This case is a a little good bit. topic. This is really No, an no, interesting sir, and I'll tell you something. important See, topic. sometimes what happens is a bigger crime, in order to hide a bigger crime, these small issues are popped up. Right. Yeah. One सर, simple question to मैं it. आपको एक इशू बोलना चाहता हूँ. जब आदित्य ठाकरे का नाम आया था, तब उद्धव ठाकरे ने सामना के न्यूज़पेपर में ये थ्रेट दिया था अपने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कि अगर आपका हाथ मेरे फैमिली तक आएगा तो मैं पूरे देश को जला दूंगा. That is all political. That is all what you say, sir. देखो, चोर के दाढ़ी में तिनका करके एक कहावत है. Don't mind. Let me tell you something very important here, because this point I'll give you one small connection. Ask every Indian that from Srinagar to Pulwama is a 150-kilometer stretch road. 27 military toll booths, 18 security checks, and 31 points of heavy intrinsic checking are there on the road. So when the vehicle traveled from Srinagar to Pulwama, are we foolish enough to believe that there was no internal hand involved? Might be there is a possibility that there might be big politicians involved. See, understand this. Srinagar to Pulwama is a 150-kilometer road.
Varun bhai. Yeah. Varun sir. Yes. Can you hear me? Hello. Am I audible? Yes. Can you guys hear Hello. me? I don't know. Can anybody else hear me? Yeah. Hello. Okay. Yeah, maybe Dhruv, you're Hello. not able to hear me. Okay. So from Srinagar to Pulwama, it was a 150-kilometer road. Yeah. What answers do you have for this, Sachin ji? No, sir, Or any definitely other मैं बोला ना panelist सर who wants to answer? सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का ये काम नहीं हो सकता. There are multiple hands involved in this. So guys, I think let's take this for tomorrow, because अब थोड़ा सा I'm also getting a little lost in this I hope I conversation. answered your question. Okay, maybe. Yeah, Dhruv, you have answered, sir. Yeah, all right. Thank you. I'm gonna take Venki. Venki, please. You've been waiting very patiently, and then I'll take Bhaskar bhai. So No. Thank you, Varun ji. I came to salute Varun ji, we can continue, Dhruv ji. sir. Yeah, Dhruv ji, hats off to you. I came to say this. Where does Sridevi's case stand at the moment? Dhruv sir, if you can throw a light. I mean, may not be immediately, in another session. Yeah. And one thing I want to tell the other person who was talking about why NIA is not doing it all. See, 7 agencies are down the line on ground in Mumbai. Otherwise, you don't know at this point of time, something like happened in Chhattisgarh could have happened here. So many things are happening. And let us not say that Anil Ambani, Mukesh Ambani aaya, iske liye NIA aaya. It could be the other way around. Just not rule out that possibility. To bring NIA, certain things have happened. I always still maintain, that is what I got from a senior person, that we have heard about that Panchatantra story. Am I audible? Yes, I can hear you. You just keep in mind the Panchatantra story where the crow was tortured by a snake. It went to the river bank, took the queen's necklace and put it inside the snake's pit. The king's soldiers came, and you know what happened. So let us keep that at the back of the mind. Many things. Bombay is not that easy. If in '93 somebody could get an AK-56, we were traveling by train that day near a particular station when this guy came and threatened everybody. People working in Indian Oil, and they saw this. He came in a filmy style. He threatened. See, when this is way back, you don't know, and 10 years of UPA, you don't know what all could have landed in Mumbai. It is not as easy yet. आज उसको पकड़ा, जिसको पकड़ा, NIA इधर क्यों नहीं आया? It's easy for us to talk. It is an integrated thing. See, this is going on as it is flash. NIA is interrogating Parambir Singh. So many things would come. Let us have patience. Anyway, I came to salute Dhruv sir and Deepthi madam for their unstinted effort. Yeah, I'll take the Sridevi. We still have to follow up on that. So we'll do a special on Sridevi. Separate session. Sure, certainly, Varun ji. Anyway, Jai Hind, sir. Thank you. Jai Hind, sir. Thank you. All right, Bhaskar. Bhaskar, sir, how are you? Good afternoon, sir ji. Good afternoon, मैं ठीक sir. हूँ. हाँ जी. ध्रुव भाई, good afternoon, and सबको good afternoon. हेलो, ध्रुव भाई है? हाँ, ध्रुव है. ध्रुव है, सचिन है, नीरज है. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी बोलिए. मैं हूँ मैम. Okay, looks like थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है ध्रुव का, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही. So Dhruv, we still can't hear you properly, but we could hear you saying मैं हूँ. So Bhaskar bhai, I mean, you've been very close to certain, how would I put it? मतलब आप काफी मुंबई की काफी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा अभी आज का टॉपिक है, वो हम ज्यादा फोकस आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली, how that angle is connected to Sushant Singh Rajput murder. उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, to join those or connect the pieces of the puzzle. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे with all the kind of investigation and your prior knowledge? ठीक है. सबसे पहले मैंने एक बात कहना चाहता हूँ. देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप में एक टेक्स्ट किया था. फिलहाल किसी के बारे में मैंने उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा बात सुन रहा है ना? सुन सकते हो ना? हाँ जी. यस. हेलो. हाँ सर. मैंने आपको व्हाट्सएप में टेक्स्ट किया था. मुझे किसी को लेके बहुत टेंशन है. आपको मैंने बता दिया है व्हाट्सएप में. जो मेरा एक नाम देखिए लिख दिया है, उसको लेके थोड़ा टेंशन में है. तो जब तक
उस जगह से उसने मतलब सही पोजीशन में सेफ जोन में नहीं आ जाएंगे तब तक मैंने किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर भी आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग ठीक से एक चीज देखिए, ये जो सूरज पंचोली का जो डैडी है आदित्य पंचोली, उसके साथ सलमान खान का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। इतना अच्छा रिलेशन है आप लोगों को मैंने बता नहीं सकता हूँ, मतलब कितना अच्छा है। और सबसे बड़ा बात जो है, सुशांत भाई के साथ सूरज पंचोली का एक हादसा हुआ था लोनावाला फार्म हाउस में। और लोनावाला फार्म हाउस किसका था वो भी हम सबको मालूम है। 2015 में हीरो मूवी का जो लॉन्च हो रहा था, पार्टी लॉन्च हो रहा था, उस टाइम ऐसा हुआ था। देखिए अजब बात है, तो हीरो मूवी 2015 में सूरज पंचोली को मिल गया स्टारडस्ट अवार्ड, 2016 में मिल गया था फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, मिल गया। ये सूरज पंचोली दोनों मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है, जिसके अंदर एक था, मतलब एक मूवी था, एक था टाइगर, जिसको डायरेक्टर है कबीर खान। तो हम लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिए, जो सलमान खान के साथ, मतलब सलमान खान मतलब कौन सा कंपनी है, कौन से लेके सब कुछ, उसके साथ इसका क्या कौन, उसके बाद बिग ह्यूमन, इसके साथ कितना अच्छा रिलेशन है। मतलब हर एक जगह में एक क्राइम नाम का चीज आ जाता है, जिसको हम लोग अभी मतलब जिसके ऊपर हम लोग को फोकस है। और सबसे बड़ा बात है, उसी लॉन्च पार्टी में सलमान खान ने सुशांत भाई को बहुत मतलब उल्टा सीधा कुछ बोले थे। बाद में दोनों एक साथ मिल गए, और सूरज पंचोली भी बोले थे सुशांत को मैंने मेरा भाई के जैसा देखता हूँ। लेकिन वो बात नहीं है, बात यह है शुरुआत। बाद में मैंने किसी को मार दिया है, कुछ कर दिया, उसका सॉरी बोलना वो बात नहीं है। शुरुआत का जो बात है, मैंने आपको पहले से ही मेरा भाई मानता हूँ, तो आपके साथ कभी मैंने झगड़ा फसाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके ऊपर मेरा कुछ टारगेट रहेगा, या आपको मैंने दूसरे नजर से देख रहा हूँ, मतलब आपके ऊपर मेरा जेलसी है, तो सबसे पहले मैंने तो झगड़ा करूंगा, बाद में तो दोस्ती कर ही सकता है। और मेरा एक चीज कहना है, सुशांत भाई बॉलीवुड का एक हिस्सा है, अच्छा काम भी किया है मूवी में, अच्छा मतलब एज ए हीरो बहुत अच्छा रोल निभाया है। उसका हर एक मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने पहला इसका मतलब सुशांत भाई का मूवी इतना देखा नहीं था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड, आज बोलना चाहिए सबके सामने, 14 तारीख मेरा एक फ्रेंड, उसका नाम है दीपा रॉय, मतलब मेरा फ्रेंड ही है सिर्फ, उसने सुबह मुझे मतलब उसने मुझे बोला है, मतलब रोते रोते, ये सुशांत नहीं है, मतलब वो सुशांत का कितना बड़ा फैन है। जब उसको रोने के लिए देखा है, तब से मैंने उसी दिन से इसके ऊपर फोकस करना चालू कर दिया। और कल मैंने आपको कुछ चीज बताया था, आज भी एक चीज मैंने ध्रुव भाई को बताने वाले थे, तो मतलब मैंने अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये जो आज का जो टॉपिक है उससे हट जाएगा। सबका बात होने के बाद मैंने बताऊंगा, और वो जो बात मैं बताऊंगा ना, वो आप लोग सुनने के बाद थोड़ा बहुत तो शॉक में आ जाएगा। जैसा रिगोर मोटिस वाला बोले थे, भास्कर, one second. सर मैं वरुण जी, एक बात बोलना चाहता हूँ। सचिन जी और वरुण जी, 1 सेकंड प्लीज। भास्कर भाई, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। हम सब यहाँ सुशांत के लिए है, तो आप वो सुशांत का टॉपिक निकाल ही दो। राइट वरुण जी? बोल दो। मैं हाँ एक सेकंड भास्कर भाई, yes सचिन you wanted to make a point, please make it. I want to tell one thing to everyone. YouTube में जाके देखिए आदित्य पंचोली assaulting his neighbor. There is a video which was caught on CCTV camera. वो भी yes, वो है मेरे पास, है वो वीडियो है। Yes, that video is available on YouTube, जहाँ पे उसका नेबर कंप्लेन करता है कि आदित्य पंचोली के घर से कुछ ऑडियो का साउंड कुछ ज्यादा आ रहा था। वो कंप्लेन करता है, तो आदित्य पंचोली नीचे या सामने से या नीचे से आके he assaults the neighbor ruthlessly. Correct. That video is available on YouTube. Yes. I mean, it's so a you known can fact. understand what kind of a person that person is. Right. Again, I'll summarize it, and I'll try to wrap this up, and then let's go to the new topic जो भास्कर भाई wants to bring. Sachin, you brought up this as a very relevant thing. हमने शुरुआत में जब ये सेशन शुरू किया था, तब भी ये बात हुई थी बीच में, where I mentioned both the father and the son, they have anger issues. They have
इसको आप कुछ भी कह सकें, कह लें कि इनकी नोन फैक्ट्स, एंड अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम मेकिंग और एनीबडी इज मेकिंग इट, दिस इज ऑल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अगर आप डॉक्यूमेंट्री में देखें, जो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, वहां पर भी सिर्फ गुस्से का नहीं, एक वो एटीट्यूड का भी, कि इफ हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज अ प्रॉब्लम, इस तरह का एक स्टेटमेंट भी उन्होंने मारी थी उस डॉक्यूमेंट्री में, कि इफ दैट्स अ प्रॉब्लम देन यस आई हैव, देन बी विद इट, क्योंकि मेरी तो गर्लफ्रेंड थी। बट मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से अगर हम वही बात देखें, यू आर ओपन, लाइक अपने बेटे के लिए अगर आप बात करो ना कि हाँ इफ ही इज हैविंग गर्लफ्रेंड्स, यस ही इज ओके टू हैव मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, जो मर्जी करे यार, ही इज अ यंग चैप। यू हैविंग टू किड्स, married for 20 plus years, now if you're saying that I want to have girlfriends, then ये तो हमारा कल्चर, ये तो हमारी upbringing नहीं रही थी, and this was a shameful statement to make on a documentary as well. So we all know what kind of a person and personality this person has. So वो तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका था, and ये जो आपने सीसीटीवी के ऐसे और भी बहुत इंसिडेंट्स है, if you just search Aditya Pancholi, and you'll find so many activities abusive, प्रेस के साथ, लोगों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, बहुत सारी चीजें इनकी निकल के आएंगी. सो यस, दिस इज डेफिनेटली, सो अगेन आई एम गोना जस्ट क्लोज दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई लेट भास्कर भाई discuss what he has brought up. But at this point of time, I just want to say that we will continue to talk about these individual pieces of the puzzle, individual players who are involved in this case, as part of the Back to Basics series. And we will also talk about other activities as well. So agar aap bhi, if there is something on top of your mind, please let us know. We will definitely talk about it. So now, having said that, please go ahead, Bhaskar bhai, what do you want to say? थैंक यू। सबसे पहले एक बात मैंने कहना चाहता हूँ, आज का टॉपिक में दो था, एक सूरज पंचोली और दूसरा कंगना मैडम। कंगना मैडम को हेड्स ऑफ, क्योंकि रिपब्लिक टीवी में मैंने सुशांत भाई का ये इंसिडेंट के साथ जो हुआ था उसके साथ मैंने जब से जोड़ गया था, कंगना मैडम को कुछ चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में कुछ आवाज उठाई थी और उसने कुछ बात बोली थी जो उसके साथ एक्चुअली हुआ था, और ये मुझे 100% मालूम है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था जे बॉलीवुड के साथ मैंने बहुत अच्छा से जुड़ गया था। एक टाइम में ऐसा हुआ था बॉलीवुड के साथ, और वो भी मैंने आपको प्रूफ भी दे दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुशांत भाई का मैटर है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। कंगना मैडम ने जो कुछ भी बोले थे आज तक सब सही है, मतलब आदित्य पंचोली के बारे में। अभी आ रहा हूँ मेन बात में। वरुण भाई, अगर मैंने अभी आपको एक बात बोलूं, जो मेरा डैडी गुजर गया है, आपका सबसे पहला सवाल क्या हुआ? पहले तो I would feel sorry for you, right? And I will like console you, and then I will ask you how and what happened. Was it age related or सबसे पहला हम लोग पूछेंगे कब। Yeah. कब मतलब टाइम। Yeah. उसके बाद हाउ, कैसे। उसके बाद वेयर, किधर, घर में हुआ या हॉस्पिटल में हुआ, राइट। मतलब सबसे पहले कोई भी चीज में आ रहा है टाइम। अभी सोचिए, एक चीज में टाइम मेंशन नहीं हुआ है। चलिए, टाइम मेंशन नहीं किया है, किसी ने मराठी में लिखा हुआ चीज समझ में नहीं आता है, साइन करके ले लिया है। लेकिन मुझे जितना मालूम है ध्रुव भाई, अगर आप लाइन पे हो, मतलब हम लोग के साथ हो, तो आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। शमशान घाट में अगर किसी को बॉडी को लेके जाता है जलाने के लिए, या उसको मतलब लास्ट क्रियाक्रम करने के लिए, उसको हॉस्पिटल से डॉक्टर जो सर्टिफिकेट देता है ना, डेथ सर्टिफिकेट, वो शमशान घाट में सबमिट करना पड़ता है। तो मेरा कहना है शमशान घाट में जब वो सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो शमशान घाट में जो लोग थे वो लोग तो मराठी रहता है, क्योंकि भिलेपाड़ा शमशान घाट जो है ना, उसके बाजू में रहता है 5 नंबर नेहरू नगर, मतलब उस जगह में मैंने रह चुका हूँ। वो मोहल्ला मुझे अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाजू उसी में जगह से 700 का सर उसी जगह से 700 मीटर दूर योगेश देशमुख का घर है। 100%। अरे बॉस, उसके पीछे ही वो जो 5 नंबर नेहरू नगर जो है ना, उसके पीछे है पवन हंस एयरपोर्ट। पवन हंस एयरपोर्ट उसके बाजू में ही है, मतलब हेलीपैड जो है, नॉट एयरपोर्ट है। One second, sir. One second. You know who is Yogesh Deshmukh, Varun bhai?
Anil Deshmukh's. Varun bhai? Can you hear Yogesh me? Deshmukh is a Shiv Sena. Yogesh Deshmukh is a Shiv Sena MLA who got arrested today for ED for money laundering case. Wow. Okay. हाँ, मैं कंटिन्यू कर सकूं? Yes, yes, please. हाँ, तो वो विलेपार्ले शमशान घाट में मतलब उसके अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों को वो पेपर दिया जाता है। तो उन लोग जब वो पेपर देखा था उन लोग को एक बार भी डाउट नहीं हुआ था जी इसके अंदर डेट ऑफ टाइम मेंशन किया नहीं, तो उस उधर कौन सा पेपर सबमिट किया गया है जिसके बजाय जो बॉडी जिसका बॉडी मुझे ऐसा नहीं है वो बॉडी को उन लोग जलाने के लिए परमिशन दिया था और उधर से डेथ होने के बाद जब जलाया जाता है 2 दिन के बाद उसी जगह से एक पेपर ले आना पड़ता है जो फिर हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। उधर से डॉक्टर फिर लिख के देते हैं, वो लेके कॉर्पोरेशन में जमा देना पड़ता है, तब पूरा फाइनल डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। क्या ध्रुव भाई मैंने झूठ बोल रहा हूं एक भी बात में? सर जी मैं तो आपका फैन हो गया यार, आपको कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ वो तो बताइए प्लीज। मेरा फोन नंबर है वरुण भाई के पास है, आप ले सकते हैं, मेरा कुछ प्रॉब्लम। तो मेरा जो कहना है एक जगह पे मैंने गलत कर लिया है और एक बात है, अब मेरे घर में मैंने थोड़े पहले ही बोला था जब मेरा डैडी गुजर गया, एक्चुअली मेरा डैडी 2001 में गुजर गया, इसीलिए मैंने मेरा डैडी को नाम लिया है। इसीलिए लिया है क्योंकि सबसे पहला जो सवाल क्या होता है, सवाल टाइम, कब। अगर घर में सुशांत भाई के साथ ऐसा कुछ हो गया था, पुलिस आए थे, ठीक है, हैंगिंग केस ठीक है, लेकिन साथों साथ कोई डॉक्टर को आना चाहिए था। क्या डॉक्टर आए थे? अगर डॉक्टर आया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने उधर बोला था क्या जे डेथ हो गए? नहीं, ये बोला था पुलिस वाला क्या डॉक्टर है? सिर्फ इतना बोलिए, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करना चाहिए, पुलिस वाला का काम पुलिस वाला को करना चाहिए। लेकिन उधर घर के अंदर किसी ने तो बोला था इमीडिएट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। क्या वो जिंदा था? अगर सोच लीजिए वो जिंदा था, ऐसा कुछ बात है, तो जो एम्बुलेंस को वो जो अक्षय लीलावती की तरफ भेज रहा था, तो उसी एम्बुलेंस में तो मेरा एक ही बॉडी है, दूसरा कोई तो बॉडी है ही नहीं। तो वो एम्बुलेंस छोड़ने के पहले अक्षय दरवाजा खोल के अंदर क्या झांक के देखा था? जो उस एम्बुलेंस में जो बॉडी है वो बेंट हुआ है या सीधा हुआ है, कौन सा वाला? और दरवाजा खोल के एक बार अंदर झांक के देखा, उसके बाद किसी को मुंडी हिला के इशारा किया, उसके बाद एम्बुलेंस को छोड़ दिया। भूल जाइए सब कुछ भूल जाइए। मेरा सिर्फ 3 सवाल, मैंने कल 2 किया था, आज 1। हॉस्पिटल में सोच लीजिए डेट ऑफ टाइमिंग दिया नहीं गया है। शमशान घाट में ये लोग क्या कर रहा था? क्यों नहीं घर वाले को पूछा था? क्यों नहीं दूसरे किसी को पूछा था जी ये जो डेथ सर्टिफिकेट आप लोग दे रहा है, मतलब डॉक्टर का जो रिपोर्ट दे रहा है, इसमें टाइमिंग किधर है? और बोलिए। या तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर समझने और लोगों के लिए भी समझने के लिए, तो व्हाट आर वी इन्फरिंग, हम क्या इससे क्या तथ्य निकाल रहे हैं? देखिए मैं तो सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जवाब मैं देता हूँ। हम इससे ये तथ्य निकाल रहे हैं कि मर्डर होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले अनिल देशमुख जी ने कैसे बता दिया कि सुशांत का मौत सुसाइड है। राइट, ये बात आपने सही पकड़ा है, और उसका रिजल्ट आप देखो, इसका रिजल्ट आप देखो, और कुछ निकलेगा, और कुछ निकलेगा। मैं छोटा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक छोटा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। और वही अनिल देशमुख जी ने असेंबली में बोला कि सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हो गई। कब बोला था, पहला या बाद में? It is told it. And Sachin जी, एक मिनट, असेंबली में जब असेंबली में जब अनिल देशमुख जी बोल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत केस में, so he said clearly in Marathi
सुशांत सिंह राजपूत का हत्या के केस में, इवन सतीश माने शिंदे इन अ लाइव सेशन सेड सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के केस में. So indirectly these people are accepted that it is a murder. हमको क्या प्रूव करना है? और I let others speak now. सर जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. ध्रुव भाई आप भी सुनिए. ये बात कब बोला था मराठी में मुझे मालूम है, वो वीडियो भी मेरे पास है. दिसंबर महीना में बोला था और बाय मिस्टेक मुख से निकल गया है. बाय मिस्टेक मतलब वो बोलना नहीं चाह रहा था, मतलब उसको पहले से मालूम था ये मर्डर है. तो अगर पहले से उसको मालूम है ये मर्डर है, क्योंकि पूरा दुनिया को मालूम है, तो पहला क्यों बोला था ये सुसाइड है? मुझे सिर्फ इतना बोलिए, अगर सुसाइड है तो सुसाइड है. वो सुसाइड क्यों, मतलब बाय मिस्टेक उसको मुंह से निकल गया मराठी में. मुझे मराठी समझ में आता है, मैं मुंबई में था, वो वीडियो मैंने पूरा डाउनलोड करके रख दिया है. तो पहले से बोलना चाहिए था. क्या सर डॉक्टर है? नहीं. कोई डॉक्टर ने बोला था? नहीं. अगर डॉक्टर ने ऐसा, मेरा घर से अगर कोई पेशेंट व कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ किधर भी होगा, तो डेट तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना. सबसे बड़ा बात है डेथ. मैंने जो मेरा डैडी को लेके एक एग्जांपल दिया था, उसमें सर सबसे मैं पहला एक आएगा. छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ. इट इज नॉट स्लिप ऑफ द टंग, बिकॉज अनिल देशमुख एंड सतीश माने शिंदे बोथ कैन नॉट हैव स्लिप ऑफ टंग. इट इज गलती से उन्होंने रियलिटी बोल दिया, गलती से दे टोल्ड द ट्रूथ दैट ही वाज मर्डर्ड. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलती से मुंह से निकल गया है. क्योंकि आपने ठीक से देखिए, जब अनिल देशमुख ऐसा बात बोल दिया है, ठीक उसके पहले उसका मतलब सिचुएशन कैसा था. उसने किसी के साथ बहस कर रहा था, मतलब जैसा होता है ना पार्लियामेंट के अंदर, जैसा होता है जिस जगह में होता है ना, तो मतलब किसी को कन्वर्सेशन, ऐसा कन्वर्सेशन करते करते निकल गया है. ठंडे दिमाग से नहीं बोला था. मैं आपके साथ अभी ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूँ, इसलिए कुछ भी बोलूंगा तो सोच समझ के बोलूंगा. लेकिन अगर हम लोग के अंदर बहस होता है और दिल के अंदर कुछ बात छुपा रहता है, तो फटक से मुख से निकल सकता है. वो सच्चाई होता है मैक्सिमम. तो ऐसा ही हो गया ना. हाँ जी. Bhaskar ji, आपका sorry I missed the other bit. I just went for a quick break. Are you sort of insinuating कि like SSR is alive? वो helipad की बात हुई और then the dead body और वो, are you suggesting कि अगर अभी alive है, he was alive in the ambulance and फिर murder हुआ क्या? मैं एक और छोटा सा पॉइंट लेना चाहता हूँ. I think it is very important point I want to bring. Sachin Waze was reinstated on 6th of June 2019. Disha Salian was raped and murdered on June 8th, and Sushant Singh Rajput was murdered on June 13th. So connect the dots. Chronology समझिए, आपको सब मालूम हो जाएगा. हाँ, यानी like मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जिंदा है या यानी he was alive and now is dead or he is still alive? मेरा ये सिंपल क्वेश्चन है. अभी भाई आप कुछ बोलेंगे ना मैं बोलूंगा? भास्कर जी आप बोलिए, बाद में मैं आता हूँ. अच्छा, मैंने आपको सबको एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदा है या नहीं है इसके लिए सीबीआई है. हाँ, मैं काल नहीं परसों से सबको एक बात बोल रहा हूँ, ये वरुण भाई के चैनल में आके बोल रहा हूँ. उसके पहले जो एक दिन पहले आप नहीं था ना वरुण जी, तो उसी टाइम मैंने बोला था जब हम लोग छोटा छोटा पॉइंट को छोड़ के जा रहा है, छोटा छोटा पॉइंट को छोड़ के जा रहा है. और उसी दिन मैंने बोला था जब हम लोगों को सबको शुरुआत से एक बार चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए. रिव्यू एक बात, सुशांत भाई के घर में एक कॉफिन था, कॉफिन किधर गया? आज तक ऐसा कोई देखा क्या, या अपना घर में, खुद का घर में पहले से कोई कॉफिन लगा रखता है? नहीं, वो कॉफिन का तो आई थिंक मैं आपको रिप्लाई देना भूल गया, बट कॉफिन उन्होंने रखा हुआ था अपने सारे ट्रॉफीज और अवार्ड्स को रखने के लिए. और उन्होंने एक इंटरव्यू में सुशांत ने ये बोला भी था कि वो क्यों करते हैं ये, क्योंकि बहुत ही ऑड था ये बिहेवियर. तो उन्होंने कहा था कि लोग अपने घरों में बनाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, और मैं इस
अवार्ड्स को और इन अकलर्ट्स जो भी मुझे मिले हैं, उनको मैं ज्यादा वो अपने सिर पे नहीं चढ़ने देना चाहता, इसलिए मैं उनको जमीन में एक तरह से, क्योंकि कॉफिन को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि दफना दिया टाइप, कि लिया मूव ऑन, तो उसलिए उन्होंने कॉफिन रखा। मालूम है, जिसने बोला था वो वीडियो भी मेरे पास है, उसने सेंचुरिया पिक्चर में सुशांत भाई के साथ थे एवं उसको ही सुशांत भाई घर में बुला के ऐसा बोले थे, वो वीडियो मेरे पास है। राइट। लेकिन वरुण जी एक बात बोलिए, क्या यही मेन कारण है? अगर मुझे टॉपिक पसंद नहीं होता है, मतलब कोई भी मेरा अवार्ड मुझे पसंद नहीं होता है, मैं मेरे घर में रखूंगा ही नहीं। हाँ। किसी को बोलूंगा भाई तू लेके जा, भाई तू लेके जा, ये चीज मेरे घर में मत रख, ये सब चीज मुझे बिल्कुल जमता नहीं है। ओके। लेकिन मैंने घर के अंदर ला के आपने बोला भास्कर भाई सीबीआई करेगी, वो तो करेगी करेगी, पर व्हेन यू हैव रेज्ड दिस पॉइंट एंड यू आर क्लेमिंग दैट यू नो दैट सर्टेन स्टफ, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, लाइक व्हाट इज योर बिलीफ कि ये भाई अभी जिंदा है? देखिए मेरा, हाँ जी, नहीं है, नहीं, मेरा जो कहना है, मैंने कुछ चीज, सबसे पहला दो तीन सवाल मेरा है जो पहले से ही मुझे खुरद के खा रहा है। एक तो रिगोर मोर्टिस वाला केस, दूसरा शमशान में जो हुआ है, किसको जलाया है नहीं जलाया है, मैं उसके ऊपर जाऊंगा नहीं। किसने मेकअप किया है नहीं किया है, उसके ऊपर जाऊंगा नहीं। जो लीगल बात होता है ना, लीगल, आपने बोला ना, हम लोगों के घर में कोई ना कोई तो गुजर जाता है, हम लोग तो शमशान घाट में लेके जाते हैं। ऐसा कभी देखा है क्या? शमशान घाट में जब लेके जाता है, जो पॉइंट मैंने आप उठाया, ऐसा पॉइंट में कभी गलती रहता है तो मेरा बॉडी को जलाने के लिए देता है? नहीं होता, नहीं होता है। भास्कर भाई आप 1 मिनट म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ जी। और ये वीडियो जो है वो मेरे हिसाब से, तो मैंने वो वरुण को भी भेजा था कि जो भी वीडियो अभी जो यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल है मेरे हिसाब, और फिर मैंने दूसरा भी मैंने अपने अकाउंट से ट्वीट भी किया हुआ है कि यू नो कुछ दिन पहले, लाइक कुछ महीनों पहले एक प्रोड्यूसर आया था, सुसाइड या क्या क्या था, मर्डर, ऐसे कुछ फालतू मूवी बनाने वाला था, जिसमें बिहार से ही दिस गाय हु वाज क्वाइट सिमिलर इन लुकिंग, आइडेंटिकल है ना, सचिन तिवारी। हाँ ऐसे ही, तो उसके नाक जो थे वो ऐसे तोते जैसी थी, जैसे मेरी है, ठीक है, अगर किसी ने देखा है तो मेरी वैसी है, लाइक यू नो। तो जो डेड बॉडी जो दिखा रहे थे कि उसका लाइक यू नो उसका मुंह भी थोड़ा बहुत वैसे सिकुड़ गया था, वैसा था, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, यू नो दैट इज ऑल अगेन अबाउट ऑफ ग्लूकोज जो भी है वो, बट ही लुक लिटिल बिट डिफरेंट, ही लुक सिमिलर टू सुशांत बट ही लुक डिफरेंट, ही वाजंट सुशांत इन माय पर्सनल ओपिनियन। फिर मैंने वो नाक है उसकी जो इंटरव्यू था, जो भी प्रोड्यूसर था जो जो ने अनशन पे बैठा हुए थे, और काफी सारे यूट्यूब के चैनल जो भी जहाँ पे चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां गए थे, फिर वो थोड़ा बहुत फालतू किया था कि हाँ हाँ मैं ये कर रहा हूँ, उनको रिपब्लिक में भी बुलाया गया था, उसको भी वहां बैश किया था कि यू कैन नॉट मेक अ मूवी विदाउट यू नो फैमिलीज परमिशन, तो वो कचरे में गया। पर जो एक्टर जो था, हिज फेस लुक्ड क्वाइट आइडेंटिकल टू द फोटो, और जो वीडियो में है उसमें किसी का पूरा फेस नहीं दिखाया, जैसे कि मीतू दी हो या एटलीस्ट उसके डैडी हो, या यू नो एटलीस्ट कोई तो हो, यू नो श्रद्धा कपूर भी गई थी वहां पे, यू नो दे वर अलाउड टू लेट इन, कोई नहीं है, सिर्फ वो जो वेस्ट साइड जो है उससे नीचे का ही वो रिकॉर्ड किया है, और वो पंडित का थोड़ा साइड फेस है, एंड देन उसका फुल, अगर अनलेस के किसी के पास फुल वीडियो है, मेरे पास जो है वो 146 मिनट्स का जो भी यूट्यूब पे है वही है, 1 minute and 46 seconds, अगर किसी के पास है तो दैट इज माय ऑब्जर्वेशन कि वो बंदा ही वाज अ स्टेज्ड वन, इट वाज अ जो कहते हैं ना कि एक्ट किया हुआ था कि किसी को गुमराह करने के लिए, सो दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन अगेन। So, Varun bhai, let me get into the picture over here. First and foremost thing, if anyone feels Sushant is alive, let me make one point very clear over here, is Sushant is not alive. If Sushant was alive, Sushant is not a person who will sit quiet behind for such a long time. What point Bhaskar ji wanted to make was the timing of the death, which means he wanted to point out that there is some definite foul play involved. Don't misunderstand people who cannot express themselves. Understand the meaning of the sentence, please. If we float this theory that SSR is alive, what is the justice movement for? SSR is not alive. You can ask Bhaskar ji now, he will support my words. He just wanted to point out that there is foul play here.
The time of death was not mentioned because if the time of death was mentioned on the death certificate, it's an open and shut case of murder, not suicide. Yes, absolutely, and I agree with you, Right. Dhruv. The only Right. question I Yeah. No, uh, no. So let me before I take Bhaskar, I would love Bhaskar bhai to say it loud and clear. But on this platform and right now as being the host, let me just make it very clear, guys. मैं chat में भी देख रहा हूँ. Let's not start another rumor mill right now. Sushant is not alive. Let's not even talk about that कि यहाँ पर कोई rumors चल रहा है या एक और narrative आया है. Let's not do that, please. I'm just clarifying it real right now. Bhaskar bhai, please explain thoda sa, as to what the point was so that people understand. Otherwise, this thing will again blow out of proportion. Sushant is again alive, which is something which we really don't want to do. सबसे पहला मैंने एक बात कहना चाहता हूं सबको, आई एम नॉट विभोर आनंद, आई एम नॉट विभोर आनंद। मैंने अगर किसी को कभी बोलूंगा ये कोई जिंदा है तो उसका प्रूफ मेरे पास रहेगा, तब मैंने आके बोलूंगा। Correct. मैंने एक बार भी नहीं बोला है जे सुशांत सिंह राजपूत मतलब हम लोगों का सुशांत भाई जिंदा है। मैंने सिर्फ ये बात बोल रहा हूं जे ये जो टाइम मेंशन नहीं किया है, अगर किसी ने, मेरा डाउट ये है अगर अगले दिन ऐसा ना हो जाए जिसको सुसाइड केस में ही दबा दिया जाए, क्योंकि इन लोगों का प्लानिंग वैसा ही है, सुशांत सिंह राजपूत का केस को सुसाइड केस में दबा देना। और मेरा जो कहना है, जो पॉइंट मैंने दे रहा हूं, ये कभी सुसाइड हो ही नहीं सकता है, इसीलिए मैंने ये चीज बोल दिया है। मैं कभी ये नहीं बोला हूं जो सुशांत सिंह राजपूत मतलब सुशांत भाई जिंदा है। अगर सुसाइड होता था ना तो सबसे पहले वो पहले ही डेट दिया जाता था, टाइमिंग दिया जाता था, सब कुछ दिया जाता था। कुछ तो गड़बड़ है, जिसको दबा देने के लिए कोशिश चल रहा है, कोशिश। सीबीआई के पास सब प्रूफ है। time of death जो था ना, time of death, it was also raised in Republic और mainstream media में। तो काफी सारे जो डॉक्टर्स, जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स, मैंने तो खुद गया नहीं था कि टू वैलिडेट द लाइसेंसेस एंड सो ऑन, जो भी वो अपना अर्नब बोलता था कि ये जाने माने यूएस के डॉक्टर्स है, ये अपने यहाँ पे मुंबई के फलाने ढिकने डॉक्टर्स है, वो है। तो वो क्या कहते थे वहां पे वो टाइम पे, इफ एनीवन हैज अ रिकॉर्डिंग दे कुड मे बी प्ले एट देयर लेजर टाइम और ट्वीट कर दो, आई विल लाइक दैट, कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पोस्टमार्टम जो हरी में होता है ना, it is quite a normal practice and a normal behavior, even though it is not क्या कहते हैं उसे, a process. It is quite a normal behavior to forget to stamp the time of death, which is BS to me. Like post-mortem को वही होता है, like first. Vishnu sir, let me cut you here in between. I'm sorry. Post-mortem report में अगर डेथ का टाइम अगर मेंशन नहीं किया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। दैट इज द पॉइंट भास्कर जी वांटेड टू मेक। एंड इफ देयर इज पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मतलब उसमें डेट का टाइम मेंशन, You did not hear me out. मैं वही कह रहा हूँ, I'm supporting you. You hear me out. What I'm saying is Republic और उसके अंदर जितने भी वो स्टिंग, वो जो भी थे रिपोर्टर्स, जो भी डॉक्टर्स को बुला के आए थे, they were justifying their practice, their their fraternity, to say जल्दी जल्दी में अगर कुछ होता है, पोस्टमार्टम हम करते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, and it is quite a normal behavior to miss to stamp the time of death. And again I'm saying it is a bullshit. You have to challenge to tell you one straightforward point about postmortem. If you feel it is bullshit, then this point should not be coming out of your mouth, sir. There are people listening to you. There are people who respect you. There are people who adore you. Don't spoil your respect and adore because you want to float some theory. When the body comes in for postmortem, the first and foremost thing the postmortem person should do is put the date stamp there. What time the death happened. If they don't know what time the death happened, what procedure will they follow? करेक्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ, पर ये लोग रिपब्लिक में ऐसा बोल रहे थे, तो आई एम चैलेंजिंग दैट एज वेल कि वो इट इज अ नॉर्मल, और वो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सो आई एम, यू डोंट हैव अ गो एट मी, ओके ध्रुव?
So Sir, that is I'm what I'm not trying to having a एक go explain. मिनट at सर you, सर sir. सर सर I'm सर not सर having a go at you. Okay. I'm not I having You think a just say that you go to at you. respect me. Bhaskar ji, let me You should finish. not come out Bhaskar of. ji, let me What do you mean finish. by that? What do you mean by that? That this I'm should not not come having out a of go my mouth. at you, sir. See, I'm Okay. You not better having a listen go to at what I'm you. saying. I am just trying to make one point clear over here is that the time, date, and stamp, if it is not there, that itself is an indication that there was foul play. And if anyone comes and Correct. defends the wrong, a wrong is always a wrong. No one can defend it. You can prolong That it, is what I'm you exactly cannot defend it. saying. That is what I'm saying. That on Okay. Republic TV, they were saying that it is a kind of a normal practice, and I'm challenging that. Yeah. You get my point? सर जी एक बात मैंने बोलूं सर जी मैंने एक बात बोलूं अगर परमिशन देंगे तो Go ahead, Bhaskar. आपने जो बोल रहा है मेरा समझ में आ गया है ये बात सही है रिपब्लिक टीवी में ऐसा बोला गया था मतलब किसी ने ऐसा बोले थे लेकिन I'm हम glad you लोगों को understand सोचना that. चाहिए Thank you. डॉक्टर को सोचना चाहिए डॉक्टर्स और डॉक्टर है मैं ही नहीं मर गया सुशांत सिंह राजपूत मर गए थे अगर मैं मर जाता था तो ऐसा कुछ भी हो सकता था शायद मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं निकल सकता था अगर मैं मर गया मैं एक आम जनता हूं सोच लीजिए Ideally, it should not happen लेकिन to वो armed सुशांत जनता सिंह either, man. राजपूत We are all human beings, right? Like we have life. नहीं 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 मैंने बाई मिस्टेक वो जो बाई मिस्टेक का बात कर रहे हैं ना जो आपने बोल रहा था मैंने उसके ऊपर मैं दूसरा नहीं बोल रहा हूँ ये मैं होता था लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत है पूरा मुंबई पूरा वर्ल्ड पूरा इंडिया थम गया था और Exactly. इतना सारे पुलिस थे उधर पूरा इंडिया थम गए शॉक्ड नॉट ओनली इंडिया आउट ऑफ इंडिया में जितना फैंस है सब हम लोग थम गए क्या हो गया इसके साथ इतना अच्छा टैलेंट के साथ क्या हो गया अचानक ऐसा कैसे हो गया तो क्या डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं था जो पोस्टमार्टम टेबल में सोया है वो कौन है इसका हर एक चीज हम लोगों को चुन चुन के करना पड़ेगा एक भी ऊपर नीचे हो वो जो भी जाएगा डॉक्टर्स थे वो सारे छुट्टी पे गए Sir, they all can I went come after in? to holidays after the postmortem. They did it at the night time. So these are all the factors, you know, all these incidents. It is so apparent to all of us. तो मैंने कल भी ऐसे बोला था कि you know it is so apparent to all of us like human like we Sir, are can I common come? people Sir, here. We're discussing this, right? We're common people discussing this. इतने सारे सब कुछ है. Hold on, Sachin. I will let you. Then why can't you know CBI को सब कुछ पता है? I can you know hand on my heart मेरा अंदर की gut feeling है कि सबको you know they are way smarter. They got way more tools and techniques than what we have. But ये तो हम apparent जो public domain में है उस पे ही हम बात कर रहे हैं. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिसमें डेट टाइम ऑफ डेथ नहीं है. Doctors they have gone on leave after that straight away. कोई मिल नहीं रहा है कहाँ पे छुट्टी पे है क्यों छुट्टी पे गए undisclosed 5 doctors and why did they do the postmortem at the night time वो भी वो वकील कह रहा है उनका कि वो क्यों किया यानी इतनी क्या आ रही थी वो अपना कोविड का टेस्ट नहीं वो नहीं किया वो सिर्फ ऐसे कर दिया कि डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन एंड दैट्स इट मेरे हिसाब से वो डॉक्टर जिसने भी लिखा है ना स्ट्रैंगुलेशन इट वाज कॉन्शियस उसका भी जागा था कि बोला कि ये मर्डर है साला तो मेरे को एटलीस्ट इतना लिख देने दो कि डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन स्ट्रैंगुलेशन नहीं था सेल्फ नहीं था Okay. देखिए मेरा जो कहना है एक मिनट one second, Bhaskar bhai. Let me just chime in now. Okay. First of all, you know, I think ये topic अब थोड़ा सा way off उधर हो रहा है और लोग confused भी हो रहे हैं कुछ statement से. So सर मैं एक ही पॉइंट बोलना चाहता हूँ ये मैं बीच में निकल गया था लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अलाइव बोल के एक थियरी मैं अभी जस्ट सुना सर जिस विभोर आनंद ने ये थियरी को फ्लोट किया वो अभी भीख मांग रहा है लोगों से इन मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत सो प्लीज काइंडली अंडरस्टैंड करेक्ट और इसीलिए मैं रिपीट करना चाहता हूँ अगेन इस तरह की थ्योरीज इस तरह की बातें जो भी जितने भी चैट में और हर जगह जो हो रहा है गाइस यहाँ पर वी आर वेरी क्लियर राइट नाउ द अंडरलाइंग स्टेटमेंट लाउड एंड क्लियर लास्ट टाइम मैं यहाँ बोल रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट अलाइव वी आर एंड नोबडी हियर इज फ्लोटिंग दैट थ्योरी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि द वे सम क्वेश्चंस हैव बीन पोर्ट्रेड वो थोड़ा गलत तरीके से पोर्ट्रे हुए वो क्वेश्चंस वैसे नहीं होने चाहिए थे so there is nobody who's floating the idea that Sushant Singh Rajput is alive. What Bhaskar Brahma, who is on the screen right now, is saying was there is you know he's just adding to some of the points which we already know
जो हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि ये एक सुसाइड नहीं है, उसके अंदर अगेन सप्लीमेंट कर रहे हैं उसको फैक्चुअल वे में कि वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का टाइम उस रिपोर्ट में नहीं था, which proves पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं सर, पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। और वो जो डॉक्टर्स थे वो सभी डॉक्टर्स नहीं है, दे वर कॉम्पाउंडर्स। लेट मी टेल यू दिस, कोई भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था वहां पे। राइट। हाँ, पर वो एविडेंस के साथ बोलो, अगर आपके पास है तो देन यप आई विल सपोर्ट दैट। वो एविडेंस के साथ ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। व्हेन द मर्डर हैपेंड देयर वर लॉट ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स which gave away the evidence that वो जो डॉक्टर्स थे वो लोग क्वालिफाइड सर्जन थे ही नहीं, so they were not qualified at all to do his autopsy. हाँ, 2 डॉक्टर ऐसे थे वो They were रिपब्लिक not qualified doctors कोई भी नहीं to do था, कोई autopsy. भी क्वालिफाइड नहीं था। एग्जैक्टली। In fact, police people were not the police people. Yep. So I think Varun, Varun, just a request or as a suggestion up to you to take it further. पर एक ही है कि we just have to ask the CBI and the government to say कि consciousness अपना, जैसे हम लोगों को with public domain knowledge, pictures देखो, जो भी है evidence जो public domain में है, उससे if we can literally prove जो भी incidents हुए हैं, time of events or the chain of events जो भी हुए हैं, उससे हम लोग जैसे common people लोग, अगर if we can come to a conclusion that it was a murder, right, why can't the government, तो ऐसे अपने को as a hashtag चलाओ या कुछ भी करो कि please we constantly do that, and I have already started, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे मैं किसी को टैग नहीं करता, मैं अपने आप ही ऐसे करता हूँ, जो भी मेरे को फॉलो करता है कोई सब करता है तो करे तो ठीक है, पर if you do it, since you have more followers, we should start doing that, उनका कॉन्शियस ऐसे जागे कि भाई हमको पॉलिटिशियंस के वो यस नो का वो वेट नहीं करना, वी हैव टू, और इनडायरेक्टली जो भी पॉलिटिशियंस हो जो भी है उनको भी लगेगा यार हाँ अभी यार ये बहुत अभी ये बढ़ रहा है, अभी शांत हो गया था, वी नीड टू डू इट, सो वी विल Again, Vishnuji, I want to tell you one thing. It's every day on Twitter, people are trending. It is a murder. 302 file crore, 302 file crore. It is going on since past 12 months. Sorry, 8-9 months. It is going on. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सॉरी सचिन जी, मैं वो 302 उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। We have to say in a way कि if we know, if we can find it's a murder, why can't you, something along those lines, man, you can just word it out, but कि एज अ कॉमन पीपल ऐसे वो मैसेज होना चाहिए कि जैसे हमको पता चल सकता है पब्लिक डोमेन में जितने भी न्यूज है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, उससे हम लोग ऐसे कह रहे हैं चीख के कि ये साला खून है, तो तुम सीबीआई इतनी हाईएस्ट एजेंसी, वन ऑफ द हाईएस्ट एजेंसीज इन इंडिया, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, यानी वो मैसेज मेरे को ऐसा दैट इज व्हाट आई थिंक कि वो उनको बार बार ऐसे देखेंगे कि हाँ कि यार ये तो साला हम जिल्लत के पकौड़े खा रहे हैं। Sure. Let's take it offline. Yeah, I'll take that up. But I really have to clear couple of things here, right? Before this takes another, different kind of thing. Again, guys, this is not a narrative that Sushant was live. Yes, it's quite possible. The postmortem was not done, or it was done on a different body. The report itself is, वो तो हमने report की जो image चल रही है. Again, these are all which are in the public domain. उसके बेसिस पे हमने देखा है, उसके ऊपर टाइम नहीं है. सो व्हाट भास्कर ब्रह्मा वाज टेलिंग, आई थिंक दैट मेक्स सेंस, बट ही इज नॉट सेइंग कि वहां जो सुशांत की बॉडी थी, एंड ब्रह्मा भास्कर जी प्लीज आप अपने वर्ड्स में आप ही कंफर्म करें, राइट कि जो बॉडी वहां पर थी क्रिमेशन ग्राउंड पे, दैट वाज द बॉडी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. आपको एक बात मैंने कहना चाहता हूँ, मैंने आपको एक वीडियो भी भेज दिया है, सब कुछ कर दिया है, उसके अंदर उसका पिताजी भी खड़े हैं, देखो, है ना, आपको एक थोड़ी देर पहले इधर लाइव में आने से पहले मैंने पूरा वीडियो भेजा है. वो वीडियो हाँ बहुत लोगों ने देखा होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जो भास्कर जी ने मुझे भेजा है. गाइस, दिस इज द सेम वीडियो व्हिच केम आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो क्रिमेशन ग्राउंड का था, जहां पर सुशांत के ऊपर लोग वो फूल की वो जो माला डाल रहे हैं चंदन की, वो बहुत सारे लोगों ने डाला, जहां पर जो कुछ लोगों की शक्लें दिखी हैं, ऑब्वियसली फादर की दिखी साइड से और कृति सैनन की दिखी,
वो वाला वीडियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर सुशांत का फेस दिख रहा था। मेरा कहने का ये था, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ सुशांत भाई जिंदा है, मैंने सिर्फ ये बोल रहा हूँ आने वाला दिन अगर किसी ने ऐसा बोले या कोशिश करे ये प्रूफ करने के लिए सुशांत भाई का जो कुछ भी है वो सुसाइड है, हम लोग कभी नहीं मानेंगे। करेक्ट। यस अरे कम से कम तो सर, मानो मैं ना। आपको यस यस Varun ji, बस सर, let मैं me get आपको in एक between here. न्यूज फ्लैश देना चाहता हूं। आई गॉट टू गिव अ Bhaskar न्यूज ji फ्लैश। and Sachin ji, 1 minute. Let me get. या बोलो ध्रुव, Please. प्लीज गो अहेड ध्रुव। Okay, I don't know what happened, Dhruv. We cannot hear you. ओके, आई Sachin ji, विल गिव यू अ please. न्यूज Go फ्लैश। ahead. या या News just flash now a bole news na. has come in. Shiv Sena leader and former encounter specialist Pradeep Sharma has been summoned by NIA. So another second Sachin was there here. He has been summoned by On the NIA. rigor mortis. That is great. Okay, what was his name again? His name is Pradeep Sharma. He is a Shiv Sena leader as well as a former encounter specialist. Okay. मतलब you can imagine a leader or encounter specialist Exactly, दोनों है sir. वो। I was coming there. Let me finish. So, Right. '93 batch. Pradeep Sharma. So, Varun ji, let me get back to the point. Varun ji, Please. come on here. We need to have some common sense. A person who brought up a beautiful topic में बात करने को समझ नहीं पा रहे या हिंदी को अपना मन में जो है, he's a Telugu fellow basically. वो अपने मन में जितनी हिंदी आती है उसमें समझाने की कोशिश कर रहा है. That is on us No, to no, no, no. understand the right side Guys, of it. उन्होंने ये नहीं Dhruv, I'm not supporting Dhruv. anyone or I'm not telling Dhruv, anyone out this to is ये भी how it सकते हैं ना. starts. This is how it starts, and this is how we have to stop एकदम से, so that you know, ये फिर से wildfire की तरह. You know how social media works now, right? So we really have to do it at the right time. So that's why I was doing it. There was confusion, and you could see it in the chat also. So that's what I really wanted to do. So please go ahead. Yeah, I complete. know how social media works, bro. Yeah. I could see it in the chat. That's why I came and cleared the air, no, bro. देखो एक आदमी अपने मन का हालत रख रहा है. He openly said, from 14th I'm following the case, and the points what he has taken. Tell me one point which was wrong there. Rigor mortis. There was no time stamp on the what do you say? There was no time stamp on the postmortem report. And the postmortem report address was mentioned wrong. All this is indicating to foul play. How on earth a postmortem report? That means he's telling something Rajput is alive. नहीं वो एक कमेंट आया था ना जहां पर भास्कर भाई वाज सेइंग दैट मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता कि मेकअप हुआ था नहीं हुआ था, फेस मिल रहा था, फोटो से नहीं मिल रहा था एंड ऑल दैट. वहां लोगों ने आई थिंक दे काइंड ऑफ मिस इंटरप्रेटेड इट एंड वहां शुरू होने लग गया था. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ जजमेंट ऑन पार्ट ऑफ फ्यू पीपल एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू काइंड ऑफ जंप इन एंड वी really had to squash it right away before it again became another rumor. See, I'll exactly tell you what was the thought process running in his mind because I understand Telugu. I cannot speak in Telugu. Let me tell you exactly what was running in his mind. He just wanted to say that why are you focusing on the makeup and the face when the postmortem report itself clearly says it is foul play. Bhaskar bhai, correct me if I'm wrong. right. मैं यही मेरा फोकस था, मतलब यही मेरा चीज. कौन मेकअप किया है, क्या किया है, नहीं किया, उसके ऊपर हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं? कौन मेकअप आर्टिस्ट आया था, क्या आया था, क्या लेके गया रहा था, उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं है. हम लोगों को 3 चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो मेन चीज होता है, जिसको लेके हम लोग लीगली फाइट कर सकेंगे. और एक ध्रुव भाई, और एक बात मैंने बताऊं, आप लोग शायद भगवान मानते हो कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन भगवान है, वो भी प्रूफ मिल गया था. कब मालूम है? जिस दिन अर्नब भाई को लेके जा रहा था, अर्नब जी को लेके जा रहा था, वो थोड़ा टाइम के लिए अगर तेज हवा नहीं चल रहा था और वो कपड़ा नहीं हटता था गाड़ी से, जो वैन में वो त्रिपोल अगर नहीं हटता था,
तो वो जो 2 मिनट का टाइम मिला था ना, उस टाइम अर्णव भाई चिल्ला चिल्ला के अपना रिपोर्टर जो रहता है प्रदीप भंडारी भाई ने उसको कवर किया था। तो तब हम लोगों को पता चल गया जो वैन के अंदर कौन है। अगर वो पर्दा नहीं हटता था तो कुछ भी हो सकता था उसके साथ, और टारगेट यही था। हम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे? हम लोग ये सोचना चाहिए था। ये ऊपर वाला का खेल है। जो ध्रुव ने अभी बोला, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो आई टोटली एग्री एंड आई टोटली बिलीव इन दिस कर्मा थिंग, भास्कर जी. और I just wanted to add to Sachin's that news flash about this Pradeep Sharma. I just sent you a link, Varun, on WhatsApp. He was also summoned in 2013 on an extortion case where he had a fake encounter of Chota Rajan's guy. Can you imagine? So it's all coming back. वहां पे वो टाइम पे तो 2013 में कौन सी गवर्नमेंट थी, वी ऑल नो, राइट? तो आउटलुक इंडिया का है पूरा आर्टिकल है. सो maybe Varun, you can probably share it with the guys, but that's Okay. that's like he's back in the mess again. All right. Sure. Let's get back to so yes, Bhaskar bhai, I think that was a very good catch, and that was a very good point that you brought up. And you mentioned there is another thing. What was that? What is the second point that you wanted to bring? वो जो तलोजा जेल के अंदर जब लेके जा रहा था अर्णव भाई को, Right. उसके बारे में बोल रहा है। वही तो ना। हाँ. आप लोग हम लोग पूरा वीडियो देखते हैं, हम लोग गॉसिप फैलाता है चारों तरफ, ये हो गया वो हो गया। हम लोग कोई असली चीज नहीं देखते हैं। ठीक से ध्यान दीजिए, हर एक पुलिस वाला गद्दार नहीं होता है, हर एक पुलिस वाला बेईमान नहीं होता है। 2 मिनट टाइम दिया गया था एक पुलिस वाला को बाहर से, वो वीडियो भी मैंने आपको सेंड कर दूंगा। अर्णव भाई का बात खत्म, तब वो पुलिस वाला पर्दा को फिर नीचे कर दिया था। वो चाहिए तो 2 मिनट पहले ही पर्दा डाउन कर सकता था। इतना तेज हवा चला था ना, अंदर था, वैन के अंदर था अर्णव भाई, उसके पास हिम्मत नहीं था वो त्रिपल बाहर से उड़ाने के लिए। ऊपर वाला है, भगवान है। वो जो 2 मिनट का टाइम उसको मिल गया था, उसमें उसके टाइम देखिए वो चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे थे, और उसी टाइम वो लाइव टेलीकास्ट हो गया था, पूरा तड़प पूरा इंडिया में फैल गया। नहीं तो अंदर कुछ भी हो सकता था। तलोजा जेल गेट से लेके शुरू करके ना, वो बीवर अंदर गया था। बीवर को पूछिए, अंदर जिधर जेलर रहता है ना, उतना डिस्टेंस कितना कितना किलोमीटर का होता है, चारों तरफ जंगल रहता है। मालूम है कुछ दिन पहले दुबे को क्या किया था, याद है ना? हम लोग भूल गया क्या? गाड़ी को पलटी करके दिया, शूट। भागने के लिए जा रहा था, शूट कर दिया। तो कितना सर, बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था। भास्कर जी के पॉइंट से टोटली एग्री करता हूँ सर, भगवान है जरूर, लेकिन मैं उसके साथ साथ मैं रिपब्लिक के टीम को भी हैट्स ऑफ बोलता हूँ, उनके कैमरामैन और उनके बाकी के यस, जिस तरह का 24 आवर्स सभी लोग सर, इंक्लूडिंग प्रदीप भंडारी, 24 आवर्स दे वर आउटसाइड द जेल, दे वर कवरिंग ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ अर्नब टू, हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क. यस सर. प्रदीप भाई और सुचरिता मैडम, यस, ये दोनों ऐसा करके कवर किया है, पूछिए मत। नहीं तो अर्णव भाई के जैसा जो लोग ऐसा चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, किसी को डरता नहीं है, उसका शक्ल देखिए उस टाइम उसका क्या हो गया था, क्योंकि उसको मालूम था क्या होने के लिए जा रहा है, क्या होने के लिए उसके साथ जा रहा है। एक बार बिकॉज दे फोर्सड हिम सम लिक्विड, कोई लिक्विड उनको पिलाया गया था, some liquid was given to him, he himself told it on camera, and it was none other than Sachin Vaze who assaulted him. Yep, पैर पे मारा था, and that was. Yes. क्यों ऐसा क्यों हुआ था? 2 तारीख अर्नब जी ने बोला था, 3 तारीख सीबीआई कुछ निकलने वाले थे, 2 अक्टूबर। ठीक से ध्यान दीजिए, पुराना चीज को एक बार सब रिकवर कीजिए, मतलब ब्रेन के अंदर लेके आइए। 2 तारीख ऐसा हुआ, 3 तारीख सीबीआई ऐसा कुछ करेगा। उसके बाद अचानक अर्नब जी के घर में रेड हो गया था, उसको उठा के लेके चले गए। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं लिया था? And sir, let me tell you one thing. Because Arnab Goswami informed his team immediately, that is why his team, unka team, they came to his house to cover the news. Otherwise, the plan was
to execute or eliminate Arnab Goswami then and there itself because they had carried AK-56. Who Yes. comes with AK-56 to arrest a journalist like Yes. Arnab Goswami? Tell me. यस, आप लोग सिर्फ एक, हम लोग ना, हम लोग सब चारों तरफ कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जितना जो दिल में आता है वही हम लोग करके जाता है। मेन चीज के ऊपर हम लोग कोई फोकस नहीं करते हैं। ये जो देखिए ना, मैंने क्या बोलने के लिए जा रहा था, क्या बोलने के लिए जा रहा था, किसी ने समझा नहीं है। इधर बोल दिया है मैंने, ऐसे फैला रहा हूँ जो सुशांत जिंदा है। कब बोला है मैंने? नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये बोल रहा हूँ अगले दिन ऐसा ना हो जाए जो किसी ने, मतलब कोई भी किसी के कारण ऐसा ना हो जाए, ऐसा सब मतलब हम लोग के सामने जो सुशांत ने सुसाइड किया है। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया सुशांत सुसाइड किया है, तो इतना सारा फॉल्ट कहां से आ गया है? ये फॉल्ट कहां से आ गया है? ये मैंने सबको बोलने के लिए जा रहा है, किसी को नजर से ये चीज जाना नहीं चाहिए था। और वरुण भाई देखो, मैंने आपको व्हाट्सएप में एक नाम लिख दिया ना, एक नाम लास्ट में देखो, ये जब तक उसने सेफ जोन में नहीं आ रहा है तब तक मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। देखो व्हाट्सएप में देखो, वो सबसे मेरा डाउट में है अभी। क्यों है वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप में लिख दूंगा विथ प्रूफ, क्योंकि उसका नाम मैंने अभी बाहर लेके आना नहीं चाहता हूं। उसका नाम मैं अभी बाहर में लेके आना नहीं चाहता हूं। क्यों ऐसा बात हो रहा है? गेम घूम के किसके तरफ जा रहा है? घूम के जा रहा है। आपको मालूम है कुछ दिन पहले विवेकानंद जी आपके चैनल में आके क्या बोल के गए थे? याद करो, विवेकानंद जी ने आके बोल के गए थे ना कुछ बात। क्यों बोले थे वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप में लिख दूंगा। लेकिन मैं सुशांत भाई के लिए कितना क्या कर सका मुझे मालूम नहीं है। जिया बहन, दिशा बहन, इन लोगों के लिए क्या कर सका मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 14 तारीख से 14 जून से लेके आज तक, मतलब काल तक, मैंने पूरा रात सबके साथ, सबने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, सबने किया है। लेकिन ये तीनों पॉइंट मेरा आंख से, मेरा नजर से, मेरा दिमाग से कभी नहीं जा रहा है। मैं कभी मान ही नहीं सकता हूं। इसीलिए मैंने आज आके आपको ये बात बोलने के लिए जा रहा है। मैंने आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में बोला था मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा। देखो मैंने टेक्स्ट करके दिया है। लेकिन मैंने एक चीज बोलने के लिए जाऊंगा, तो अभी ध्रुव भाई को मैंने पूछूंगा। लेकिन मैंने जो बोला है उसका मतलब सब में बहुत सारे गलत तरीके से लिया है। इसलिए मैंने फिर भी लास्ट में और एक बार बोलने के लिए जा रहा हूं। मैं कभी नहीं बोल रहा हूं या बोलना चाहता हूं सुशांत भाई जिंदा है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि कभी अगर अगले आने वाला दिन में किसी ने ऐसा बोले कि सुशांत भाई सुसाइड किया है, नहीं मानना चाहिए। प्लीज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सुशांत भाई सुसाइड कर ही नहीं सकता। सर, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया उसी दिन प्रूव हो गया जब किसी ने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया था और आदित्य ठाकरे खुद आके अपने आप को सफाई दे रहा था। आई थिंक दैट डे इटसेल्फ इट वाज प्रूवन दैट दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। देखिए ये बात होते रहते जाएगा। ये बात कोई ऐसा कुछ बोलेगा, वो बोलेगा, ये बोलेगा मैं सुशांत को पहचानता नहीं, वो बोलता है नहीं अच्छा, मैंने उसमें जाऊंगा ही नहीं, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। वो तो बाद में प्रूफ हो जाएगा कौन है कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन किधर था। वो तो बात की बात है, उसके लिए तो हम लोग का है ना, हम लोग का डिपार्टमेंट है। लेकिन जो मेन जो दो चीज है, तीन चीज है, उसमें तो कभी हटना ही नहीं चाहिए। उसमें कभी हटना नहीं चाहिए। अगर वो सुसाइड करता था ना, तो अभी बहुत पहले ही उसका डेट ऑफ टाइम निकल के आ जाता था, निकल के आ जाता था। मेरे घर में कोई गुजर गया तो सबसे लो तो घर भी गुजर गया। लेकिन रास्ते में कुछ हुआ या दूसरा कुछ हो जाएगा, सोच लीजिए दूसरा कुछ हो जाएगा, जिस जगह में कुछ तो क्राइम छुपा हुआ है, उधर ही प्रॉब्लम हो जाता है, उधर ही प्रॉब्लम हो जाता है। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये वरुण भाई के चैनल में आके मैंने लास्ट में, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोई ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा बोल रहा हूँ ना। वरुण भाई मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, आपको एक टॉपिक जरूर निकालना चाहिए। संजय राउत जी के ऊपर हमारे नॉटीएस्ट ग्रैंडफादर संजय राउत
उनके ऊपर एक मराठी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने उनके साथ वल्गर वीडियो कॉल्स किए हैं, वल्गर ऑडियो कॉल्स किए हैं। आप एक सेशन हमारे नॉटी ग्रैंडफादर के ऊपर आपको रखना चाहिए। मालूम है, देखा है वो। और उसको ये भी बोला था कि अगर ज्यादा कुछ करेगा तो प्रोस्टिट्यूशन के केस में तुझे फंसा भी दूंगा। या और बहुत डिटेल्स इतना कुछ है उसके केस में, यू नो, लेट्स वील सी, मे बी टुमारो इटसेल्फ वी कैन डू इट, बट उसके अंदर इतनी गंदगी निकल के आई है। मैं हैरान हूं किस तरह से फंसाया जा रहा, कोशिश हो रही थी, इंक्लूडिंग फैमिली ऑफ दैट प्रोड्यूसर, के उसके हस्बैंड और सपोर्टर्स जो थे उनको किस तरह से इन्वॉल्व करके उसको फंसाने की कोशिश। डेफिनेटली लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल बहुत जल्दी। आस्क हिम टू टेक द प्लीज। वरुण जी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन कल और आज दोनों दिन आप लोगों के साथ मेरा बात हो रहा है। मैंने एक भी गलत पॉइंट अगर उठाया तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इधर ही माफी मांगूंगा। मेरा इतना हिम्मत है, मेरा इतना हिम्मत है। कोई गलत नहीं बोला। एक्चुअली मैं बीच में आ गया था, मतलब मैं पूरा नहीं सुन रहा था, बट बस जस्ट आई हर्ड दैट सुशांत इज अलाइव। उसके बाद मैं एक्चुअली 10-15 मिनट के लिए मैं बाहर था। नहीं, तो जस्ट मैं क्लैरिफाई करने के लिए ये बोला कि विभोर आनंद ने ये थियरी फ्लोट किया था, तो वही आज इंसान भीख मांग रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं, कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। अगर मेरा बात आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे ब्लॉक कर दो ना। अगर मेरा बात आपको अच्छा नहीं लगा, आप मुझे मत देखो, मत सुनो। मैं आपका बात, आप मेरे बात भी सुनोगे। सर, ये सिर्फ ब्लॉक करने की बात नहीं है, दिस इज क्लियर डिफेमेशन। दिस गाय हैज डिफेम्ड सुशांत फैमिली, and at the end of the day this guy is now come to such an extent where he's defaming Sushant Singh Rajput himself. That was the actual plan, first to defame his family and then to defame Sushant Singh Rajput himself. वरुण जी, आपको मालूम है व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक टेक्स्ट किया था जिस दिन मतलब फैमिली के बारे में बोला था। मैंने आपको एक टेक्स्ट किया था कि उसने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों बोला है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। और तब भी मैंने मेरा घर में मैंने अनाउंस कर दिया था, विद इन 7 days के अंदर वो गया काम से। 2 दिन के बाद वो अरेस्ट हो गए और मैंने बहुत भड़क गया था उस टाइम। आप व्हाट्सएप का पुराना टेक्स्ट मेरा चेक करके देखो। लेकिन वो जब बाहर आया था उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, जो हाथ फट गया था, नाक मुंह फट गया था। मैंने आपको व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके पूछा था जो वो कैसा है, इसके साथ ऐसा कैसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों। वो मेरा कोई दुश्मन नहीं लगता है, मेरा कोई भाई भी नहीं लगता है, लेकिन वो एक इंडियन है, नंबर 1। नंबर 2, वो SSR वॉरियर है। चाहे उसका स्टाइल अलग हो सकता है, चाहे उसका बोलने का ढंग अलग हो सकता है, उसका सोचने का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन वो तो है ना, शुरुआत से है ना। चाहे उसका नियत क्या है, मेरा नियत क्या है, आपका नियत क्या है, मुझे जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों का मेन मोटो क्या है, सुशांत भाई को जस्टिस मिलना चाहिए, दिशा बहन को जस्टिस मिलना चाहिए, जिया बहन को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर हम लोग खुद लोगों के अंदर ऐसा कीचड़ उतरते रहेंगे तो जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये इंडिया है, सबसे पहला इधर का पॉलिटिक्स को जानना चाहिए, पॉलिटिक्स। आप एक बात बोलो तो वरुण भाई, ये जो कब से एनसीबी आ गया है, आया ना, बहुत दिन से आया ना, तो सबको तो पता चल गया कैसा करके मतलब एक दूसरे अंदर जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। फिर भी बड़ा पाव वाला, पाव भाजी वाला सब पकड़ रहा है और सबके पास ही माल मिल रहा है। अरे वाह, मतलब किसी के अंदर डर नहीं है, जितना डर आपका मेरे पास है। सपोर्ट तो किधर से मिल रहा है ना, सपोर्ट तो कहां से मिल रहा है, नहीं तो जिसको ही पकड़ रहा है उसके पास ही माल मिल रहा है अभी भी। क्या पाव भाजी वाला, बड़ा पाव वाला, चाय वाला, पान वाला, सब, अरे सभी तो वाला। तो हम लोग क्या है भास्कर भाई, हाँ जी, आप मेरा गारंटी ले लो, आप एक लाइव स्ट्रीम में बोल रहे हो, इसको सब लोग देख रहे हैं। इतना आसान नहीं है किसी को जान से मार देना। आपने बोला ना अभी एक नाम मैं अभी नहीं लूंगा, आप प्लीज नाम ले लो, बिकॉज किसी को सस्पेंस में छोड़ के जाना जाया नहीं जाता। फैमिली। अच्छा, ये दादा को मालूम है। मैं देख रहा था चैट के अंदर बहुत लोग जो नाम मैं कंफ्यूज हो रहा था, तभी मैं पूछ रहा था ध्रुव, आई वाज आस्किंग व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट।
इट्स ऑल अबाउट फैमिली, इट्स नथिंग अबाउट एनीबॉडी इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं है। तो He फैमिली वैसे was हम telling मैं someone's life is at threat. No. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। हाँ लाइफ थ्रेट कुछ बात नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं बोल देता था। हाँ लाइफ थ्रेट का कुछ बात नहीं। फैमिली फैमिली ये लीगल 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 हाँ, लीगल लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से, जैसे हम लोग नाम कई लीगल। बार कई लोगों के नहीं ले पाते, राइट, चीजें, तो उस तरह से उन्होंने सिर्फ इतना कि जब तक फैमिली का थोड़ा वो नहीं होता तब तक, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट, उन लोगों के ऊपर बीत रहा है, क्या हो रहा है। या हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग 72 ईयर्स ओल्ड हो, जो डैडी के बारे में कभी सोचा नहीं है। हम लोग घर में बैठ के बहुत कुछ कर रहे हैं, कभी बाबूजी के बारे में सोचना चाहिए, बहन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। कौन गलत है कौन सही है वो बात की राइट राइट। बात है। सो शिफाली, एक बार फिर से, अभी हमने वही सब और कुछ सर मैं बताया, अर्नब इट अर्नब इज के केस में फैमिली। एक बोलना चाहता हूँ सर। अर्नब के केस में हाँ मैं बोले। अर्नब के बारे में एक और बोलना चाहता हूँ कि अर्नब को जब अरेस्ट किया गया था और जब उनका वो वीडियो आया था जहाँ पे ही सेड हिज लाइफ इज एट थ्रेट, मेरे जैसे हजार पता नहीं कितने लोग, ऐसा कोई फोन नंबर नहीं था, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, होम मिनिस्टर ऑफिस हो। इनफैक्ट आई इवन कॉल्ड द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। मैंने गूगल सर्च करके इवन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का फोन नंबर निकाल के आई स्पोक टू हिज सेक्रेटरी to make sure that nothing happens to Arnab Goswami's life. And let me tell you, that day, many lakhs and crores of people, they did not sleep that day just because they wanted to see Arnab Goswami alive the next day. Believe me, this is a fact. ओके, फिर से 3 घंटे हो गए हैं, बट भास्कर भाई, आई थिंक व्हाट वी गोना डू नाउ, अभी हम क्या करेंगे, कल एक सेशन करते हैं, और आप थोड़ा जल्दी, आपके साथ मैं टाइम कोऑर्डिनेट करूंगा, आई विल हैव ध्रुव, आई विल इनवाइट एवरीवन एल्स, लेट्स काइंड ऑफ एक बार वो कहते हैं ना, परत बाय परत, लेयर बाय लेयर, लेट्स टॉक अबाउट अदर इश्यूज एज वेल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए और करनी है भी, जरूरी भी है, क्योंकि ये जो बैक टू बेसिक्स जो एक इनिशिएटिव शुरू किया है मैंने थोड़ी देर, आई थिंक दिस इज द 5th सेशन, इसके अंदर यही डिटेल्स हैं जिनको हम शायद मिस कर रहे हैं, किसी ने पकड़ा भी नहीं है, इन सब के बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है। कैसे हम इस ऑब्वियसली हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते दिस वाज अ सुसाइड, बट वो लोग जो अभी भी शायद नैरेटिव देंगे, ये कहेंगे शायद वो अलाइव है, वो कहेंगे कि भाई दिस इज सुसाइड एंड ही वाज बीइंग फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, इनको डिबंक करने के लिए, इन बातों को खत्म करने के लिए हम ऐसे ही और 2-4 और सेशन करते हैं, जहां पर वो डिटेल्स जो कुछ स्क्रीनशॉट्स आपने मुझे भेजे, कुछ वीडियोस जो हमें देखे हैं हमने, चाहे वो एम्बुलेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो जो पुलिस वाले और वो जो डॉक्टर थे, वो वाली जो डिस्कशंस हैं, आई थिंक लेट्स डू इट विद अ लार्जर ऑडियंस, ताकि सबको ये सारी चीजें दिखें, एंड देन लेट पीपल मेक दैट कॉल एंड डिसीजन के किस तरह से हम कुछ चीजें मिस कर गए। एक बात बोले, हाँ जी, लास्ट एक बात बोल रहा हूँ। बोलो भास्कर भाई। ये जो मैंने बोला ना, जो हम लोग जो बोल रहे हैं अलाव नहीं है, इसके ऊपर भी एक ट्रोल आ जाएगा कि हम लोग नहीं चाहते कि सुशांत जिंदा हो जाए। मैं बोल रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, अगर किसी ने सुशांत भाई मतलब कभी भी सुशांत भाई सामने आ जाएगा ना, तो सबसे पहला मैं खुश होऊंगा, और मेरा एक टीम है, सबको मैंने पार्टी दे दूंगा, वो भी खुला बोल रहा हूँ, लाइव में आके शैंपेन का बॉटल फोड़ के, क्योंकि उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। आपको एक प्रूफ आज भेजूंगा मैं, मेरा स्टेट में मतलब मेरा मोहल्ले में, इस इलाके में सुशांत जिया जो है, मतलब मेरा जो बहन लोग भाई लोग है, उन लोगों के लिए मैं कोरोना में क्या किया है विथ प्रूफ, वीडियो मैंने आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने उस सुशांत को रेस्पेक्ट करता हूँ। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन पोजीशन में मुझसे बहुत बड़ा है, रेस्पेक्ट करना चाहिए। उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा, सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा, और मेरा जो टीम रहता है उन लोगों को सब जो चाहता है सब मैंने मतलब पार्टी दे दूंगा, पार्टी। कोई ये मत सोचिए या हम लोग कोई नहीं चाहता, बेसिकली मैं नहीं चाहता हूं जो वो मतलब हम लोगों के सामने आ जाए, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो क्यों हो रहा है,
जो नहीं होना चाहिए वो क्यों हो रहा है? राइट। ये मुंह से बिल्कुल नहीं जमता है। जो नहीं होना चाह रहा है वो क्यों हो रहा है? हम लोग क्यों खुद के अंदर लड़ाई कर रहे हैं? हम लोग सुशांत भाई का जस्टिस मांगते हैं। क्या ये सुशांत भाई का धर्म था जो खुद के अंदर लड़ाई? कभी उसको मैंने किसी के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। आपको एक वीडियो मैंने भेजूंगा शेखर कपूर जी के साथ, उसका जो एक वीडियो सेशन हुआ था, देखिए क्या ब्रिलियंट सवाल किया था, ब्रिलियंट सवाल, पानी शूटिंग से पहले। क्या ब्रिलियंट सवाल था। तो आई एम सॉरी अगर किसी ने ऐसा सोच लिया जो मैंने ऐसा बोल रहा है, ये आप लोगों का गलत सोच रहा है। राइट। ना मैंने कभी ऐसा कुछ गलत बात बोलूंगा, ना ऐसा कुछ गलत काम करूंगा। जो मेरा नजर में सही नहीं लगा है मैंने वही सवाल किया है, और मैंने एग्जैक्टली वैलिड, जो मेरा नजर में सही नहीं लगा। शायद मेरा नजर आपका नजर एक नहीं हो सकता है, अलग हो सकता है। correct. This is, I think, in this platform, on this platform, this is my perception again, कि हम सबकी नजर एक जैसी ही है, ठीक है। हमने सिर्फ ग्लासेस जो है अलग अलग ब्रांड्स के पहने हुए हैं, बट नाउ आई थिंक दोज ग्लासेस आर गेटिंग रिमूव्ड। तो हम सब लोग एक ही जस्टिस के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, कि ये इनोसेंट सोल्स जो मर गए हैं। तो मेरे हिसाब से द जस्टिस हैज टू हैपन, और वंस वी गेट द जस्टिस, व्हिच आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड क्वाइट पॉजिटिव कि ये होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा भास्कर जी, ध्रुव जी, और ये जो कैट वाले भाई है, क्या नाम है, सतीश जी, क्या नाम है? सचिन। हैं? सचिन। हाँ कि हम लोग अपने अंदर भी अपने काम करते हैं, जो भी जॉब पे जाते हैं, तो वहां पे भी वो होती है, पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। ये तो साले बड़े बड़े देश चला रहे हैं, राइट। मूवी को तो छोड़ो, मूवी में भी वो एक जेलसी होती है, वो सारी जो गंदी ग्रीड है, जेलसी है, फेम है, शॉर्ट टर्म फेम है, लॉन्ग टर्म फेम है, मीडियम टर्म फेम है। उसके अंदर कितने लोगों ने खुद खून कर दिया। क्राइम पेट्रोल में भी आप देखते होंगे कि सही झूठ केस तो नहीं पता। हमारे यूट्यूबर्स में भी कितने हो गए, वी ऑल नो, राइट, कि लाइक ये इसके व्यूज ज्यादा है, इसके व्यूज वो है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। पर एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट जो मोदी कर रही है, आई हैव नॉट, मैं तो अभी 40 का हो गया हूँ, अभी 41 का होऊंगा। आई हैव नॉट सीन a government taking this action and people of high caliber going to at least jail or at least been summoned by NIA या जो भी agencies है। जब when I was in teens and when I was like quite young, 20s 21s में मैंने देखा ही नहीं था जब कांग्रेस थी। So it's kind of a trickle feeding, but rightly so कि गवर्नमेंट they cannot just say okay मोदी के अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी कितने घूसखोर होंगे, for them to pick and choose। वो मोदी कर रहा है कि हाँ हमको ईमानदारी चाहिए, तो धीरे धीरे वो कैप्चर कर रहा है, और धीरे धीरे ये सारा हो रहा है, और सबको कॉन्शियसनेस वो गेन हो रही है अभी कि हाँ भाई लाइक पगार कम है तो पगार का बढ़ावा करो, वो होगा। तुम गुंडों से पैसे मत लो, अगर पैसे लेते हो तो वो पछता नहीं। ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे माय पर्सनल होप मेरा है कि अभी नेक्स्ट इन 5 years और 10 years टाइम, होपफुली द कंट्री वुड बी मच बेटर प्लेस टू लिव। बिहार है, यूपी है, वो हमने मीडिया में सुना है कि वहां पे तो गुंडागर्दी बहुत होती है, भाई लोग होते हैं वो तमंचा चलाते हैं, ये मार देते हैं, they just kill people for sake of it, किसी ने आवाज लगाई तो मर जाए, everything, ये योगी जो है आदित्यनाथ, he is sort of cleaning up but slowly, क्योंकि it is very hard, right, कि अपना बाथरूम जो अगर गंदा हो गया है, वो ओवरफ्लो हो गया है, तो you don't clean it in like 1 hour, it takes bloody at least 4-5 hours to take the water out, then clean the bloody stains, and then you do put the spray on कि जिससे बास ना आए। तो वो सारे स्टेप वाइज होता है। तो मेरे हिसाब से वही है। तो आई टोटली एग्री विथ यू। अगर वंस वी गेट द जस्टिस, तो मेरे हिसाब से मैं $1 दूंगा हमारे वकील भाई को जो अभी मांग रहे हैं। ओके,
I think that's a सर good मैं point. एक And न्यूज शेयर करना था. आई वांट टू शेयर अ न्यूज. वरुण जी, आई वांट टू शेयर अ न्यूज. sure. Yesterday मैं ट्विटर पे देख रहा था. Sachin Vaze owns a Benelli bike worth 7.5 lakhs, Yeah. and a video also was made on this. Yeah. Actually, that showroom, that particular Benelli bike showroom belongs to a Shiv leader. उसके बेटे का शोरूम है. And his बेटा, उसका जो बेटा सचिन वाजे के साथ मिलके he was shooting a video and he was showing the bike which is worth 7.5 lakhs and it was given to him. If you want, I can share that video also to you. And that particular video was shared by I think a BJP spokesperson called Sunena Holi. I think she was arrested also by this Maharashtra government. Right. Because she was the one who coined the name Baby Penguin. I know. सुनैना होली का आप जाके कनेक्ट हो उनके साथ, उनका देखें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे स्पेशली. She shares a lot of like insights and everything. But anyways, I think I'll go with you first. I think that was a good ending. Anything else you want to add before I wrap up the session? All I want to say is think about how you create that वो HT क्या बोलते हो hashtag वगैरह, just to pass on the message that if we can do it, why can't you? Yeah, something along those lines, Sure. and सबको पॉजिटिव रहना चाहिए. और स्कैमस्टर से जो भी चाहे जितना बोले कि डंके की चोट पे कनेक्ट द डॉट्स, उनको मैं बोलता नहीं हूँ, पर लेट्स डिस्ट्रॉय these evil souls, डिस्ट्रॉय इन द थिंग्स. जिनका जो घमंड है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग फॉलोअर्स है, बहुत सारे सीज है, जो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आ जाते हैं मसाला करने के लिए. चाहे मेरे टेक्नीशियंस है, तो कोई GTY करके, कोई GYT करके कोई है, तो वो में सब कुछ है. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज पीपल आर नॉट सीन बेसिकली. उसके लिए जो भी करना है, people are smart enough what to do. Sure. All right. Jai Bharat. Jai Bharat. Thank you so much. All right, Sachin. Yeah, मैं ये स्कैमस्टर्स के और उनके बिलीवर्स को इतना ही बोलूंगा, जो इंसान ऑक्सीजन नेबुलाइजर को ऑक्सीजन सिलेंडर बना सकते हैं, जो इंसान पैर पे 17 तारीख को गोली खा के 31 तारीख तक जॉगिंग, रनिंग और पता नहीं मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करके लाइव सेशंस कर सकते हैं, ऐसे लोगों पे अगर आप विश्वास करेंगे तो इससे अच्छा है कि आप किसी पागल खाने में भर्ती हो जाए. और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत केस सॉल्व हो चुका है. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ CBI. दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स एवरीथिंग अपॉन पॉलिटिक्स. Whatever is the intention of center, and my expectation is that BJP is going to win in West Bengal, and then the tremors are going to be felt in the Maharashtra government. And I think president rule is soon going to be implemented there. Got it. All right. But thank you again, Sachin. Great insights today. Let's do a couple of more sessions in the next few days. And baat karte hain. Thank you again. Take care. Yeah, thank you. All right. I see, before I take Bhaskar or Dhruv, I see the masked man. Hi. Hello. Hello. Hi. Yes. How are you? Very well. Very well. Okay. Very quick and a quick message for everyone based on Bhaskar's certain statement, not statement, but what he spoke, that he'll be very happy if ever he finds SSR alive. My message is to everyone, not particular to Bhaskar bhai. Bhaskar bhai, आप party देना, first party देना when CBI takes the case to the court. Second party देना, party देते रहना जैसे case progress होते जाएगा, and once SSR gets justice. Everyone, this is very clear. SSR is no more. There cannot be buts and ifs in it that he may be alive or whatever. Do not even talk that. It's total rubbish. It's an insult to a departed soul. That's my view. Okay, that's my view. We cannot assume happiness just like that. मैंने आपको एक बात कहना चाहता हूँ. आपने ठीक से समझा नहीं है मैंने क्या बोला है. मैंने बोला था, एक मिनट पहला मुझे बोलने दीजिए. मैंने बोला था, अगर ये जो बात कर रहा है ना, इसके अंदर किसी ने बोलेगा जे हम लोग को ऐसा, मतलब मुझे ऐसा ये है, मतलब फील हो रहा है जैसे
सुशांत भाई अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो ये मुझे खुशी रहता। मैंने ये नहीं Okay. बोला था, मैंने Okay. ये Okay. बोला था, समझ गए अभी, अगर So सुशांत yeah. भाई जिंदा रहेगा ना तो सबसे ज्यादा खुशी सबसे पहला मैं होऊंगा। Okay. Okay. I must have missed that. I'm very sorry for that. यस 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 यस। और आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ. मैंने सुशांत भाई को इतना याद करता हूँ, ये जो लॉकडाउन में बहुत सारा लड़का लड़की को नौकरी चला गया था ना, तो मेरा एक फोन कॉल में, एक सिग्नेचर में, ये लॉकडाउन के अंदर 250 लड़का लड़की का नौकरी मिल गया। प्रूफ चाहिए तो वो भी मैंने दे दूंगा। No, 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 क्योंकि Bhaskar, मैं I'm not into all that. क्योंकि मैंने सुशांत भाई को अपना दिल के अंदर बैठाया, आप लोगों के जैसा। Yeah, अगर वो Bhaskar, जिंदा आ जाएगा ना, अगर वो जिंदा आ जाएगा ना, तो सबसे पहला पार्टी मैं दूंगा, क्योंकि वो फीड से हम लोग के अंदर है। I mean, that's what I'm saying. Agar wo zinda aa jayega, we shouldn't be talking that agar. That shouldn't be that if and but. But anyways, that's your thought. Okay, no problem. I gave a message on that word agar. There is no agar. It is definite. It is definite. नहीं We नहीं have seen his cremation, so it is definite. We have right. नहीं नहीं Another thing. मैंने Okay, मैंने no problem, Bhaskar bhai. I'm not getting into this conversation. I just put the point across that because this agar gives a leverage to Vipor's gang and his followers and fans. Ke SSR alive hai. Okay, I don't want to even. Nobody should. Those who oppose Vipor should not even use that word agar. Is my point that I want to put across. Okay, keep it to your heart, keep it within your surroundings, within your friends, but not live where you're addressing public, is my point of view. Okay, anyways, let's end this discussion here. Sure. Is that if yes, that man Vibhor Anand deserves to be in jail and he must be put there. Everyone should work together to see him there. That is where he should be. He has tarnished the family, the departed soul, everything. And now he's come up on Twitter talking about, okay, let's make a global campaign, the Guinness Book of Record and everything he wants to do in the name of SSR. Now he's turned tracks. He's saying that SSR is dead. Okay, he's not even saying that he's murdered. Okay. इसीलिए मैंने बोला था. One second, Bhaskar. I have very less time. I'm sorry because I'm just going to put my point across and leave. I'll listen to you while I'm doing my work. I will be listening to you. Okay, let me just finish it, please. Right? Okay. आपने मुझे गलत मत सोचिए. नहीं नहीं आपको मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ. ये कह रहे हैं एक बार उनको कंप्लीट करें थे, फिर आपको वो सुनेंगे क्योंकि he has to leave. तो वो बस अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, उसके बाद he's gonna leave. ठीक है, Bhaskar, I'm not taking you wrong at all. I'm not taking you wrong. I've put a message across on what you have said, what I want to tell people. Okay, you talked about your personal happiness, but in that I've added a point that people personal happiness should not discuss on live about whatever your feelings would be. That if he was alive, there is no if in that. Is what minus the if is what I'm saying. If and buts cannot be there. Anyways, coming back, Viboran and thing. Everyone here, I've lost my point that I wanted to say, to be very honest. If I can remember, I'll come back, I'll join and I'll address it again. But again, guys, do not trust Viboranan and the entire nexus, including Nasif, Style Ruck for now, because he's also opened a shop. Okay. I've nothing personally against him, but I am against him doing everything in the name of SSR. Vijay Salgaonkar, Rahul Pratap Singh, Pablo Onti. She's the doctor from Dubai, and who else was there? All the others. Saffron Tiger. Now this guy, right? Trust me. Again, this guy is a right-hand man of Vipor. He comes with an handle of superhuman within his TG group and all the lights and all. He made SSR an animal in his jungle story. First thing, he's made human beings into animal characters. Worst thing anyone can do. It's disrespect to both beings, animals and human beings. Straight away. And to a departed soul, he's given an animal emoji. What a worst kind of a person. Another thing, that Bhushan Harode is his real name. His baby was born. He was in the hospital. He had done a live. And he said something, Vibhor, there are many people talking against you, or main in sabki mother flower kar dunga. That is what Bhushan Harode said, while you can hear the cry of his baby. That kind of a person you cannot follow.
you cannot support, you cannot have him near you. These are the kind of animals, I would call them animals we are dealing with, because they made us animals, and SSR, they are actually animals here. Guys, keep your senses very simple. We have seen a lot of evidences or a lot of things on news channels. There were lots of debates happening across channels, lots and lots of live coverage. We know it's a murder, but we have to respect one particular thing is, let the agencies do their work, let the case go to the court, let the proceedings begin, and let's wait and hope for justice for SSR. That is what we should be doing. And as we are discussing all the other things right now, yeah, continue on that. But any other narratives cannot be believed. Let the agencies do their work. That's all. All right. Thank you. Signing All off right, now. thanks. Cheers. Yes, Thank you. Bhaskar bhai, please, now you can respond. आप जो कहना चाहते थे आप कह दें, and then I'll take Leena ji. राइट। मेरा जो कहना है, शायद मुझे किसी ने मुझे गलत मत समझिए। 302 अगर आ जाएगा तो वो खुशी सबसे ज्यादा मुझे मिलेगा, आप लोगों के जैसा ही मिलेगा। जो नहीं होने वाला है, जिसको वापस हम लोग कभी नहीं, हम लोग के सामने आ ही नहीं सकता है, लेकिन उनका याद दिल में बैठा के रख सकता है, उसको याद करके कुछ अच्छा काम भी कर सकता है। एक सुशांत भाई हम लोगों के साथ नहीं है, एक दिशा बहन नहीं है, एक जिया बहन नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हम लोगों के पास, हम लोग के आजू बाजू में, मोहल्ला में बहुत सारा सुशांत भाई, दिशा बहन, जिया बहन है। उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी कर रहा हूँ, आज नहीं बहुत पहले से कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के अंदर और ज्यादा किया है। इसीलिए मैंने बोला था, अगर कभी मेरा हीरो, मेरा भाई, हम सबका हीरो सामने आ जाएगा तो आप लोगों के जैसा ही मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि वो फिर से आ गया है। लेकिन क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। ये मत सोचिए कि अगर वो सामने आ जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। खुशी आप लोगों को भी मिलेगा, खुशी मुझे भी मिलेगा। शायद मुझे खुशी थोड़ा ज्यादा मिलेगी, इसीलिए पहले से मैंने बोल दिया, मैंने पार्टी दे दूंगा। मतलब मेरा दिल के अंदर जो उसके लिए जो याद है, उसके हिसाब से मैंने बोल दिया। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ तो अच्छा हो जाए, लेकिन सबसे पहले जो हो गया है उसका तो इंसाफ चाहिए। नहीं तो अगर इसके साथ इंसाफ नहीं मिला तो हम लोगों को जितना सुशांत भाई बहन, दिशा बहन है, उन लोगों को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। यही मेरा कहना है और कुछ नहीं कहना है। कभी ऐसा ना हो जाए, इतना ये जो चीज जो हम लोग के सबके नजर में है, सीबीआई के नजर में नहीं है, 100% है। कभी ऐसा ना हो जाए किसी की हालत में, मतलब किसी की चांस में, जो पॉलिटिकल प्रेशर हो, कुछ भी हो, सुइसाइड साबित हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए। इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, जिसके ऊपर कभी प्रूफ नहीं होना चाहिए, जो वो सुसाइड किया है, उसको मर्डर किया है, वही मैंने सामने दिखाया। ये सब पॉइंट आप लोगों को भी मालूम है, ये सब आप लोग जानते हैं, सीबीआई भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो उसमें जिंदा है, नंबर 1। और अगर वो जिंदा रहेगा तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगा। मुझे उसी दिन खुशी होगा, उस दिन जिस दिन सीबीआई ने 302 निकाल देगा, उसी दिन ही मेरा खुशी हो जाएगा, उस दिन ही मेरा शांति हो जाएगा। बाकी तो बाकी का बात है। All right. बस यही Thank you. मुझे कहना चाहिए। Okay, thank you, ठीक, Bhaskar bhai. ठीक। जल्दी सेशन दो। All right, Leena ji, please go ahead. क्या कहना Yes, चाहती हैं? I'll be very quick. Yes. क्योंकि something else is going on, but I saw you live and I came because I started with your channel. Very first time I came on your channel, and you are very, what I would say that even if it is against you, what you don't agree, you agree with. अगर वो भी opinion किसी सामने वाले का होगा, वो कितना भी कुछ भी बोल रहा होगा तो भी तुम सुन लेते हो. You're too cool. एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे वो काटना होता है तुम काटते हो, बट यू हैव दैट टेम्परामेंट एंड विच आई लाइक, because every angle should be seen, and then we Right. have to Exactly. एक ही एंगल किसी चीज का नहीं होता. So this is not just to appreciate you क्योंकि you allow me, because I have differences of opinion with you even, and I'm not afraid of Yeah. stating this in online with
my own identity. I want to congratulate Mask Man for coming live, showing his face, though with mask, but yes. So that's the spirit. And बाकी मुझे यही कहना है कि जैसे किसी और ने I don't know who said it, but let us forget now about who is saying what, who is giving what narrative, और like लोग किसी को भी blame करते हैं. आज आप पी भी बोलो, टू भी बोलो, तो भी मतलब कुछ भी बोलो, people are trolling, people are not listening to the full sentences and taking out meanings from somebody's what they say, half meaning rather, or what is convenient to them. ये नहीं होना चाहिए. जैसे अभी आपने देखा कि भास्कर जी ने बोला कुछ और लोग कुछ और समझ रहे थे. तो ये थोड़ा स्टॉप होना चाहिए. थोड़ा पहले सुनो लोग क्या कह रहे हैं एंड देन गो अहेड. तो थोड़ा कंप्लीट सुनो. बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आधा अधूरा सुन के अपना ओपिनियन मत बनाओ किसी के भी बारे में. और दूसरी बात ये कहनी थी कि लेट अस, एज यू सेड, you are revising all the things. That's a very good thing, and we should concentrate only and only on SSR justice. अगर वो रिपीट भी पॉइंट हो गए जो पहले डिस्कस हुए हैं तो भी चलेगा. उसमें हर टाइम कुछ नया ऐड होता है. और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो आर वेलकम. किसी को कुछ हाँ लगेगा, किसी को ना लगेगा, दैट्स ओके. बट देन उसमें से ही कोई पॉइंट्स पॉजिटिव निकलते हैं जो केस में हेल्प करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि लेट अस फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली ऑन एसएसआर एंड जस्टिस फॉर एसएसआर. लेट अस नॉट कमेंट अबाउट एनी अदर चैनल ऑन इन द डिस्कशन. वो जो करने हैं करने दो. what we want to do here, we will do it, because that is just wasting of time. It's a request, not a force. No, absolutely. But I think that's the whole idea. ये जो yeah, back to basic series है, ये चली ही सिर्फ इसलिए है. All the sessions are around the different pieces. और ऐसे लोग जैसे आज था कंगना रनावत का कैसे contribution था towards the cause, and then tomorrow we'll have other, but there will be other topics जैसे कि आज बहुत सारे लोगों ने कहा. We'll also bring up other topics as well, but ये जो series हम करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ related to Sushant and whatever we've discussed in the last 8, 9, almost 10 months, we will continue doing absolutely. that. Yeah. हाँ, तो मुझे एक मतलब honestly ऐसा लगता है कि let us not talk about any other channel. Let them do what they want. We will do what we want. Absolutely. हाँ, because उसमें आधा टाइम उसमें ही वेस्ट जा रहा है. एंड मैं एक और कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी. कोई सचिन रोबोट करके कोई था अभी. I now is not on the screen. Correct. But उसका डीपी बहुत अच्छा है. That cat GIF, I loved it. Right. Because I am an animal lover, so I wanted to give him. I think आपके भी हमने देखा है बैकग्राउंड पे होती हैं cats. तो cats, yes, I have cats. We've seen that. So and there is one quality of Sushant who loved animals. We have seen many pictures of him. Of course, he had dogs, but there are pictures of him with kittens and all. So जो animals को प्यार देता है वो आदमी अच्छा ही होता है. उसमें कोई डाउट ही नहीं है. ये मेरा मानना है. All right. Thank you so much. And thanks a lot for starting this series of revising. A lot of things will come out, but just एक rule बना लो कि कोई और discuss नहीं होगा. Whatever they say about me, you or anybody else, let them comment, let them say, ignore. That is the only way out. Only way out. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Right. Bye everyone. Yeah, we'll Jai add, Shri Ram. we'll finally take Dhruv with your words of wisdom. But before you do that, 2-3 comments थे जिनको मैं respond करना चाहता हूँ in the chat room. I hear you guys. बहुत सारे लोगों के जो comments हैं, लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं इन sessions को. आपने इम्तियाज खत्री का किया. इम्तियाज का हमने थोड़ी देर पहले किया था, but I'm waiting for some more concrete details. एक बार अगर मुझे थोड़ा सा कुछ concrete मिला around इम्तियाज, I will be the first one to share it with you. I'm just waiting because इम्तियाज बहुत देर से शांति से कहीं पर तो underground है या जो भी है. So we really want to talk about it. So we will the moment I have. आपने सोहम की बात करी. सोहम को I will definitely try to get him as well. I did chat with him couple of days back. So we got connected. ज़्यादा नहीं मैंने obviously I've lack of whatever time कह लें या जो भी कह लें, I don't see a lot of people and I don't see a lot of videos, but I've heard he's also one of the
the good guys, I would say. Let me put it that way. So I will definitely get him. अभी मैंने उसको पिंग किया था, but doesn't look like he is around. तो अगर वो भी 2 मिनट में आ जाता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो आई विल चैट विद हिम एंड आई विल आस्क हिम टू जस्ट कम एंड से हाय. बट अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू गेट हिम along with me, and थोड़ी देर के लिए he will join. So again, anybody you want, you guys need to let me know. आप लोग खुद भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, this is not a proprietary like मेरा कोई platform या मेरा channel. Again, not a YouTuber, guys. The moment we get justice, I'm quite possible, it's quite possible this channel might kind of finish off, या जो भी देखेंगे तब की तब देखेंगे. But this is a platform for you all. तो आप जो भी करना चाहते हैं, जिससे भी बात करना चाहते हैं, feel free, represent yourself as the owner of this platform. Connect करें उनके साथ, मेरे को connect करें, and I love to have everybody. Yes, Sonal, I have, this is not new to me. That is the problem. If I become a strict moderator, then it becomes a little लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता फिर, और आई थिंक दैट इज द इशू. जिस वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, क्योंकि मुझे नहीं मिला था प्लेटफॉर्म बात करने का. मैं हमेशा वीडियोस ही देखता था लोगों के. तो लोगों को अगर बोलना होता है, दिल के अंदर से चीजें निकालनी होती है, तो उसके लिए ही बना था. सो बट एनीवेज, आई गेट द फीडबैक. आई विल डेफिनेटली, yes, आपने सुनील शुक्ला का नाम लिया, जो ले रहे हैं. I will definitely. Can you show my last message? Common man, how can I miss your last message? Your freeze is cooler. Freeze common man is way cooler, bro. Yeah. So yes, I will now get the words of wisdom from the kya bole? I'm short of words for Dhruv, the knowledge base, the person who has really brought a lot of different insights, a lot of different perspectives, jo hum shayad, and now with the addition of Bhaskar bhai, I am really really blessed कि ऐसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं जो इस मूवमेंट को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. और before I forget, one more item which I really want to touch upon. Guys, ये जो स्कैम, इसको मैं स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि I will tell you a little bit. I'll take 5 minutes now of your time. Please hear this out very clearly. Guinness Book of World Record में we had planned this, and I'll share those details in the next few days. Okay, we had planned this in the month of January. There are things that we will show you how and what. So we had already planned, we had discussed, we had certain action items. कुछ चीजें हैं जो plan में थी. But there were logistical challenges. There's a huge cost factor. I'll actually have a session with you. There's a huge cost factor that hit us at the wrong spot. We are looking at about a lot of money to be part of a Guinness Book of World Record. We are still pursuing it. We've already registered. Everything is kind of set up. The challenge has become the money. Now, as you know, this platform, or personally me, I'm not here for money. I will definitely not start a GoFundMe. I will not start any kind of pooling of money, because the amount of money involved in getting this and is humongous, is huge. I'll tell you the details. I'll show you the emails. I'll show you all the stuff. Don't fall prey into this scam. अगर आपसे लोग ये कहें कि आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, good luck with that. I don't think that is practically possible, because the more people who join, you have to individually enter their details, which means your personal information might be at risk अगर आपको लेंगे. Guys, please don't fall for it. I will exactly tell you what is the process, because we've gone through this process. We are still going through this. I actually got an email response जिसके अंदर मैं आपको email पे दिखाऊंगा from the team who has told me what exactly needs to happen. You will see the dollar amount in that email. Now, अगर मुझे कोई ये कह दे कि this scammer is able to submit or
fund it from his own pocket, hats off to him. I would be the first one to support this for Sushant, not for him, for Sushant. I'll be the first one to support him. Agar this amount of money he's able to fund on his own from his own pocket without starting any kind of money pool. Guys, this is another scam. I am telling you right now, do not share your personal details कि ये कहना कि किसी को certificates Guinness book के मिल जाएंगे and all that. That will not happen unless you provide or you register each one of them at the time of registration. I don't think later on you can add anybody. So please don't fall prey for that. Second thing, amount of money involved is humongous. It is huge, guys. It is not koi हजार 2000 या 5000 रुपए या 10,000 रुपए या 1 lakh. It is a lot of money. For God's sake, for heaven's sake, please don't fall prey. प्लीज डू नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स. मैं बार बार कह रहा हूं, ना पैसा, ना अपना पर्सनल ईमेल आईडी, ना अपना फोन नंबर. Do not share it. Please share this information with everybody. This is a huge scam. You will fall prey to this and you will really repent your life अगर आपने ऐसा कुछ किया. तो I am encouraging you not to fall prey for that, and please contact the real agencies. If this is a Guinness record, please, before you share details, please reach out to them and see if you have a registration number and all that stuff, and then please confirm who all are registered to be part of the Guinness book. Do not fall prey. Again, don't go by my words, guys. Please, there is a world record group. The Guinness Book of World Record is a team. They will tell you exactly everything that goes into this process. So please, my humble request, मैं इससे ज़्यादा और नहीं request कर सकता. Hello, Dhruv. Okay, looks like we lost him again. So yes, that is one thing which I really wanted to tell you. I will share, January ka, when we actually formalize this. I will tell you exactly when it was formalized, what happened, details, amount, or the money involved. Because we don't take money, we don't, and I don't want to fund this in that level on my own. I cannot, unfortunately, because it's a huge amount of money. So I will tell you exactly. I will exactly tell you the details. I'll have a session around this. Till that time, please save people from this horrendous crime, from this horrendous scare. You will all really repent your life कि आपने अपनी डिटेल्स देख के आपने क्या किया. मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, हर नंबर, हर ईमेल आईडी मींस $1 से लेके $5 एक कॉस्ट होती है. डोंट फॉल फॉर इट. ऑलराइट, yes, I will forget it. Anyways, unfortunately, it doesn't look like we are able to get this guy, Dhruv. So Dhruv, maybe your words of wisdom, I'll take them. Okay, he says take me on WhatsApp call. Okay, so looks like he's having some network issues. So what I'll do is I will take him on the network, on the WhatsApp call. Okay. Dhruv, your phone is busy. Looks like you're on a different call or you're trying to call me. Hello, Dhruv. Yeah, Varunji, I'm sorry. My phone actually switched off and there is no proper internet on this phone. Okay. So please go ahead. Everybody can hear you now. Okay. The only thing what I wanted everyone to understand is, see, what the mask man said is exactly what even I wanted to say. At the end of the day, the motive of the mission, the cause we have joined together for, that is the most important thing. People telling Vibhuranand, people telling Varun Kapur, people telling Style Drug is not important. Sushant Singh Rajput is dead, and that is period. And the session you do on Imtiaz Khatri, let me give you one small point to connect over here. Imtiaz Khatri was last sighted in Bali, Mauritius. Okay. That's what I wanted to say. Right. Okay, you should have kept it for the session, but it's okay. Yeah. So that's what I really wanted to get the specific detail and nail him down. But yeah, we'll talk about it. We'll definitely talk about it. We'll definitely talk about it. And one more thing is, thank you so much for giving this platform for the people who don't have a platform to raise their voice. And as always, you're a solid host. You're doing a good job.
Thank you so much. Have a great day. You too. Thank Bye-bye. you so much. All right. Take care. All right. And thank you again, everyone. And thank you, Bhaskar Bhai. I will see you again very soon. Sorry, Ria Chakrabarti या Ria, जो भी आप हैं, जिन्होंने अभी मेरा session join किया, and she's in the private chat right now, and she's saying, some people should be punished for defaming Ria. You can question her. It's obvious. No one can blame Ria. All right. Again, no comments to you, Ria. Good luck with that. Love to see you behind bar or the original Ria Chakrabarti. And end of the day, one last time, guys. Sushant is not alive. We will continue to fight for him because he's not around, and we will get justice for him. So, end of the day, we will not stop. Nothing can stop us. And we'll see you very soon. Thank you, Ekbar Fir se. Thank you, Bhaskar Bhai. Thank you, everyone. I'll see you very soon. Thanks. Bye.